Setting.
Check, check one, check, check, check mic check 1 2. Check, check 1 2 check mic check. तो इसको बंद कर दूं? ओके. Check, check, check. Hello, check. Hello, hello. Check. Hello, check. Hello, hello, hello. Test. Mic check. Hello, hello, hello. We love our hair color. I love my
Hello, hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, check. Hello. Hello, hello, check. Hello, hello, hello.
Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello.
Check. 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 Let's start the session in another 2 minutes. Just internet connect हो रहा है. So then let's basically start the session. And hope everyone is doing well. And कितने लोग मुंबई से हैं यहाँ पे? कितने लोग पूना से? कितने लोग कहीं और से? कहाँ से हैं सर आप? अच्छा आपको तो बताइए मेरे को. वैसे ओ लवली यार. Right. From which place? Gujarat. Right. Nice. Nice. So thank you so much for coming, because I'm also like basically taken aback by the turnout कि इतने सारे tribe members मुंबई पुणे घाना से भी हैं. So very interesting. Thank you so much. So what we'll do in today's session, so there's a very detailed presentation that is prepared for all of you as well. And जो भी हमारी key learnings है, thing fundamentals, also on technical side as well, and also filtering out opportunities in current market context, along with whatever questions that you have, I'll keep taking it throughout. So we have the entire hall from like 10:30 till 4:30, and जो भी session का जो भी questions होंगे तो आप सब पूछ सकते हैं. And I'll just start the session in another 2 minutes. This internet connect हो रहा है, तो screener, trading view, तिजोरी, finance, सब कुछ already we are opening it for you. So basically just give us 2 minutes and then we'll start the session. Is it already connected? And screen से हो गए? ठीक है. Right. So just before I start the session, so I'll just make a standard request. तो ये मैं आपके साथ एक बहुत funny story share करता हूँ. So recently I went to CyberHub, and normal है कि if someone wants to go to the washroom, so they go to the washroom as well.
So there was there was 7 people standing and doing the business, and out of 7 people, 6 people were using their phone while doing the business. So this my request कि just keep your phone on silent, because अब वैसे नहीं बनना चाहते, in my opinion. So it was really funny to see कि कितना मतलब हम जो कितने ज्यादा जो अगर एग्जाम्पल है डिस्ट्रैक्शन का, तो कितनी डिस्ट्रैक्शन होगी आज के वर्ल्ड में. And only way to kill this distraction or be contrarian in this behavior is to keep your phone on silent or on basically या तो phone को आप permanently switch off ही कर सकते next 2-3 hours के लिए. So with this we'll start, and I'll start with my standard line. Hi investors, welcome to SOIC, and thank you so much for coming to each and every one of you, and hopefully we learn something new today as well, like we've been learning for a while now. And before I start, तो एक जो standard disclaimer होता ही है. So SOIC is not SEBI registered, and nothing is a buy sell recommendation in this presentation. And whatever we discuss today will be purely for education purpose. And whatever questions that you have, you can ask throughout the session. So we'll keep basically stopping for doubts as well. So this is something that I find to be very, very interesting, because आप सबसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ, कितने लोगों का यहाँ पे लेस देन 5 years का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है? जस्ट रेज योर हैंड्स. कितने लोगों को यहाँ पे 5 to 10 years का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years? राइट, more than 10 years wale, because they've survived in the market over a long period of time, they might have made a lot of money already, because 2-3 cycle तो आप बुल एंड बेयर मार्केट की देख ही चुके होते हैं. तो जितने एंड कितने लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस लेस देन 2 years का? लेस देन 2 years वाले ऑल्सो बेसिकली जो 10 years वाले, उनके साथ आपको जरूर नेटवर्क करना चाहिए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे शेयर विद यू, द स्टोरीज दैट दे विल हैव, that will give you a very good idea that actually, like, when it comes to investing, if you just survive the market cycles, agar aap 10-15 saal survive karke, you will end up being a rich man. That is for sure, because there are n number of opportunities. If you don't do something stupid, मतलब सुजलॉन नहीं लिया, लैंको नहीं लिया, या फिर जो 10 years वाले, उनको सबको पता है कि किसी ने सुजलॉन लिया था यहाँ पे जो 10 years से पहले कर रहे, like that is great. तो सर दैट इज ओके, बट आपको वही देखना चाहिए कि कितना आपका एलोकेशन था उसमें. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन फैमिली पोर्टफोलियो, एंड दिस इज extremely interesting is that when I saw the portfolio in 2016-2017, तो क्योंकि स्टार्ट इन्वेस्टिंग फादर ने 2007-8 में पोर्टफोलियो बनाया था. सो देयर वाज वेरी कॉमन लैंको इंफ्राटेक नेम, सुजलॉन था, HDIL was the largest allocation. तो उनको तब तक ये नहीं पता था allocation है खास, बाकी सब बकवास. तो HDIL used to be, like, I calculated it was like a 20-22% allocation at 400 rupees. Today's stock price is at some 3-4 rupees if I'm not mistaken. And out of 20 names, 17 were junk. I think एक और भी उसमें कंपनी होती थी, अभी तो शायद से डीलिस्ट हुई है नहीं हुई, promoters are in the jail. यूनिटेक करके आप सबने सुनी होगी, तो यूनिटेक भी होती थी, फिर आर पावर भी था. रिलायंस पावर के लिए तो फॉर दोज हु हैव लेस देन 2 years ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, एक घर में हर किसी की फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खुले थे, क्योंकि सबको अप्लाई किसके लिए करना था? आईपीओ के लिए. एंड दिस इज सच अ ट्रू स्टोरी, बिकॉज जिससे भी मैं बात करता हूँ, जिसने 07-08 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, कहते सर आर पावर के आईपीओ में तो अप्लाई करा था. बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने नहीं करा था. सो साइकिल्स विल ऑलवेज कम एंड गो, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट अगर आप ये स्टोरी देखते हैं ऑफ बेसिकली द एलिफेंट स्टोरी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज टू अगर आप देखेंगे तो सीधा 6 blind men. एंड अगर इन 6 blind men की बात करें जिन्होंने आज तक एक एलिफेंट नहीं देखा, सो द फर्स्ट पर्सन टचेस द टेल. तो वो अगर टेल टच करेगा, आज तक एलिफेंट देखा नहीं, तो ही विल थिंक इट्स अ रोप, राइट? अगर आप someone is touching the basically someone is touching the stomach of the elephant,
then he'll think that it's a wall. When someone ends up touching the tusk, so he think it's a snake. Someone touches the leg, so she thinks it's a tree. This is exactly what ends up happening with us in markets. जिस साइकिल में जब आप आएंगे मार्केट्स में, आई एम 100% टेलिंग यू, जो आपके बिगनिंग इंप्रेशन होते हैं मार्केट्स के, दैट ऑलवेज गेट्स शेप्ड अप बाय कि वेयर यू आर स्टार्टिंग आउट योर जर्नी. अगर आपने अपनी जर्नी 2018 में स्टार्ट करी होती, 2018 में किसी को याद है मार्केट साथ क्या हुआ था 2018 टू 2019 में? पोस्ट ILNFS क्या हुआ था? लिटरली कोलैप्स्ड, राइट? सुजलॉन की जगह DHFL हो गया, लैंको की जगह येस बैंक हो गया, राइट? So stories or the like cycles remain the same, just the names keep changing. So we have to remember two things. First thing is ki either we don't get into euphoria. That is first thing. Second thing, if you are getting into euphoria, then call it euphoria and know your exit strategy. Because always people suffer when they do not have an exit strategy in place. Entry आपको बहुत लोग सिखाने वाले हैं. आप मतलब यूट्यूब ही सर्च कर लो यार, 50 लोग कहते हैं ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो. आप आजकल तो फोन पे भी SMS आते हैं, ये वाला स्टॉक ले लो, वो वाला ले लो, ये ले लो. अगर उस पे चले जाओ ट्विटर पे तो इतना ज्ञान बंट रहा है, आप सोच नहीं सकते कितना ज्ञान बंट रहा है. कोई कह रहा है मैंने ये लिया था, मैंने वो लिया था. बट पॉइंट इज नो वन इज टॉकिंग अबाउट एग्जिट स्ट्रेटजीज. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I think 3 W's in investing which are really important is when to buy, when to sell, until when to hold. बाकी सब फंडामेंटल्स तो हम कर ही रहे हैं, बिकॉज ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सी ना लाइक द एडवांटेज ऑफ थिंग्स दैट वी आर लर्निंग. अगर कोई इस रूम में एक्चुअली में 20-25 ईयर्स के लिए इन्वेस्टिंग कर लेते हैं, लाइक 20-25 ईयर्स का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड दिस आई हैव बीन थिंकिंग टू माई सेल्फ एज वेल, कि हम लोगों को पढ़ा तो रहे हैं कि वो यूज करेंगे नहीं करेंगे, बट genuinely think कि अगर 20-25 years if any investor survives in this room different cycles, I think अगर आप like if you do not become like if you do not do well out of the markets, then it's your fault. I'll say it's not the market's fault. Indian economy itself has grown by more than 6 times in last 3 decades. अगर हम इस last 3 decades में more than 6 times grow करिए, and Indian economy will अगर $5 trillion की इकोनॉमी होती है, just imagine अगर आज $3 trillion की है, तो $2 trillion gets added. So amount of wealth creation is just going to increase going forward. You'll see multiple winners emerging out of the market. And this is actually, हमेशा कहते हैं ना, this is the best time to invest. I always think कि 10, 15, 20 years out, we Indians will be consuming more. We'll be making more and more manufacturing champions out of India. More and more winners will emerge out of India. So ये जो एक फर्स्ट लाइक जो आइडिया ऑफ ऑप्टिमिज्म है, ये तो आपको रखना ही है इन्वेस्टिंग के केस में. Similarly, so this is a question which I ask a lot of people, is that how many of you think the Indian economy will do really well in next 20 years? How many of you think it won't do well? And how many of you think कि कुछ कहा नहीं जा सकता? तो इन जनरली मैं इन लोगों को कहते हैं इन्होंने MBA करी हुई है या तो बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर लिया है. See, first basic condition or first basic principle of investing is that you have to be optimistic. अगर आप ऑप्टिमिज्म नहीं है तो हो सकता है हम बहुत बारी एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हैं, बट वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. कि अगर आप कोई डिफरेंट सेक्टर्स भी देख रहे हो, तो यू नीड टू हैव दिस आइडिया ऑफ ऑप्टिमिज्म. नॉट सेइंग ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म हो, बट एक ऑप्टिमिज्म का आइडिया जरूर होना चाहिए. दिस क्विज आई रियली लव टू डू. एंड one more thing to remember is just like the 6 blind men, similarly when it comes to the idea of investing principles or philosophies, there will be multiple investing philosophies you'll come across. There will be an investing philosophy which will say ki buy at any price. Post 2018, this is actually like, because hindsight में तो सब champion है, foresight is where we suffer, right? So hindsight में मैं भी champion हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ. hindsight में champion हूँ कि बाद में पता लगता है यार ये क्या हो गया. But the good thing about looking at the past is only by looking at the past you can connect the dots and move in the future.
So never ever let go of this idea that we should not look at the past and we should not do this hindsight analysis. It is really important to do as well. Cycles come and go. This is something that we have to remember. But आप लोग मेरे को बताओ. So किसने यहाँ पे? So again, nothing against any mutual fund or anything else. किसने यहाँ पे MOST 35 का नाम सुना है as a mutual fund? मोतीलाल ओसवाल. किसने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का नाम सुना है? How many of you also have heard about a fund by the name of Mirai Blue Chip Emerging Fund? Right. So idea is कि 2018-2020 में क्या हुआ, because we are talking about cycles as well. तो आपको एक चीज तो first premise of investing याद रखना है कि wherever you come into investing or whenever your journey starts, right? तो आपका perspective बहुत shape होगा जिस cycle में आप आओगे. तो जो 2018-2019 में जिन्होंने investing start करी, you might have seen कि there was a divergence in the market which happened. First post the crash, right sir? You might remember क्योंकि आप 15 साल से तो कर रहे हो. Post the crash, what happened? Because Indian economy slowed down. So what ended up happening is that the money moved to a lot of large cap names. And first time, I think this actually is the first time ever that we saw that some of the large caps went to 100p or 110p, 90p, 80p. But that was led by earnings growth or was it led by PE re-rating? थोड़ी earnings growth भी थी. कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ 2019 सितंबर में, तो उससे हमें अर्निंग्स दिखती है. बट अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन 10 to 12%. बट अगेन दिस इज एन इन्वेस्टिंग स्टाइल वेयर पीपल से बाय एट एनी प्राइस. दे विल आल्सो बी राइट, बट यू नीड टू गिव दैट इन्वेस्टिंग फिलॉसफी 20 to 30 years. जस्ट इमेजिन अगर 100 का पी 50 जाता है 10 साल में, सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन योर CAGR अगर कोई चीज हाफ कट हो जाती है 10 years में? Close to 5 to 7% के बीच में impact होएगा मोटा मोटा, approximately, right? And if the earnings grow 12%, so you're left with 5% returns. But if it goes to like 30 years or 25 years, and if the franchisee survives, so again उस scenario में अगर आप 20-25 years hold कर रहे हो, then even if the PE goes from 100 to 50, the impact wouldn't be drastic as compared to a 5 to 10 year horizon. So that is also an investing philosophy which works over a really long period of time. But you have to realize कि अगर आप 5-7 years perspective से देख रहे हो, तो it could be that you end up being disappointed. Because once in last 20-30 years जो re-rating हुई थी, like from 40p to 100p, it is very less likely to happen that a stock goes from 100p to 300p. That is something that we have to remember. But again, it's an investing philosophy. तो जिसने 2018-19 में start करी, उसके दिमाग में तो होगा यार काम ही सिर्फ एशियन पेंट्स करता है, काम ही सिर्फ पिडलाइट करता है, काम ही सिर्फ ये करता है. कितने लोगों ने 2018 में स्टार्ट करा था यहाँ पे? आपके दिमाग में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है? yes or no, right? So again, it's the idea of blind men with the elephant. Similarly, there is this idea of growing companies at reasonable prices. ये हम लोग जैसे जो लोग हैं थोड़ा इसमें ज्यादा बिलीव करते हैं that we think there is always a price or a certain valuation for a company to pay. So this is known as the philosophy of growth at reasonable prices. So this is something that we believe in, or something ki agar if you like pay a reasonable price for a company that is growing, so probably you end up making good returns by taking less amount of risk. This is also an investing philosophy. Then एक investing philosophy है which is mixing fundamentals with technicals for exits and fundamentals for your entry, and if you're screening the company well. And let me tell you this, ये तो आप लिख ही लो कहीं पे कि अगर आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर दोगे ना, आइंस्टाइन पता है कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर किया होता? Does anyone know his secret? Simple reason was that in one of the interviews he told that I like to define the problem first. कि हम डील किस प्रॉब्लम से कर रहे हैं. कितने लोग यहाँ पे जब एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, दे डिफाइन इट, इट्स अ सिक्लिकल स्टॉक और अ स्ट्रक्चरल स्टॉक. इफ वी जस्ट स्टार्ट डिफाइनिंग दीज प्रॉब्लम्स कि थीसिस क्या है, एंटी थीसिस क्या है, और इफ वी स्टार्ट डिफाइनिंग कि whether what are the cyclical factors in a particular stock
और किस टाइप की इंडस्ट्री से मैं डील कर रहा हूँ, दैट गिव्स यू एन इमेंस अमाउंट ऑफ एडवांटेज. सिंपल रीजन इज कि अगर आप आधी प्रॉब्लम डिफाइन होगी, अगर रीजन ही पता लगे खरीदा क्यों है, तो काफी बारी रीजंस फॉर सेलिंग भी क्लियर हो जाते हैं. बहुत बारी ऐसा होता है रीजंस फॉर सेलिंग भी क्लियर हो जाते हैं. कभी कभी खरीदोगे और पता लगेगा गलत थे यार. जब अगर ओपिनियन खराब हो जाता है तो वहां से निकलना चाहिए, वहीं पे बैठना चाहिए, निकल जाना चाहिए. बट होता क्या है, काफी बारी थी वी एंड अप बिकमिंग फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. किसी स्टॉक में फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए? किस किस में करिए सर? आप बताओ विशाल जी. जिन एक्सपोर्ट्स वाला, राइट. टाटा 100 पीपल ईयर. अच्छा. ओके. अच्छा, नजारा, राइट. डीवीएस लेबोरेटरीज. डॉक्टर लाल, विच वन? रेन इंडस्ट्रीज. रेन इंडस्ट्रीज भी 2017-18 में बहुत लोगों ने लिया. कितने लोगों ने रेन इंडस्ट्रीज की स्टोरी सुनी थी 17-18 में? तो जो भी लेस देन 2 years वाले हैं, तो सब ये चीजें आपको केस स्टडीज नोट कीजिए, क्योंकि आपको ये न्यूज आर्टिकल सबके मिलेंगे. आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी लाख करोड़ की घर की कहानी बनाई गई थी. डज एवरीवन रिमेंबर इन दिस रूम? अगेन, सो आई थिंक पंजाब हाउसिंग था उस टाइम पे, जीआईसी हाउसिंग था, रेपको हाउसिंग होती थी एक कंपनी, राइट. डीएचएफएल तो हम सबने देखा ही. हाँ, यील्ड वाइज, राइट. आईएफएल भी होता था. आईएफएल ने तो अब रंग पलट दिए, होलसेल से रिटेल हो गए, बट आईएफएल भी इसी स्टोरी में होता था, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, दैट वी कीप सीइंग दिस एक्सपीरियंसेस हैपनिंग. बट हर साइकिल में, सी, आई एम नॉट सेइंग कि वी विल बी 100% फुल प्रूफ, बट इफ वी डिफाइन द प्रॉब्लम वेल, अगर मेरे को पता है मैंने स्टॉक क्यों लिया है, राइट, and if I have an exit framework in place, most of the experienced investors you talk to in this room, they'll say कि a lot of those sectors never ever make a comeback, and at the end you only end up making profits if you exit at basically exit at the right time. So exiting is really really important. तो हम exits पे बहुत बात करेंगे आज के सेशन में साथ साथ. So फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए. So otherwise cyber up वाला एग्जाम्पल ये, right. So again, coming to this philosophy, so again, तो मैं बहुत candid रहता हूँ conversations में, because I think I'm talking to a group of friends. तो मैं बहुत formal नहीं रहूँगा, because otherwise वो formal में इतनी strictness हो जाती है, मजा नहीं आता बिल्कुल sessions का. मैंने ऐसे sessions attend करे हुए हैं, right. So just coming to this idea कि questions साथ साथ करेंगे. हाँ, तो just coming to this idea is that बाइंग और सेलिंग फ्रेमवर्क की तो बात करेंगे, और बात करेंगे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग की. बट एक सिंपल आइडिया है. कितने लोग मार्केटिंग में यहाँ पे? एनीवन इन मार्केटिंग? एल्केमी बुक पढ़ी है? अगर नहीं ये बुक पढ़ी तो ये बुक जरूर पढ़ लेना. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी एज वेल. एवरीथिंग दैट यू बेसिकली, जहाँ पे मार्केटिंग या साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, विच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज एट द एंड वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, राइट. तो जहां जहां आप ह्यूमंस और साइकोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं, कहीं पे अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी करते हैं, दिस वन बुक विल हेल्प यू इमेंसली. So this book talks about this idea, is that opposite of a good idea can also be a good idea. तो ये आइडिया इंपॉर्टेंट क्यों बात करना, क्योंकि कई लोग जो कहते हैं हम सिर्फ फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, हम टेक्निकल्स नहीं देखेंगे, तो टेक्निकल्स को गाली देंगे. टेक्निकल वाले कहते हैं अरे फंडामेंटल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. बट आइडिया इज कि एट द एंड यू आर अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टर, एंड यू हैव टू बिलीव इन मैक्सिमाइजिंग ऑड्स इन योर फेवर. ये सब टैग वैग छोड़ दो, दोनों चीजों से अच्छी चीजें उठा के अपना फ्रेमवर्क बना लेते हैं. कोई ये जरूरी थोड़ी ना कि हमने, मतलब हमें कोई अवार्ड ही मिलेगा कि हमने फंडामेंटल्स ही दिखाने दीजिए, ये तो डीप वैल्यू इन्वेस्टर है जी, जो अगला सेथ क्लारमैन तो यही है. कोई उसमें आज तक अवार्ड मिले किसी को? आइडिया इज नन, राइट. So that is the simple idea कि we'll borrow from opposite ideas. So there should be no shame in leaving the tags behind. Leave all the tags behind, because at the end you are true for your own portfolio, right? And we don't have to give any public performance. हम कोई
फंड मैनेजर तो है नहीं कि हमने दिखाना है कि जी इतना परसेंटेज बनाया है, ये वाला ज्ञान था हमारा तो इसी बेसिस पे हमने बनाया. वी डोंट हैव टू बी लाइक दैट. यू हैव टू बी रियली फ्लेक्सिबल. You have to have the ability to change your opinion as well, because see, एक होता है कि स्टॉक खरीदना, एक होता है कि स्टॉक को ट्रैक करके यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज योरसेल्फ, राइट. कई लोग आपने देखा होगा कि काफी सारे जो लाइक इंडिविजुअल लाइक जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में, तो वो टीवी पे भी आते हैं. दे डोंट लाइक टू नेम अ स्टॉक. हैव यू सीन दिस? Because they know कि if we name a stock and if we want to change our opinion, then बाद में बोलेगा ये पम डम कर गया, right? Because जो बंदा outside बैठा है, see the man in the ring knows that the facts change at all the times, right? But the person who's sitting outside, he doesn't know that the facts are changing and what he's dealing with. So this is also one of the things that you have to appreciate about those type of investors. So अगर आप example लेते हैं one investor का, you might have seen like so आशीष कचौलिया is an example, right? टीवी पे कोई अपीयरेंस नहीं है, देखा टीवी पे आते हुए? कभी देखा है कि यार मैं ये वाला स्टॉक ले रहा हूँ? अगर आप विजय केडिया सर की भी बात करो, वेरी लेस अपीयरेंसेस ऑन टीवी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज सिंगिंग, राइट? बिकॉज ही आल्सो नोज कि यार फैक्ट चेंज हो जाते हैं. अगर फैक्ट चेंज हो गए तो यू चेंज योरसेल्फ, बट द पर्सन हु सिटिंग आउटसाइड दे कांट चेंज देमसेल्व्स, राइट सर? मतलब सर एग्जांपल ऑफ यस बैंक. Yes Bank grew its loan book by 54% CAGR between 2006 to 2017. 11 years of 54% CAGR पे आप ग्रोथ करके देखो, आपके सामने क्या आंसर आता है. आंसर will be absolutely shocking to you, right? So first thing is either completely avoid it, right? वो वैसे तो स्कटल बट करते हैं. Yes Bank का तो बहुत बैंकर्स ने ही बता दिया था ये कैसे ग्रोथ आ रही है, क्या कर रहे हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी बढ़ रही है, फी इनकम आ रहा है. बट अगर आप उसमें हैं तो नो व्हाट द एग्जिट पॉइंट्स आर. So simple thing is कि opposite of a good idea can also be a good idea is that as like Mumbai में तो वैसे थोड़ा सा मतलब as compared to Delhi the rich culture is much more. Delhi में भी है वैसे but Delhi में थोड़ा सा कम है as compared to Mumbai. So मुंबई में किसी ने फेरारी देखी है? दिल्ली में तो शायद से एक दो ही मतलब. बट अगेन दिस इज लिटरली लाइक एन एक्सक्लूसिव क्लब. इस साल सब वर्ल्ड में रिसेशन की बात कर रहे हैं. इज एवरीवन टॉकिंग कि रिसेशन आ जाएगा दुनिया में, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सब हो जाएगा. यू नो हाउ मच फेरारी सेल्स हैव ग्रोन? Mercedes also, Ferrari, because actually the order booking that they have, it gives them the visibility कि next 2 years they'll grow their sales at 13-14%. Volume growth 13-14% in an economy which grows 2%. How many of such businesses are there? But business model ke high cost. Do you know if you tow a Ferrari, you can't ever buy a Ferrari again. अगर आपने Ferrari का accident मार दिया, you can't ever buy a Ferrari again. You'll be on Ferrari's ban list. It's a socially exclusive club. Even for buying a Ferrari, even if you have money, you need a referral. Third thing, exclusive models. अगर आप Ferrari के club के part हो, probably one of the only brands in the world where exclusive models come out. कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मॉडल आया है, इसकी सिर्फ 15 गाड़ियां बनी है, खरीदनी है तो खरीद लो. एंड दोस कार्स एंड अप अप्रिशिएटिंग इन प्राइस. मतलब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को आपने एक अप्रिशिएटिंग एसेट बना दिया. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल केस स्टडीज दैट यू शुड रीड. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पे आपको मिल जाएगी ये केस स्टडी. एक्सेप्शनल केस स्टडी. कई लोगों ने आई थिंक हमने एक बार ऑनलाइन भी कराई थी, तो कई लोग अपने स्कूल के जो कॉलेज के एग्जाम्स थे उनमें एमबीए में आंसर लिख के आए फेरारी की केस स्टडी का पढ़ने के बाद. आई डोंट नो यहाँ पे है नहीं है, बट वो काफी बार ऑनलाइन आया हुआ था. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल केस स्टडीज. बट बिजनेस मॉडल क्या है? एक्सक्लूसिव क्लब, राइट? बट दिस डजंट मीन दैट द अदर बिजनेस मॉडल्स आर बैड. अब अगर इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मारुति, मारुति का क्या बिजनेस मॉडल है? कितने लोगों के पास यहाँ पे एक मारुति की गाड़ी है? मेरे पास भी है, राइट? तो मैं तो इसलिए लेता हूँ ऑनेस्टली, बहुत अच्छी माइलेज है. कंजूस लोग हैं, माइलेज बहुत अच्छी है. अभी जो उनकी एक एसयूवी भी आई है, उसकी माइलेज 24 की है यार. कौन देती है वो? मैं उसकी गाड़ी देख के स्कॉडा की, उसकी माइलेज 8 की है. मैंने कहा ये कौन लेगा? वो तो तेल पीती है बेसिकली, राइट? मेंटेनेंस इज जीरो, राइट?
मेंटेनेंस है भी, अगर सर्विसिंग करानी है तो हर चप्पे चप्पे पे मारुति का सेंटर खुला हुआ है। फिर थर्ड थिंग क्या है, जो जो मेरे फादर है, वो उनके दिमाग में चलती रहती है, यार इसकी रीसेल वैल्यू बड़ी अच्छी है। मतलब ये दिस इज अ, और हाथों हाथ बिक जाती है। वही अगर कोई और गाड़ी लेके बैठे हो यार, पता भी नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी, राइट, एंड कॉस्ट भी बहुत घट जाता है। सो अगेन अब एकदम हम ऑपोजिट एंड पे आ गए। पहले तो हम हाई कॉस्ट मॉडल पे गए, देन हम लो कॉस्ट मॉडल पे आ गए। मारुति इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल ब्रांड इन इंडिया ओवर लास्ट 2-3 decades, एंड ऑलमोस्ट 45-50% मार्केट शेयर भी अफोर्डेबल कार्स में। दिस इज व्हाट आई थिंक, ये मैंने ट्विटर पे भी एक बार डाला था। सो आई थिंक लास्ट 1 year में जब से हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, सो फेरारीज स्टॉक प्राइस इटसेल्फ हैज ग्रोन बाय 41.5%, लाइक इन अ सिनेरियो वेयर actually like economies over the world might slow down over a period of time. यूरोप में तो डेफिनेटली स्लो डाउन आया है। सो why alchemy is important, and काफी बारी आप ये देखेंगे, और मैं आपको पढ़ा के रहा हूँ, क्योंकि काफी बारी आप देखेंगे कि आपने एक स्टॉक का कुछ सोचा होता है और हो कुछ और ही जाता है, राइट। सो सिंपल आइडिया, चलो मैं आपको इस रूम में 3 बिजनेस आइडियाज देता हूँ। पहला बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है एक बिजनेस में जो 1 लाख रुपए का बेसिकली वैक्यूम क्लीनर बना रहे हैं हम लोग, बस दिखने में कूल लगता है। विल यू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस मॉडल? सेकेंड आइडिया लेके आता हूँ दैट देयर इज अ ड्रिंक विच हैज फेल्ड द टेस्ट टेस्ट वो ड्रिंक फेल कर गया अपना, and people are saying that we'll rather prefer to drink our piss over this drink. Will you invest in that business model? Yes or no? Third idea is कि मैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आता हूँ आपके सामने, जहाँ पे वो चीज़ आप घर पे 5 रुपए पे बना के पी सकते हैं, और मैं वो आपको 400 या 500 रुपए की बेचूंगा। विल यू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस मॉडल? Probably yes. Simple idea is that the first business model is Dyson. किसी पास डायसन का कोई प्रोडक्ट है घर पे अपने, दिल्ली में काफी फेमस है डायसन। सेकेंड थिंग इज, हैज एनीवन एवर हैड अ रेड बुल? राइट, पीते क्यों? एक्सट्रीम एनर्जी आ जाती है, राइट। एग्जाम है, एनर्जी चाहिए, ऑफिस का काम लेट हो गया, एनर्जी चाहिए, ऑल नाइटर निकालना है, एनर्जी चाहिए उसके लिए, राइट। सो एक्चुअली जब मेरे भी लाइक कभी कभी कॉलेज के एग्जाम्स होते थे और पता था यार अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, तो रेड बुल पीते थे कभी कभी। एंड एक बार जो पेरेंट्स है उन्होंने भी ट्राई करी, अरे क्या पी रहे। So that is also an idea that such type of business models also exist, and this is all part of alchemy and human psychology as well. तो मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ कि यार एक्चुअली में वी रिसेंटली मेट मिस्टर मोनीश पबराई। One of the best learnings that I had from that meeting was that उन्होंने फर्स्ट लर्निंग मेरे को बोले कि यार मेरी मतलब one of the first learnings from my life is that we are in the business of going wrong. कह रहे राइट भी हो जाएंगे या तो साइजिंग पे रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। कभी कभी क्या होएगा कि ट्रैकिंग में स्टॉक पड़ा होगा वो 10 बैगर हो जाएगा, और कोर पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होएगा वो कहीं जाएगा नहीं। कभी कभी क्या आएगा कि यू आर राइट बट एट द रॉन्ग टाइम दैट यू आर राइट। कि सपोज करते हैं कि अगर कोई सिक्लिकल लिया, सपोज जैसे कोई कह रहा है रेन इंडस्ट्रीज लिया हुआ है, राइट, तो वो पूरा केस स्टडी बताए थे रेन इंडस्ट्री की कि जब लिया था 30-40 रुपए का था, थीसिस तभी भी सेम थी, कभी ना कभी एक साइकिल आएगी एंड साइकिल में इट विल गो अप। फॉर 2 years it didn't move, but he knew his reasons for buying were really absolutely clear. This is why he was able to sit on it. But this learning was very very important, that we have to admit that we are in the business of going wrong. So only one way of being a great investor over 20-25 years, believe me, if you survive, like whosoever is in this room, अगर 20-25 साल survive कर गए, रूल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है यार। मतलब सिंपल मैथ है कि अगर आप 20-25 साल सर्वाइव करके 16-17-18 लाइक 18% भी रिटर्न बन गया, एंड अगर 2-3% एक्स्ट्रा आ जाता है बिकॉज ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इन एक्टिव साइड ऑफ थिंग्स, यू विल एंड अप मेकिंग ह्यूज मनी. That is as simple as that. But admit that we are in the business of going wrong. Admit this first. There is no point in being arrogant about investing. जितने लोग यहाँ पे मतलब जो मैंने जनरली लाइफ में देखे जहाँ एरोगेंस आती है इन्वेस्टिंग में, यूजुअली वहाँ पे फेलियर भी आता ही आता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. लाइक मार्केट्स ऑलवेज हैव अ वे टू मेक अस हम्बल.
So first condition है कि humble वैसे ही रहना पड़ेगा आपको. Like you have to be open to the changing facts. You can't like have two things about it, because the like scenario changes, industry structure changes, something or the other happens. Paints में किसी और को attack करना है तो वो attack करने लग जाएगा. You couldn't have even thought कि Birla will come and announce a huge capex in paints, right? It's not कि existing players get destroyed. It's that it's a fact. It's a new information that has to be inculcated in your process. आपको पता जरूर होना चाहिए कि अगर कोई competitor आ रहा है तो मेरे को उसका idea है. जैसे example लेते हैं. How many of you ever had a sting over here? Or how many of you have seen your children having sting? Or any youngster having sting? Right? तो Sting आई last 2 years में did really well. Then अब Charged उसका एक competitor आ गया, right? So taking this fact of information कि Charged is competing with Sting and following up, तो मैं तो 15-20 किराने वाले उनसे पूछते हैं तो दिल्ली में Charged isn't doing well. तो Charged का ऑफ टेक दिल्ली में इस टाइम पे नहीं आ रहा. डिफरेंट एरियाज में लाइक एक वहाँ पे दिल्ली में कृष्णा मार्ट करके है. आई डोंट नो इफ एनीवन नोज. तो वहाँ पे दैट्स वन ऑफ अ ह्यूज रिटेलर्स. तो उससे आई कीप लाइक टॉकिंग टू कि क्या लगता है कि कैसा कर रही है. तो we keep getting this feedback, but only way is to have this maintenance research. Another example that I'll give you is there's a business by the name of solar glass की कंपनी सुनी है किसने? Borosil Renewables. So friend of mine was tracking this business and उसका नेटवर्क भी अच्छा था and he saw कि imports चाइना से solar glass के zero हो गए. Imports चाइना से solar glass के zero हो गए. मतलब for my case मेरे को लगा ये commodity business है. So मैं वहां से एकदम साइड पे था. But he thought कि import zero हो गया तो एक vacuum है and he defined the thing कि जब तक वो vacuum है this company will make huge money and the day the vacuum gets fulfilled I'll sell. Simple. पहले उसने problem define. I actually think that he is a very superior investor even to what I am. Simple reason is because he defines the problem so well that he knows कि मैंने entry क्यों ली और मैं exit क्यों लूंगा. अगर ये दो पॉइंट समझ आ जाए ना, बहुत बारी जो भी डाउट्स होते हैं सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाता है. इन्वेस्टिंग में पढ़ाने को क्या है, मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ा दूंगा, कैश फ्लो पढ़ा दूंगा, इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा. आई कैन मेक यू बेसिकली कॉम्पिटेंट में आपको बना सकता हूँ. बट आगे का जो काम है ना, फैक्ट चेंजिंग, बीइंग फ्लेक्सिबल इनफ, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रियलाइज कि हमें यूनिवर्सिटीज और स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता. यूनिवर्सिटी और स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? द वर्ल्ड इज बाइनरी. आंसर इज येस और नो. कहीं पे ये बताया जाता है जब असली दुनिया में आते हैं तो एज एनीवन एवर टॉट यू कि maybe it is also not so binary. It could be yes, it could be no, right? So it's the world is probabilistic. That is, अगर कोई business करता है ना यहाँ पे, they will realize कि कितने लोगों का business है यहाँ पे. So अगर कोई भी लाइफ की लार्ज बिजनेस डील मिली होगी, आप कह सकते थे कि मैं वो मिलने वाली है वो डील. Is it probabilistic? So appreciation for investing should also be the same. It is a probabilistic field. Process has to be right. Over a period of time, you will end up making money. That is something that we have to realize. So a very important part of मतलब क्योंकि अभी हम थोड़ी sideways market में हैं, and also we are in a market which is a bit downtrending as well, is that what is going to happen in India over a period of time is that the middle class will actually in India will actually become a अगर आप देखते हैं तो 349 million family households है जो middle class रहेंगे. Probably will go somewhere between 2050 के आसपास 1 billion people who will be in the middle class. And if it happens, मतलब wealth creation तो opportunities बहुत होंगी. So your process has to be right to capture it. तो process के ऊपर आज हम सारी बात भी करेंगे. I think there will be a like lot of things that we'll cover. But this is something that we have to realize that opportunity is immense, is the process which has to be right. मतलब जो fishes in the ponds are there, like fishes are there in the pond, it's just our like filtering framework to catch the fish has to be correct. तो यही आइडिया मैं बार बार आपको कहता हूँ कि दिस इज ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मेंटल मॉडल्स का है. I think this will help you across your life as well. First is that of concavity
और कॉन्वेक्सिटी, और इसी से लेके हम बाद में बिजनेसेस की बात स्टार्ट करेंगे. कॉनकेव मिरर देखा किसने? कॉनकेव लेंस देखा किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू सीन अ कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस पता है किसी को क्या होता है? स्कूल में फिजिक्स में पढ़ाते थे. राइट. तो कॉनकेव लेंस अगर आप देखेंगे तो कॉनकेव लेंस ऊपर से ऐसा होता है. राइट. इफ यू सी कॉन्वेक्स लेंस नीचे से, यूल सी अपवर्ड है. This is again a really interesting conversation I had with one of the shareholders of a company जो एक capital good company है. He publicly owns 4% of that company and he bought during the down cycle. That stock is today almost a 7-bagger in 3 years. मैंने उनसे पूछा सिंपल चीज, सर इतनी हिम्मत आ कैसे गई आपने? मतलब because 4% allocating in that company probably will be a 40-45 crore amount. And he owned 4% of that company. And probably it will be like 20-25% of his net worth that was invested in one stock. Net worth. So he explained me this idea of concavity, convexity. कह रहे ऐसी life start हुई थी. He used to do a job in TCS यार. That is how he, over a period of time in last 3 decades, he has created so much wealth. So he simply कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी की बात करी. कह रहे ये आइडिया मेरे को सिखाया था निकोलस नासिम टैलिब ने 10 to 15 years ago, and this is something that I've been working on a lot of times. कह रहे कॉन्केविटी क्या होती है? So concavity is that your upsides are capped. Upsides आपकी capped है. So example लेते हैं. Suppose if you invest in a fixed deposit, how many of you have an FD over here? Right. So FD हो सकता है हम फिक्स इनकम के लिए कर रहे हैं, जो हमारा लाइक कोई भी फंड हो जो हमें बहुत ज्यादा उसके लिए चाहिए इमरजेंसी के लिए, उसके लिए हम एफडी में कर रहे हैं. राइट. बट यू माइट हैव सीन कि जब भी आप कॉन्केविटी की बात करें ना, अपसाइड कैप्ड है, तो एफडी इज समथिंग वेयर योर अपसाइड इज कैप्ड. राइट. बट एफडी इज द ओनली एसेट क्लास इन द वर्ल्ड वेयर योर बेसिकली जो मनी इंक्रीजेस एवरी डे. राइट. अंटिल द बैंक गोज डाउन. सो द मनी गोज अप एवरी डे. राइट. बैंक की तो आजकल वो ट्विटर पे बोल रहे हैं ना, बैंक गिर जाएंगे सारे, कब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. राइट. तो कॉन्केविटी इज कि योर अपसाइड्स आर कैप्ड इन लाइफ. अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्केविटी लेते हैं. सपोज इफ आई हैव अ 20 स्टॉक पोर्टफोलियो and out of that average P of the portfolio is 70 to 80 times. Out of 20 stocks, I'm just aiming for a 15% return. Let's just simply think about it. 14 or 15 stocks do not give me even a 15% return. अगर सपोज करते हैं 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो भी और 6-7 का रिटर्न सिर्फ 5-6% आता है. रिमेनिंग में 1-2 स्टॉक में, क्योंकि 70-80 की पी है तो आपकी पी री रेट नहीं हो सकती, अर्निंग्स ग्रोथ 10-15% की है. सो इफ द रिमेनिंग स्टॉक्स गिव यू 10-12% रिटर्न, विल यू बी एबल टू बीट द मार्केट? विल यू बी एबल टू बीट द मार्केट? डू दिस एक्टिविटी. एक्सेल पे जाके घर पे करना एक बार. यू ओन 15 स्टॉक्स, इंडेक्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 12 to 15% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप 15 स्टॉक्स ओन करते हो, उसका एवरेज भी 70-80 के आसपास है. एंड जस्ट डू दिस एक्टिविटी एट योर प्लेस, एंड द अर्निंग्स होता है 10-15%, बट 6-7 उसमें से नहीं चलते. सारे स्टॉक तो वैसे ही आपको पता है 50% हिट रेट से ऊपर अगर है भी 50-55% है, देन इट्स एक्सेप्शनल. सो अगेन दैट इज अ कॉन्केव एक्टिविटी. सो कॉन्केव एक्टिविटी एंड कॉन्वेक्स एक्टिविटी में बाइफरकेट करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज एक्चुअली कॉन्वेक्सिटी के अंदर, कि अगर आप उनका एग्जांपल लेते हो, the like investor who gave me this idea, like who put almost 4% in one company, and at the end he made it 3 years में 7-bagger बना. So he said कि first thing was valuation comfort था, second thing was management is brilliant, third thing is market leader है अपने products के अंदर, fourth thing, only thing missing is tailwinds. Only thing that was missing was tailwinds. कह रहे सस्ती वैल्यूएशन तो मिलेगी नहीं यार टेलविंड्स के अंदर. सस्ती वैल्यूएशन तो मिलने ही नहीं वाली टेलविंड्स में. राइट. सो आई जस्ट हैव टू वेट फॉर अ टेलविंड. अगर वो कॉन्वेक्सिटी आ गई, सो आई विल मेक अ नॉन लीनियर आउटकम. एंड मेकिंग अ 7-bagger ऑन दैट अमाउंट इज लाइक ह्यूज. इट्स लिटरली ह्यूज. एंड इट्स difficult for people to understand this idea, but convexity is what leads to that. कि अगर if you go right, you may end up making a non-linear outcome, right? But non-linear outcome के लिए conditions क्या है? First thing is that you're picking good quality companies
but at a time where the valuations aren't obscene. Because वो जो P re-rating का concept है, see, I won't मैं आपको कोई ऐसे false hopes नहीं दूंगा कि आपको P re-rating मिलने वाले, जो लोग कहते हैं कि P re-rating हो जाएगा इसका, that is not the right way. If the P re-rates, then the P re-rates. It's a part of luck. But again, you're positioning yourself for convexity. Understand this. कि अगर एक कंपनी की अर्निंग्स डबल होती हैं, सो क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, अगर एक कंपनी की अर्निंग्स डबल होती है और पी सेम रहती है, तो 3 स्टॉक में क्या स्टॉक डबल होएगा? यस और नो? अगर सपोज करते हैं लाइक अगर स्टॉक का ईपीएस 1 रुपीज का है, 20 की पी है, तो स्टॉक प्राइस आपका 20 रुपीज है, राइट? इफ द ईपीएस गोज टू 2, पी रिमेन्स एट 20, विल द स्टॉक प्राइस डबल इन 3 years, राइट? अब क्या हुआ है सिनेरियो में कि 20 की पी तो तब थी जब उस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं सोच रहे थे कि ग्रोथ आने वाली है, सब होने वाला है, बट ईपीएस डबल्स एंड योर पी नाउ गोज टू 40 एज एन एग्जांपल। तो 2 रुपीज का ईपीएस हो जाता है और 40 की पी हो जाती है, स्टॉक प्राइस कितने का हो जाएगा? 80 रुपीज। स्टार्टिंग में कहते हैं 20 रुपीज पे, राइट? सो दिस इज द सिंपल आइडिया दैट यू पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर कॉन्वेक्सिटी अगेन, कि आप अपने आप को फिर अगर आप वैल्यू, अगर इफ यू गो टू दिस फोरम वैल्यू पिकर, कितने लोगों ने वैल्यू पिकर यूज करें? वैल्यू पिकर पे if you just go and look at some of the legendary threads that are there on PI Industries, on Astral Polytechnic, on Supreme Industries, like most of these stocks when they started out had a P of 10-20 times, but the earnings were growing at 30-35%, 40%, 25%, 20%. Downtrending or sideways markets are good for us, तभी तो ये opportunities मिलेंगी। बुल मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्या है कि यार पढ़ूंगा बाद में, वो पहले स्टॉक उड़ जाता है और मिस्टेक्स ही वही होती हैं, मैक्सिमम मिस्टेक्स आर मेड देयर। सो आई एक्चुअली थिंक दैट इन्वेस्टर्स हु आर बोर्न इन अ बेयर मार्केट आर ब्लेस्ड, बिकॉज ऑलरेडी उनकी एक्सपेक्टेशंस ही खत्म है, उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसे ही खत्म है कि यार 10-12% गिरा है, क्या बकवास चीज ले ली है। Investors who are born in bull markets, expectations are something else. यार ये 2 bagger नहीं हुआ, 3 bagger नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है यार? Less than 2 years जो investing experience है, have you seen this? जो 2020 में जिन्होंने स्टार्ट करी, देखे 2, 3, 4 bagger, 10 bagger होते हुए। You need pessimism, you need like downtrending or sideways market to basically get those returns. अगर मार्केट में एवरेज स्टॉक का ही भी 40-50 का चल रहा है, आपको क्या पैसा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनने वाला। You might see those investors who always get attracted at the peak. 1-2-3 साल में see, human brain isn't wired to think about 2-3 years. You like अभी थोड़ा सा SOIC में करके I'm successfully taking you towards thinking towards quarters. थोड़ा सा कई लोग तो इंट्राडे या दिन में सोचते हैं, तो भी थोड़ा क्वार्टर्स पे लेके आए। क्वार्टर्स में भी क्या होता है, अगर मैंने सोचा एक बिजनेस का, यार सपोज करते हैं आई बॉट अ बैंक विच आई थिंक 1000 करोड़ का पैट कभी ना कभी हो जाएगा 2-3 साल में, and when I bought the TTM PAT was 280 crores, which has already gone to 505 crores. So यार फंडामेंटली तो सब सही चल रहा है, पर बीच में स्टॉक ऊपर जाएगा, यूफोरिया हो जाएगा, नीचे आएगा, यार सर व्हाई इज द स्टॉक फॉलिंग? अरे नहीं पता यार, एज सिंपल, मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं पता, सही में नहीं पता यार क्यों गिर रहा है। वो ऊपर बढ़ रहा है, वो हो सकता है रिजल्ट की वजह से बढ़ रहा हो, वो कहते नहीं वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ, मेरे को क्या हुआ तो हुआ, देखा मैंने, इंस्टीट्यूशन ने उसमें खरीदा, ठीक है सब सही है, बट योर प्रोसेस हैज टू बी राइट, बिकॉज आपने फाइनेंशियल मॉडल करा, यार इसमें 1000 करोड़ पैट हो जाएगा, होने को हो सकता है, सो प्रोसेस इज राइट। अब स्टॉक कैन गो फ्रॉम 65 to 40 अगेन, 38 भी देखा हुआ, 38-40 से आई हैव आल्सो सीन 77, राइट? सो अगेन बीच में जो वॉलेटिलिटी है, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, सो यू कांट डिनाई इट, बट अगेन सिंपल आइडिया इज कि कॉन्वेक्सिटी वाली गेम खेलनी है अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है, कॉन्केविटी वाली गेम छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसमें, वरना एक्टिव इन्वेस्टिंग मत करो। म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स आर बियॉन्ड एपिक, एसआईपी तो कर ही रहे होगे सब, राइट? एसआईपी तो करते रहो, दैट्स अ गॉड सेंट टूल यार, मतलब बिकॉज आई हैव सीन दिस इज अगेन विद माय ओन फैमिली आई ऑब्जर्व, सो एक्चुअली एग्जांपल ऑफ माय अंकल ओनली। सो अब अपने अंकल को भी मैंने दीपक नाइट्राइट और जो लॉरेंस लैब्स है 2020 में खरीद के दिया था। मैंने कहा यार ये बढ़िया कंपनी है, आप ना ले लो, इसमें टेल विंड्स आ रही हैं,
तो अगर जो भी अगर री रेटिंग के चांसेस लग रहे हैं, मतलब री रेटिंग बोला नहीं मैं, इसमें अच्छी कंपनी है और कुछ भी नहीं करा, 30 रुपए बड़ा स्टॉक बेच दिया और प्रॉमिस ऐसे थे मैं 3 साल रखूंगा। ठीक है यार, ये भी सही है। Again, but the again simple human psychology factor is he is doing an SIP for the last 10 years. म्यूचुअल फंड का जो NAV है ना, उसमें फ्लक्चुएशन कम है, राइट? म्यूचुअल फंड में सुपीरियर आउटकम्स आते क्यों एक्टिव इन्वेस्टर्स के? एक ही रीजन है, बिकॉज NAV फ्लक्चुएट्स एट अ लेसर पेस। That is something that has been true after talking to a lot of investors, because you are not seeing कि म्यूचुअल फंड के उस NAV के पोर्टफोलियो में क्या है। अपने पोर्टफोलियो में क्या है, 20 में से 18 स्टॉक अप होंगे, 2 स्टॉक डाउन होंगे। ये नहीं होगा 18 स्टॉक अप है, पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा है, तो 2 डाउन क्यों है यार? लॉस एवर्जन है ह्यूमन बीइंग्स में, राइट? दिस इज आल्सो समथिंग दैट वी हैव टू बेसिकली रियलाइज दैट दिस लॉस एवर्जन इज आल्सो देयर। एंड सेकेंडली, अगर मैं आपको कोई भी स्टॉक बता दूं, राइट, whichever stock that I will tell you, if you do not follow the process, if you do not have your own conviction, if you do not follow the story, again it can again the story can derail. So tracking is also really important. So games कौन सी खेलनी है? कॉन्वेक्सिटी वाली, कॉन्केविटी वाली in this room? See, already क्योंकि म्यूचुअल फंड्स तो आप SIP वैसाइपी तो कर रहे हैं, like you can time your lump sums when the markets fall, so that is also like one of the ways to make your mutual fund investing convex as well. Suppose if you are basically if you are working somewhere, you don't have too much time, right? अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे एक्टिव इन्वेस्टिंग को, so one way to make your mutual fund investing or index investing convex is that if the index level P goes below 1918, whatever your favorite mutual fund is or whatever your favorite index fund is, you simply just go and put a lump sum over there. So that will end up making it a convex activity, because us ab lump sum pe you will end up making higher returns, right? So coming to this simple concept is that what we'll do is ki long term investing versus medium term investing. Then we'll do idea of buying a stock that is in momentum versus buying a stock which is basically back to average कहते हैं, mean reversion strategy. And third thing that we'll focus on is technicals and fundamentals. Ki what are the technical criteria we can adopt in our process for exits. What also like so हमेशा एक disturbance क्या आती है यार मेरे दिमाग में? How many of you have read Warren Buffett over there? मुंबई के कम लोग बफेट फॉलोअर्स हैं, दिल्ली में तो किसी से पूछो एवरीवन इज अ WBB. तो अगर संजय भट्टाचार्य का टॉक सुनाएगा तो ही सेज WBB इज अ वॉरेन बफेट भक्त, राइट? So Delhi में if I do this, so like 400 people will say, sir WBB, sir WBB, right? So this question always troubled me कि how does he actually invest? because हमेशा से एक प्रॉब्लम थी कि people think that he uses a formula, people think that he uses DCF. Then he wrote in one of his letters 1992. So I've read all the letters. I probably remember most of the important lines. In 1992, he in the letter he wrote, he that a word in the hand is worth 2 in the bush. So I value stocks using discounted cash flow analysis, right? Then Charlie Munger in 1996 came to the AGM and said, I've never seen him do a DCF once, यार. ये क्या लिख रहा है 1992 में? DCF तो करा नहीं इसने आज तक एक बारी भी. Then he comes in then there is a quotation that always invest for the really long term. Otherwise don't. एक quotation है कि if you cannot think about owning a business for 10 years, then don't even own it for a second. Berkshire Hathaway itself in 1980 till 2020, like between 1980 to 2000, as bought and sold. वो 10 years वाला कहाँ हो गया यार हिसाब किताब, right? So again, because idea is कि अगर आपका strategy define है ना, so all these things can be done if you know what you are getting into. अगर medium term investing कर रहे हो, 2-3 year horizon investing कर रहे हो, mean reversion investing कर रहे हो, you should know what type of जो devil है या evil है you're dealing with. Then things become much simpler because you've defined the problem well. Then you won't go to someone else कि यार इसने बोला था ऐसा हुआ, इससे ऐसा हुआ. At the end, the person that should take the blame is you yourself in the mirror. क्योंकि पैसा किसका है? खुद का. किसी और का पैसा नहीं, पैसा आपका ही है, right? So that is very important. So this story was extremely important because this story is actually not from his book as well, because I read the book again.
this story is actually जो इनकी autobiography है. So the author, right, she gave an interview, and she actually spent a lot of time with Warren Buffett to write the autobiography. And she said कि how does he actually invest? तो अगर this is a very interesting story कि हम लोग जो करते हैं हम P2P analysis कर रहे हैं, right? We are seeing कि if we can make a 10-15% return in this company or index beating return, तभी जाके हम invest करेंगे. But how does Buffett actually invest? So this is probably the only times when his process has been laid out beautifully. कि exact process क्या था investing का. So this is something जो आपको confidence भी देगा कि जो आप लोग भी करते हैं, it is also similar. ऐसा नहीं है कि there is some black magic that is happening. Because I always used to think 2016-17 में यार वो ऐसा क्या करता है यार, मतलब इतना कैसे रिटर्न बन गया, राइट? सो अभी तो 20% CAGR दिखता है, लास्ट 2 डेकेड्स में रिटर्न कम दिखेगा बिकॉज साइज बहुत बड़ा हो गया. बट बिटवीन 1960s to 70s his returns were 30-35% per annum when his capital base was small. All of our capital bases are small. हो सकता है कोई किसी का बहुत ज्यादा हो इधर, बट एटलीस्ट फॉर मी माय कैपिटल बेस इज स्मॉल, व्हिच आई विल एडमिट, राइट? So there is a company which he was asked to invest in by a company by the name of Mid-Continent Tab Card Company. So he was asked to invest in a tab card company way back in 1950s का story है. But his friend told him कि यार this is a startup and this investment can fail as well. So first thing that he did, 2 rules of investing क्या? Never lose money. Do not forget rule number 1. जो traders हैं, चाहे आप मार्क मिनर्विनी की बात करो, चाहे आप स्टैन विंस्टीन की बात करो, what do traders also talk about? Risk management. Agreed? In this room, what do traders talk about? Risk management. Investors and traders, same thing. Investing is also just a form of intelligent speculation over a period of time, right? Because again, you're dealing with something that is probabilistic. So at this point of time, he said कि I won't be investing in the company, right? As compared to other investors who are just focusing कि upside क्या होगी, but he is thinking कि यार downside क्या है इस stage पे. But same company में the facts change over a period of time, right? Now the setup gets established and the company is now doing 40% profit after tax margin, right? 40% PAT margin. Is it a phenomenal business or a bad business? How many companies are doing 40% PAT margin? But not, he doesn't stop here. Now what he does is कि पिछले 12 quarter का data, last 3 years का data of that company along with its competitors, he just lays them out and sees कि peer-to-peer analysis में is this company doing better than the others, and then he sees yes it is doing, and then he ends up investing in that company. And at that point of time, so this will give you a real good idea that he invested 20% of his net worth into one idea. This is when he was small in size. So उस time पे 20% of his net worth was $60,000 in 1950s, 40s, 50s के like mid में. And over a period of time, he topped up his investment. So idea of adding to the winners. So over a period of time, he topped up to his investments, like $1 million all dollar. And 18 years में he made a 33% CAGR. A simple क्या था, like at the time of valuing the company, he just simply asked himself a question: can I make a 15% return on this? And if the answer is yes, he ended up investing. तो आपने कभी देखा कि हम बात करते हैं फॉरवर्ड पीई की? सी आई एम सेइंग कि हम बोल रहे हैं कि हम गलत ही हैं, but even if your guesstimate is 60, 70, 80% of the times right, because you're dealing with a probabilistic future, then again this idea of valuations will help you a lot. So suppose करते हैं कि like because सब like most of the companies that I invest in, I remember कि उनका मतलब forward PE क्या हो सकता है, right? Again E आना जरूरी है. If it's not coming, then your exit strategy has to be on point. जैसे example लेते हैं, suppose if I invest in a chemical company today which is into latex chemicals, example, अगले 2-3 क्वार्टर खराब है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से अगले 2-3 क्वार्टर खराब होने वाले, but still I'm getting very very interested in that company. Again I'll name the company Apcotex के नाम से. How many of you have heard about it? Right? Great. So again it's a company जहाँ पे दिख रहा है अगले 2-3 क्वार्टर खराब होंगे क्योंकि निट्राइल लैटेक्स में डिमांड कम है. But over a 3-4 year period of time, I can simply model this company out. जो भी income statement की सबने क्लास लिख ली SOIC में,
किसी हाउ टू वैल्यू वाली क्लास देखी थी? किसने देखी? रिमेंबर वी मेड अ फाइनेंशियल मॉडल, राइट? सिंपली उस कंपनी को मैं मॉडल आउट कर सकता हूँ, बट वन थिंग दैट आई कैन नॉट मॉडल आउट इज आई डोंट नो कि डिमांड वापस कब आएगी, राइट? सो दैट फॉर दैट यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। इसलिए कहते हैं एमबीए वाली थिंकिंग में मत जाना, राइट? एमबीए वाली थिंकिंग में जाओगे तो यू विल ट्राई टू टाइम इट, फिर वो क्या होएगा, स्टॉक की तब तक 80% बढ़ जाता है, क्योंकि पीपल ऑलवेज गेट टू नो फर्स्ट देन दे स्टार्ट बाइंग द स्टॉक, राइट? सो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मेक बिग मनी इन मार्केट्स। वो जो है ना फ्रेमवर्क की पीपल कम एंड से कि नहीं यार तुम तो पैसा ही नहीं बना सकते, हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन एज है, ये सब वो सब बकवास है। 2017-18 में सेम टाटा एलेक्सी, सर कितनी पी पे होता था एलेक्सी? 15 की पी पे। इशू क्या हुआ था कि जैगवार वॉज 25% ऑफ बिजनेस, एंड जैगवार का बिजनेस कम गया, तो पीपल थ्रैश्ड इट फ्रॉम 30 पी टू 12 या 13 पी, राइट? आप एपीएल अपोलो का एग्जांपल लो यार, 10-11 की पी पे पड़ा होता था ये स्टॉक, स्टील कन्वर्टर बिजनेस होता था, लोग कहते हैं यार ये तो कमोडिटी धंधा है, राइट? ये तो चलेगा ही नहीं। आप एग्जाम्पल चाहे दीपक नाइट्राइट का एग्जाम्पल ले लो, लोग कहते थे तो इतना बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट खुद ब्लास्ट कर देगा। अगेन मैं भी वहां से ट्रैक कर रहा था, मैंने इन्वेस्ट नहीं करा क्योंकि डेट टू इक्विटी बहुत थी, पर जिस दिन कैश फ्लो आने चालू हो गए, डेट टू इक्विटी नीचे जाने लगी, यू चेंज योर माइंड, एज सिंपल। आई एम टेलिंग यू इन दिस रूम ओनली दोज हु विल गेट लकी हु कैन ट्रैक दीज बिजनेस साइकिल्स। Balaji Amines in front of me fell from 800 to 290 because I was tracking the amines industry. मैं alkyl amines पढ़ रहा था उस टाइम, मैंने ये तो गिरते जा रहे हैं, क्या हो गया इसमें? But again they were putting up a huge capex alkyl amines के टाइम पे। So 2018 पे भी अगर if the company was reasonably good, sir, if the because you have a lot of experience of investing, अगर 2018 में भी अगर reasonably good company थी सर, over a 4-year period of time, what have been the returns in those companies? Upwards of 20% easily, right? So like exactly अगर मैं 17-18 में जाके I made a watch list, it was a like hand written watch list, and उसमें मैं देख रहा था यार ऐसा एक भी स्टॉक नहीं था which didn't do really well. ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज उस टाइम से ट्रैक कर रहे हो, आरएचआई मैग्नीसीटा जो आप देखते हो, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज हो, तो कुछ भी नहीं करना था, बहुत दिमाग लगा दिया यार मैं इसमें साइकिल वाइकल करूंगा, लेके बस बैठ जाना था, 7-8 बैगर बन जाता। reasonably good and okay valuations, market leading companies 4-5 year period of time में एक साइकिल आती ही आती है। यही वो कॉन्वेक्सिटी का आइडिया जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करा था, दैट ही invested nearly 20-25% of his net worth in one stock, bought 4% publicly, his shareholding name will still be there, he bought 4% of the company, and he had this similar thought process because he is into investing for the last 25 years. तो अब जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा ना, यू विल ऑलवेज सी दैट दीज साइकिल्स दे आर रेपिटेटिव इन नेचर, दे आर वेरी रेपिटेटिव इन नेचर, एंड ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय योर होमवर्क। होमवर्क एकदम सही होना चाहिए और प्रोसेस हैज टू बी ऑन पॉइंट। या तो बोलो कि जब कर ही रहे हो ऐसी वाली इन्वेस्टिंग, तो ऑलवेज डिफाइन इट वेरी वेरी वेल फर्स्ट, बट ओनली थिंग इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। मैं वो क्वार्टर से क्वार्टर तक वाली तो गेम हो नहीं सकती कि हर क्वार्टर में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। ऑल्सो लाइक नॉट ऑल द मार्केट्स विल बी गुड, नॉट ऑल मार्केट साइकिल्स विल बी गुड, राइट? तो दो कभी हो सकता है कि आज से 2 साल बाद रिटर्न ही ना बने कोई मार्केट्स में, देन पीपल विल थिंक यार ये तो क्या पढ़ा गया मुंबई में, पैसे तो बने नहीं, आया क्यों था, राइट? रिसेंसी बायस है, सिंपल। आज से अगर 2 साल बाद रिटर्न अच्छे हो जाता है, यार मजा आ गया, जीनियस आदमी था, क्या उसने मेरे को चीजें बताई, बोल के क्या था, उसने कहा था वो ट्विटर पे भी होता है वो लोग कहते हैं स्टॉक 4 साल बाद, अरे मैंने बोला था 5 साल पहले वाला स्क्रीनशॉट, अरे अरे 50 स्क्रीनशॉट तो डाल जिसमें बाकी सारे गलत थे। तो दिस इज ट्रू, राइट? सो अगेन लेट गो ऑफ दिस माइंडसेट की वर्ल्ड इज डिटर्मिनिस्टिक, बट थिंग्स दैट वर्क आउट इज रीजनेबल वैल्यूएशन, मार्केट लीडिंग कंपनीज, and looking at them at a time, अगर convexity, true convexity चाहिए investing में, is that when probably the valuations start becoming very reasonable. जैसे अभी Apotex का example discuss करता है, I'll totally discuss it with you, is that now this is a company which is into latex. 50% of the products that they make do not have any competition in India, right? तो हमारा क्या एक जो supply side dominance का criteria, does it get completed? Yes or no? Right? Second thing, promoter families is an extended family of Asian Paints. Well,
we doesn't matter too much, but the idea is governance has been clean because they keep giving dividends भी देते रहते हैं और अभी तक ऐसा कोई हेरा फेरी नहीं करी, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है, कोई ऐसी चीजें नहीं है. थर्ड थिंग इज margins apart from one cycle over a period of time, because the business has built economies of scale, will be volatile and will be between 11 12 to 18% के बैंड के अंदर. इट विल कीप वेरिंग क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेस और गेन्स की इसके अंदर साइकिल होती है. इन्वेंट्री लॉसेस कब होते हैं? जब एकदम पेट्रोकेमिकल्स के प्राइसेस बहुत तेजी से गिर जाए, सो यू हैव टू बुक इन्वेंट्री लॉसेस. तो अभी खराब वाली साइकिल के अंदर है, जो दिख रहा है अगले 2-3 क्वार्टर की खराब साइकिल है, बट पढ़ने का टाइम ही यही है यार. केपेक्स हो चुका है, business has been built to a 2000 crore type top line. Next 2-3 years में कभी भी आ सकती है. केपेक्स की इकोनॉमिक्स पता है किसी को क्या? एसेट टर्न्स की बात करते हैं. 200 करोड़ का फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट है, सेल विल बी 700 करोड़. देन देयर विल बी अ डी बॉटलनेकिंग ऑफ 30 करोड़. उस पे सेल कितनी होगी? 300 करोड़. तो 30 करोड़ पे अगर 300 करोड़ की सेल होती है, जो डी बॉटलनेकिंग इंक्रीमेंटल होती है, अगर पूरे 230 करोड़ के केपेक्स में 1000 करोड़ की सेल्स है, एंड जस्ट इमेजिन अगर लेट्स से 15% का भी ईबिटा मार्जिन कमाता है, तो 1000 करोड़ का 15% कितना होता है? 150 करोड़. पैसे कितने लगा रहे हैं? वर्किंग कैपिटल भी होएगा, राइट? वर्किंग कैपिटल इज नॉर्मल. कैश कन्वर्जन साइकिल 60 डेज है, तो वर्किंग कैपिटल लगा लो 200 करोड़ और हो जाता है. सो 430 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे अगर मैं 150 करोड़ कमा रहा हूँ, इज इट अ बैड इन्वेस्टमेंट? इट्स अ फिनोमिनल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स की जो कैपेक्स कर रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हेन द साइकिल टर्न्स, राइट? दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू गो एंड स्टडी दिस बिजनेस. एपीएल अपोलो में भी एग्जैक्टली यही हुआ था. एपीएल अपोलो, लाइक इन आवर ओन जर्नीज, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट स्टॉक वे वी मेड अ 11 नॉट टू और अ 12 बैगर. सिंपल फ्रेमवर्क था यार कि जब लिया भी था 18 महीने स्टॉक ही नहीं हिला था. फॉर 18 months द स्टॉक प्राइस डिडंट गो एनीवेयर बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट वाज रियली पुअर इन द कंट्री. मतलब अगर 2018 to 20 वाली मार्केट किसी को भी याद होगी ना, यहाँ पे रिजल्ट अगर रिटर्न्स अच्छे, अगर आपकी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे भी आए ना, स्टॉक फिर भी 5% गिरेगा. मार्केट्स आर मूडी यार, मार्केट्स आर वेरी मूडी. बट सेम स्टॉक्स 18-20 वाले आज मैं देखता हूँ 2023 में, लाइक दे हैव गिवन ह्यूज रिटर्न्स यार. देन आई थिंक कि like looking, because we can always look at the past to join the dots, ki what am I looking at it looking at today, which I think 2-3 years out can be a huge winner. It's so such businesses I'll just go and do homework. Same homework, another example, मतलब क्योंकि हम ये केस स्टडी ले रहे हैं, तो मार्केट डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई, सप्लाई साइड डोमिनेंस है. थर्ड है कंपनी का क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज इट मोर देन 20% ऑन इंक्रीमेंटल लाइक कैपिटल? Did we do the calculation? Is it more than 20%? Right? So simple questions यहीं से आंसर होने स्टार्ट हो जाते हैं. So simple questions start getting answered from here. Possibly 10-20%, 30% और शायद से स्टॉक गिर जाए, right? But again, if you're purely a fundamental investor, these are the type of questions you will like to get answered. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं डाउन साइकिल में कोई रियल एस्टेट डेवलपर देखता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिजनेस में? कोई है रियल एस्टेट बिजनेस में यहाँ से? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करते हैं मैंने 4 प्रोजेक्ट डाले, 4 में से एक प्रोजेक्ट तो बहुत मस्त निकल गया, दूसरा प्रोजेक्ट थोड़ा खराब हुआ, आगे का साइड व्यूइंग अच्छी नहीं थी, लोग उस स्पीड पे खरीद नहीं रहे, तीसरा प्रोजेक्ट ऑल्सो डज वेल, फोर्थ प्रोजेक्ट के अंदर कोई लिटिगेशन इशू हो गया, प्रोजेक्ट ही फंस गया. विल द कैश फ्लोज बी स्ट्रक्चरल और लंपी ऑफ दिस बिजनेस? How can you value such a company? How many real estate developers have created wealth in last 12 years? Only 1 or 2, and one of them is Phoenix Mills. मॉल गया कोई यहाँ पे? मैं कल गया था, I was surprised to see कि the mall was really good, right? I think I met one of the tribe members, if he is here or not today, right? So again, because again that is a recurring business. आप मॉल बार बार जा रहे हैं, but 12 years में how many real estate companies have created wealth? पर हर 3-4 साल में एक बार बात आती है कि रियल एस्टेट का टाइम आ गया, राइट? बट एट द सेम टाइम लुक एट बिल्डिंग मटेरियल्स. रियल एस्टेट की डाउन साइकिल में भी एग्जांपल, क्या घर के अंदर केबल एंड वायर यूज होनी कम हुई? कम हुई यूज होनी? आंसर इज नो. एक्चुअली में एप्लीकेशंस आर इंक्रीजिंग, राइट?
लोग रेलवे केपेक्स की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे होनी है, विल केबल एंड वायर्स गेट यूज्ड, राइट? सिंपल आइडिया इज कि लुकिंग फॉर एटलीस्ट अ बिट नॉन डिस्क्रिशनरी, मतलब ऐसे आप ट्रेंड्स देख रहे हैं जहां पे विच आर नॉट टू लंपी इन नेचर. अगर लंपीनेस है देन यू हैव टू डिफाइन योर एग्जिट स्ट्रेटजी. एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप सब याद रखना कि वेन एवर अ स्टॉक गोज परपेंडिकुलर, आपने देखा है लाइक जो 2-3 साइकिल यहाँ पे स्पेंड करके आए हैं, they'll also always see there will be a stock that they own or they're watching in the market which will just go this, it will probably go like this, just like this, right? And if it becomes a bit frothy, इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है? 12%, अगर आप इन्फ्लेशन को डाल लो साथ, राइट? नॉमिनल प्लस रियल. If a stock gives you a 80% CAGR in 2 years, is it sustainable? Is it? It's not, right? Understand that as well. If it is getting too good, it is becoming too good, right? Start becoming cautious. Last 2-3 cycles, this is one of the cleanest learning. Start becoming cautious if it becomes too good. Remember one of the developers was Ashiana Housing, and he used to track this company, and the stock really just went like it just blasted like anything. It was a 6-7 bagger within a year, and then till now it hasn't touched those peaks. Last 2 years में ले लेते example है, Tata Elxsi 800 to 10,000, right? Laurus Labs 60 rupees to 720-730 rupees. Example अगर आप सारे गामा के लेते हो 40 to 540 rupees, right? मैस्टेक का एग्जाम्पल लेते हो, मैस्टेक सर एक टाइम पे 4 की पी पे था क्योंकि यूके गवर्नमेंट की स्पेंड्स पे अनसर्टेनिटी थी, राइट? जो वापस आ गई है. स्टॉक वेंट फ्रॉम 40-50 rupees to 2,600 rupees at the peak, right? Whenever such peaks happen, just be a bit cautious. मैं ये नहीं कह रहा कि you totally ignore the story. हो सकता है कि company basically is still in the stage 2. Probably हो सकता है कि the business keeps performing well, but be a bit cagey जब last 1-2 years के अंदर ही बहुत ज़्यादा return बन जाए. And also this idea, like those who have created reasonable amount from wealth from stock markets, can you raise your hands here? Reasonable amount of wealth. Sir, in your journey, just a question, अगर आप active stock picking ही कर रहे हैं, so if you look back at it, how many stocks had a real contribution to that? 3 stocks, right? Like anyone else who created reasonable amount of wealth? 4-5 stocks. Sir, कितने? 5 stocks. And what about you, sir? 2-3 stocks. Anyone else in this room? 3 stocks. जितने 2 साल वाले हैं सारी चीजें नोटिस करो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ठीक कर रहा हूँ. जो लगता है ना कि 25 स्टॉक लूंगा सारे उड़ जाएंगे, मैं ही आइंस्टाइन हूँ, नहीं होता ऐसे. सारे एक्सपेक्टेशन ठीक करो जो भी ये देख रहे हैं. सर, और एनीवन एल्स? 4 stocks. Which one, sir? नहीं, कौन कौन से स्टॉक्स थे? Right? Right. But you got your exit right. MRF. RI. APL Apollo, okay. Something we have been similar. And second one is Tejas Networks, right? And Tejas Networks, right? Yes, sir. SRF, where? Mastech. So Sonata Software, like still doing very well. Alok Industries, right? So that is the truth, यार. मतलब अगर आप Berkshire Hathaway का भी रिटर्न देखते हो तो इस बारी लेटर में क्या बोल रहे हैं कि if you look at our returns, so probably a dozen investments, right? A dozen investments have contributed majorly to our returns. And he keeps on saying कि the lesson is that the weeds wither away in like the weeds basically go away. जो भी जितनी भी weeds होती है, like if you compare the weeds with the flowers, the weeds wither away in insignificance and the flowers keep blooming.
तो जिनके पास भी SRF था यहाँ पे, like some of them who have been actually made like 10-15 years में huge wealth, आपको याद भी नहीं होगा 10 साल पहले क्या गलती हुई थी यार, because they become too small part of your life, right? Portfolio का भी कम गिरते जाते हैं part. This idea is of allocation, very very important. How many of you now consciously think about allocations? How many of you used to think about allocations? वो एक मतलब मेरे एक और अंकल हैं, मेरे को उनकी भी स्टोरी बड़ी फनी लगती है, मैं उनको कितनी बार कह जाओ कोर्स कर लो यार, मैं आपको कितना कितना समझाऊं कि आपको कैसे बताऊं. So he has made some huge multi-baggers, but he has almost 470 stocks. So I'm like कि आप भी तो इंडेक्स ही आप हो यार, आप ही हो इंडेक्स और कोई नहीं, आप ही इंडेक्स हो. So he also has a like I was like talking to him about this shunt resistor वाली जो कंपनी शिवालिक बायोमेटल्स की, अंकल उसकी AGM पे गया था, कहते वो स्टॉक तो है मेरे पास. तो मैंने कहा अच्छा है, कह रहे मैंने बनाया उसमें 15 बैगर, मैंने एलोकेशन कितनी, क्या है यार 0.2% थी, तो वो भी ठीक है. फिर उनसे किसी स्टॉक की बात करो, टाटा एलेक्सी वो भी है मेरे पास, IEX की बात करो, IEX भी है मेरे पास, सारे कामा की बात कर रहे वो तो मैंने कारवा दे के ले लिया था. Again, but the idea is कि significant wealth creation नहीं हुई because he had so many stocks that none of them was like significant for his net worth. Like the long-term investors who are saying over here कि 3, 4, 5 stocks led to significant outperformance, I'm probably sure कि आपके net worth का बहुत part होएगा उसमें, right? So कितना allocation था like sir for you like 3 stocks? Right. Great. Anyone else? Like someone allocated like 8-10% and right, sir. And उसी से financial freedom होगी sir. होगी ना? Because see, sir has been to almost 3-4 of our events, and जब भी आप sir से बात करो एकदम chill हैं. मैंने कहा sir की financial freedom हो चुकी है, पक्की बात है. हो चुकी है विनय सर या नहीं हुई? हो गई ना, 1-2 स्टॉक से ही हो जाती है. Actually मैं मतलब I'm just assuming, I don't know कि हुई नहीं अब like, right? And probably if you like wonderful person also, like he's been to almost 4th event है विनय सर आज आपका, 4th or 5th event. So Delhi में भी सर events में आए, एक Aurum Capital साथ event था उसमें भी थे सर. So like also talk to him afterwards. Like already people who have achieved जो in like through investing, it's great to talk to them. Vinay, right? Over. So he embraced convexity, I'll say. So this is right. Sir, I always say कि अगर आप 15 stocks का भी portfolio बना रहे हो, like how it, so I'll come to 5 to 6. Suppose you have a 15 stock portfolio, and philosophy is this only कि if you hit it out of the park, it will be a out of the park home run. 4 or 5 of them work, you are done. I always think like this. अगर 15 में से 3-4 का भी mistakes है, 4-5 का mistakes का जो उसमें cushion है, it affords you 4 to 5 mistakes. But जो 6 stock concentrated portfolio, over there you really need to know what you're getting into. I'm not saying that will be correct or wrong, but you really need to know what you're getting into, and probably those companies should have an established track record. अगर sir like Buffett in his life has put 40% of his wealth in Apple, right, जो portfolio का था, and एक बारी Bank of America में डाला था almost 40-50%. He did it because those companies had an established track record, right? अगर हम किसी नई emerging company में 60-70% डाल दें, probably sir you can do well, but losers जो losers होते हैं, they never live to write stories. Stories are always written by survivors, right? So this is why 15 stock portfolio I think is the sweet spot, very sweet spot. Because if you make mistakes, your mistakes will still like let you survive. But then if you make winners, suppose 7% Bajaj Finance में होता, 10 years का holding period होता, right? Suppose portfolio time पे 1 crore का होता, 7 lakh rupees Bajaj Finance में होते, probably 7 crores होते आज, यहाँ ज़्यादा होते उससे, right? And throughout the journey थोड़ा सा अगर all skilled हो जाए तो you can also learn about averaging up over a period of time if your thesis starts playing out. But 15 stock is probably the sweet spot for a retail investor, because
25, 30, 40, like 470. I don't know, like, तो वो मेरे पास पीछे आए थे कि मैं उसको कम करना है, कैसे करूं? मैंने कहा एक ही रीजन, सारे बेच दो, सारे बेच दो, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश स्लेट. So that will be give you much more mental peace. But like my mental peace has been disturbed because he's saying कि इसमें से 70 बताओ कैसे हटाऊं, 200 बताओ. तो I'm very very disturbed. तो I'm like कि अब मैं actually हार मान ली मैंने. Again, this very very wonderful case study. I don't know if how many of you were there into investing at that time. क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत old investor लग नहीं रहा. Did anyone witness the .com bubble? And sir, IT stocks का क्या PE हो गया था sir? Right sir. So this is a very wonderful case study. Is that again this is concavity. अब आपको मैं बार-बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि at least this few principles in your life are clear when you're investing. This is Infosys, and in year 2000, can anyone tell me what the P ratio was? 206. So are we taking an extreme bet? See, valuations का मतलब क्या है? आप extremes को identify करो. Simple meaning valuations का ये है. मैं नहीं कह सकता कि ये कल को करेक्ट होएगा या परसों करेक्ट होएगा, बट अगर एक्सट्रीम है तो मैं उस टाइम पे अवॉइड कर दूंगा. और वैल्यूएशंस इज कितने, किसी ने पोकर खेली है यहाँ पे? टेक्सास होल्डम पोकर, हु प्लेस? I think those who play poker also have a very good advantage because they realize कि valuations are nothing but they are odds. People think कि नहीं यार ये intrinsic value है, इसने 1% ऐसे ऊपर नीचे निकाल दिया. वो इंजीनियर होते हैं. मैं 100% बता सकता हूँ वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स में क्या होती है, या तो वो फिजिक्स के बैकग्राउंड से होते हैं. यार ये प्रिसाइज होना चाहिए. अरे नहीं होता. असली लाइफ है, रियल लाइफ इज इफ यू डू दिस 5-10 years you will realize कि पहले ही फ्लेक्सिबल हो जाओ, वरना बाद में पेन पीरियड है. राइट. सो सिंपली इन एग्जांपल ऑफ Infosys, and just look at the PAT growth in 2000 and 2001. What's the PAT growth on the screen? Can anyone tell me? 159, right? But look at the PAT growth in 2002. Has the PAT growth, like growth angle, मैं ये नहीं कह रहा कि degrowth है, still look at it over the last 22 years. कितनी companies ऐसा करती है? How many companies grow their profits like this? Very rare, right? But still a good company bought at the wrong period of time. So यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू में भी आपको खोल के दिखा था कि एक्चुअली में वॉलेटिलिटी स्टॉक ट्रिगर हो गया था 2000 में, राइट? सो दैट इज एग्जिट स्ट्रेटजीज में वील टॉक कि एक्चुअली में फॉर 8-10 years यू डिडंट मेक एनी मनी. अगर किसी ने पीक पे लिया होता, फॉर 8-10 years नो मनी वाज मेड. सो इंडेक्स, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो एक्चुअली में अगर आप इंडेक्स का उस टाइम पे पी देखते हैं तो इंडेक्स पी itself was close to 20 to 23 times के बीच में. तो आप कह सकते हो फॉर एन वर्सेस एन एवरेज कंपनी इट वाज 10x मोर एक्सपेंसिव अगर आप इंडेक्स की पी में देखते हैं. हाँ, 100% के वजह से ग्रोथ 30% आई, राइट? तो अगेन इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, राइट? So when the growth rate falls, like growth rate changed from 100% to what? And index का growth rate कितना ही आएगा? 12 to 15%. So always like remember this, it's a discounting machine. So actually when this ended up happening between like for next 5 years, there was a -5% CAGR. Between 2001, like so again from next 6 years, अगर 2001 में लिया होता, when the P started correcting, like अगर 44 पे P आ गई होती, right? So over here जब P 44 पे आ गई थी तो भी 12 to 14% CAGR बन जाता. और अगर 2002 में लिया होता तब 18% CAGR बनता. So I'm not saying always ignore past winners, but remember कि winners they keep changing. New and new winners emerge in every new cycle. Past winners को ignore नहीं करते if it's a good quality business. I will never ignore a Tata Elxsi even today, right? Because I know it's a very good quality business. So it's a business that you keep tracking. But maybe at this point of time, if I take an entry into that business, I won't be making even index beating returns. That is my just philosophy. See,
I've seen कि even though मैं कहता हूँ 10 साल सोचो, 15 साल सोचो, 3-4 साल में रिटर्न नहीं बनता ना, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. अभी तो लोगों को 3 महीने में आने लग गई है, बट 3-4 साल, एंड अगर आप आए हो एक साइकिल तो सोचो यार कि मैं 5 साल के लिए तो ठहरने वाला हूँ यार. 5 साल बाद नहीं हुआ तो ठीक है, इंडेक्स और म्यूचुअल फंड करेंगे, बट 5 साल से पहले अगर आप क्विट और ये सब डिसीजन ले रहे हो तो आई थिंक दैट इज वेरी अनफेयर, बिकॉज यू हैवंट गिवन योरसेल्फ टाइम टू इवॉल्व एंड डेवलप. पहले 1-2 साल तो यार वैसे ही होता है, राइट सर? माइक, यू कैन. राइट. सी अगेन, इसमें एक्चुअली द साइकिल्स आर बिकमिंग शॉर्टर. उसका पर्सपेक्टिव क्या था लिखने का कि पीपल कीप सेइंग कि वंस इन अ डेकेड वन इवेंट, वंस इन अ डेकेड इवेंट. और वंस इन अ डेकेड इवेंट तो आजकल हर रोज ऐसे मतलब सस्ते में ही हो जाते हैं, राइट? सो द आइडिया इज कि साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स, लाइक सपोज हम अभी एप्कोटेक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रॉब्ली आगे जाते 6-7 बिजनेस और ऐसे एग्जांपल्स में पढ़ाऊंगा, लाइक वील टॉक अबाउट अ कामा होल्डिंग्स एज वेल, राइट? देयर विल बी मल्टीपल सच कंपनीज. Business cycles, I think if 3-year growth, so what happened due to COVID was कि जो 3 साल की पैट ग्रोथ थी वो 1 साल में आ गई कंपनीज की, बिकॉज कंपनीज ओवर इन्वेंटराइज्ड. मतलब इन्वेंट्री कंपनीज ने बहुत ज्यादा ओवर कर ली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज. तो जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ वेब ऑफ ग्लोबल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन वेब ऑफ ग्लोबल? सो वेब ऑफ ग्लोबल का जो अगले 3-4 साल का ग्रोथ आना था, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए थे सारे, तो सबको शॉपिंग कीड़ा तो होता है, लाइक अ मैन कैन नॉट सिट आइडल इन अ रूम, राइट? सो जो भी आपकी शॉपिंग वॉपिंग हुई वहां पे बहुत तेजी से हुई. आई थिंक यू कुड हैव सीन कि 70-80% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी फॉर अ बिजनेस हुज बेस ग्रोथ वाज 10-12%. एंड नाउ बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट, इतनी शॉपिंग कर ली, अब क्या करेंगे यार घर पे बार बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगा के, नाउ द ग्रोथ हैज टेपर्ड ऑफ, बेस हाई हो गया, राइट? सो अगेन ये जो मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग की और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का जो 2 to 3 ईयर वाला साइकिल्स है, उसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर एंट्री इज टाइम राइट, strategy is important. But ये जो stocks becoming perpendicular and then going down, I think probably this will become normal over next 5-10 years, because interest rates का भी जो cycle है world में, that has also speeded. आज तक Fed ने within 2 years 8 या 9 interest rates hike नहीं करी. 1970s में जो पॉल वॉकर एरा भी थी यूएस की, that took 10 years to play out. यहाँ पे तो फटाफट 1.5 साल में 8 से 9 हाइक, राइट? उसी स्पीड से कम होने के भी चांसेस होंगे. when we realize कि inflation has peaked out, तो वो सब लगेगा hindsight में, यार ये सब तो हो गया. but cycles have shortened precisely post 2010, ये जो quantitative easing हुई है इन सब चीजों की वजह से. so this is something which you have to live with, और इस वजह से exit strategies पे second part of the framework पे I'll come to. a bit louder sir, so everyone can hear. To be a still a high valuation. So how 16, 17, 60? 60, it's very So high. they were 100, but 100, 110 and all, but now they've come down to 60, 70. Sir, it's like कि जब आप this is a very good analogy to give, is like suppose if you pour a coke in a glass, is there froth that gets collected? So markets always like जब that froth gets cleaned up, तो markets में और reverse भी जाते हैं, froth actually वो coke ही कम हो जाती है over a period of time, and then you look at it. like example दे दो आपको, there's an amines company, बालाजी amines. मैं उसको बहुत interested हूँ ट्रैक करने में, क्योंकि मेरे सारा फ्रेमवर्क मीट करती है. इज देयर सप्लाई साइड डोमिनेंस इन द इंडस्ट्री? आर द मार्जिन्स सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10-12 years? लास्ट 2 years में पता है हमें कहाँ गए थे और कहाँ नहीं गए, राइट? थर्ड क्वेश्चन, हैज द बिजनेस ग्रोन ओवर लास्ट 2 decades?
Is the track record visible? Is it in a down cycle right now? Is the E inflated? जो हमने बार-बार टेलीग्राम और केस स्टडीज करी, right? So this type of business सर 60-70 वाला सर मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, फ्रेमवर्क में नहीं आ रहा मेरे. Yeah, if it's 60-70p, if the earnings have to grow at 60-70%. And especially to add on to this point, they have a lot of investment also, capex also doing. So they are going to like grow from say currently 50 crore PAT to around 200 crore down 3 years down the line. So even if I apply the same P, or even if I apply say 30p to the stock, say if they grow from 50 to 200 at 30p also, they are going to be a at least one time, 2 times. Is it Neogen Chemicals? Yeah. Right. So again, so there are only actually 2-3 companies which meet this criteria within that chemical package. Neogen, second is Naveen Fluorine, right? Right. Aether is a really good company, but 100p, sir, it's really difficult. मतलब वो 100 का P आज से 10 साल बाद 30 का रह जाता है. आपने कितना रिटर्न दे दिया यार मार्केट को? 10 आपने 8-10% के अगर ऐसे ही वापस दे दिया अपना. तो एक्चुअली में वो स्लाइड है, वो आपका ये जो क्वेश्चन है, आई विल कवर ओवर देयर. But starting valuation, if it's 60p, markets में apart from an Astral, no stock has created those huge, like has been in the best performing top 50. Sir, उस business बारे में I'll come to it because I also very closely track it. Like वो electrolyte का economics भी I've seen. तो right. So I think last 3-4 slides, then we'll have a short break. Right. Right. In your portfolio. So Amit, it's a wonderful question. And so like, let's take an example in my own case study. So there is a steel tube company. There is a fluorination company, which has done really well. And now they optically look expensive, right? So I will be with it till either the growth tapers off. That is one question. And second question is ki if I'm using technical, so I'll put a monthly V stop on it with 2.5 multiplier. That is the second one. Because see, if the correction comes like so, DMart everyone knew is expensive at 230p. But उस टाइम पे स्टोरी क्या था, फ्लोट कॉर्नर्ड है, एफएनओ में नहीं है, तो चलते ही रहेगा, राइट? करेक्शन हुआ ना, 50% करेक्शन होगी ऑलमोस्ट, राइट? So in those scenarios, I think right rational and objective ways to cut the stock. If you ask me, अगर आप XIRR बारे में सोच रहे हो, it's the way to cut the stock. But again, if it's not horribly expensive, अगर वो 70-80 की PE पे नहीं है, वो फिर भी 30-40 की PE पे रहता है, let it be, don't disturb. Because compound, like again, yesterday we met one of the investors, right? He kept in the story, he was in the story because it grew at 40%. 60 की PE चलेगी और 40 का वो था. There is one of the investors we met yesterday. So he was invested in a stock which went to 50p and post 50p it became a 10 bagger because earnings were growing at 40-50%. So his जो कह रहे थे ना कि adjacencies देख रहा हूँ कि ये adhesive कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं कर रहा. So this is why he was very focused on terminal value expansion, like Mr. Utpal Sheth also says. So again, that is the philosophy of investing, but we don't know if it turns out into a relaxo. What if it turns out into Berger Paints? 3 साल से कोई return नहीं है, right? What if again someone gets into DMart at 5,500? What if someone buys a Alexi at 9,000? He won't see the peak for next 2-3 years. किसी ने आवास फाइनेंशियल लिया होगा 3,200 या 3,100 पे. Like for a housing finance company, in my opinion, it was 100p only because price to book went to 8 to 10 times, right? So it's again a meter of odds. So you have to be very sure. अगर आप बैठे हो ऐसी कंपनी पे, like he gave an example of one of the bromination companies. If he thinks कि 10-year runway है या 5 years runway है, तो probably yes, it's still cheap. Okay, just to give you some examples, in my portfolio also, about 25% of the stocks out of a 15 stock portfolio on the average, maybe 5 stocks have given multi-bagger returns. I have still not sold any of them. I think I've mentioned some names to you.
DMart I hold from listing day. I've still not sold it. Right, sir. Bajaj Finance is another one. Neogen is another one, which I still continue to hold. I know you sold it, you mentioned it only. Right. But my whole question to you is, when some of these companies, the managements are so good, where they can generate optionalities, which currently we as investors Can't even fathom. Right, right. You know, when you have such great management, does it make sense to sell purely on valuation? Sir, valuations पे 100% it might not make sense in some scenarios. But base matters. Bajaj Finance is not the same Bajaj Finance which is जो आज 3 लाख करोड़ के बेस साइज पे होएगा. अगर आज वो 50,000 करोड़ के बेस साइज पे होता तो we have seen companies going from 50,000 to 3 lakh crores. But we haven't seen companies in financials. So अगर पूरा बेस साइज लो in history of Indian financials, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी अगर आप पढ़ो उसमें, तो no financial has grown at 25-30% post crossing 3 lakh crores. Because what will happen, you'll go into housing finance. Are they going into housing finance? Yes or no? Is housing finance ROA and ROE dilutive? The answer is yes. If it becomes into a bank, will the ROE get diluted? The answer is yes. So it's always a question. Again, I'll say ki probably, again, probably is the key word to use, not a definitive yes or no. Probably the base will be a spoil sport for next few years. And base is a very interesting thing because 10 years पहले जो कहेगा यार बजाज फाइनेंस लिया तो उस टाइम पे क्या बेस होएगा 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का. So 3 lakh crores say, can it go to 40 lakh crores? Can it go to 30 lakh crores? Entire lending market size is 100 lakh crores at the moment. So will it be 30-40% of the entire lending market? No, probably. Like again, probably. I'll use the word probably very, very carefully because it's a subjective truth. So 70-80% मेरे को लगता है ऐसा बहुत मुश्किल है होना. तो इस वजह से I'll end up avoiding it. Same question अगर कोई पेंट्स कंपनी पे मुझसे पूछता है, कहता हूँ यहाँ से आपको लगता है कि सेल 5x हो जाएगी? People say कि हो सकता है वो यहाँ ना हो, but last 10 years में 5x नहीं हुई सर, last 10 years में 3x हुई है. So again, it's a question of base size that matters. There's Neogen Chemicals का example है. DMart at the time of listing, if I'm not mistaken, the sales have since grown by almost 4x post listing. Probably the growth can be too exponential in that company, but वो आपको cash conversion देखना पड़ेगा. QIP बार बार होते गए तो as a shareholder you might not end up making money because you'll keep getting diluted out of it. That is something that you have to think. But again, growth has to be explosive if you're owning a high PE company. DMart growth was really explosive, right? For 4-5 years, the growth phase was really explosive. So high PE पे भी क्या होता है? E keeps surprising and it keeps getting upwards. So just before going for a short break, so Ishmohit, अच्छा है ना अभी time. हाँ. So I think Just अभी one 40 question. minutes है break में तो कोई पूरा problem नहीं है. I thought कि 1 o'clock होने वाली. Right, just so- one question. Again, a simple thing is that One question. Yeah. So, see, I get the point what we are trying to achieve at that थोड़ा val- सा Mike. valuations need to be reasonable. Now, if you read what Michael Mauboussin writes, right, around the treatment of intangibles. So how do we adjust that? Because then it becomes very difficult to go. Let's say if someone is growing organically, then obviously everything would be expensed out, whatever customer acquisition cost or whatever whatever these terms are. And if someone is growing inorganically, it will be seen on the cash flows, right? So how do we adjust for these anomalies? Likewise, he cited examples on some tech investments. So everything would be expensed out. Whereas in certain cases, it will be capitalized. So how do we arrive at that? Do you look at for earnings, EBITDA, EBIT, or cash flows? So I think your question is more towards, I think because in US what ends up happening. So I'll just first explain the question कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको केपेक्स करना पड़ता है, राइट? कैपिटल कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यूएस की जो कंपनीज हैं जो टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, सो दे हैव टू डू ओपेक्स क्योंकि आप प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर रहे हो, R&D कर रहे हो, या तो यू हैव टू कीप डूइंग एडवर्टाइजिंग एज वेल. So your capex will be less, but your opex will be too high. That is the exact question. वो intangibles में like your Yes. brand is being created, right? So again, sir, this is a good question. So in scenarios like such companies, so only one thing has to be seen.
3-4 years out, what is the cash flow generation such a company can do? And if the cash flow generation is a huge answer, like I think Salesforce is one of the business which was always at some 100 P, but cash flow, price to cash flow was lower. So price to cash flow was lower, and over a period of time, the cash flows have grown at a like CAGR of 25-27%, and stock return itself has been, it's been a huge winner. So in such a scenario, I'll probably look at a price to cash flow multiple or EV to cash flow multiple. So in India, is it advisable to look at this multiple? Because even, you know, if you read Terry Smith, he talks about in his letters about the cash flow, free cash flow yield. Is it helpful in India to look at it, or it doesn't work in the Indian context So broadly? wonderful question. It's a good name. Suketu. Kedu. So the thing is कि Indian context में, if we look at the winners, actually मैं उस slide पे आने ही वाला था. So these are some of the companies in the Indian context. So if you look at Astral Polytechnic, you will see an Ajanta Pharma, you'll see an Alti Industries, a Minda Industries, Relaxo Footwear, so Vinidhi Organics, a PI Industries. अतुल आपको दिखेगा, दीपक नाइट्राइट दिखेगा, सेरा सैनिटरी वेयर दिखेगा, राइट, हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स दिखेगा, कजारिया सिनेमिक्स दिखेगा, आइशर मोटर्स दिखेगा. लाइक लास्ट डेकेडल विनर्स में आर दीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज? यस और नो? Yes. वन और टू, एक दो को हटा देते हैं. मतलब अगर मेजॉरिटी ऑफ देम आर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए केपेक्स करना पड़ता है. केपेक्स कर रहे तो फ्री कैश फ्लो ज्यादा आएगा, कम होएगा? कम होएगा. कम होएगा, राइट? सो यू माइट एंड अप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज अगर फ्री कैश फ्लो यील्ड पे देख रहे हैं सिर्फ. सो जो एक आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का सिनेरियो होता है ना, काफी बारी यू हैव टू एक्चुअली, द ब्यूटी इज कि समटाइम्स व्हेन यू स्टडी द बिजनेस कंप्लीटली, देन द मल्टीपल आपको खुद ही पता लग जाता है यार इसमें मैं कौन सा मल्टीपल यूज करूं. जैसे अगर अभी आई थिंक प्रतीक माइट हैव रेड संदूर मैग्नीज, राइट, तो ही विल बी थिंकिंग कि इसको मैं अगर एसओटीपी कर रहा हूं तो एसओटीपी इसमें कैसे करूं. Similarly, free cash flow yield will be a good multiple to use in companies who do not need to invest too much in capex to grow. And free cash flows are high, but they still keep growing those free cash flows without investing in cash flows. So he'll be using these multiples for companies like Microsoft, right? Because Microsoft may, even though data center capex hai, but still free cash flow yield for a Microsoft today is at 6%. Which is like interesting. Mining companies में, how many of you have heard about GPIL? Right, so they are into selling iron pellets, high grade realization iron pellets. P ratio is 4.5 times today, 5 के आसपास. Earnings yield is 20%. And the way company is putting up capex, आज live नहीं जा रहा, 3 साल बाद live जा रहा है. जो संदूर मैग्नीज का एग्जांपल था, this company is even doing more capex than that one, and the capacities which are coming on stream, I think if I'm not mistaken 2.7 million का आयरन और कैपेसिटी 6 million हो जाएगा. एक स्टील का प्लांट आ रहा है, जो आयरन पेलेट्स है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ रही है, एंड दे हैव रिजर्व्स टिल 2080, एंड 80 million रिजर्व्स है आपके पास, 80 million टन का आपके पास रिजर्व है. वैसे संदूर मैग्नीज का तो 2033 तक आपका लीज एक्सपायर हो रहा है, राइट? तो वी डोंट नो इफ द लीज गेट्स रिन्यूड और नॉट. बट अगेन सच अ कंपनी में अगर मैं ऐसे सोचूं, अगर मैं स्टॉक प्राइस को हटा देता हूँ, आज मेरे को नहीं पता वो आयरन प्राइस ऊपर जाएगा, आयरन ओर का प्राइस है, आयरन पैलेट्स का प्राइस अगले क्वार्टर में ऊपर नीचे जाएगा. अगर मैं 3 years आउट सोच रहा हूँ ऐसी कंपनी में, जस्ट एज एन एग्जांपल, probably that company post 3 years because he'll be doing 1,000 crore capex. आज मार्केट कैप है, मेरे को पूरा जो कैश फ्लो है इस कंपनी का, प्रॉब्ली अगर आज लाइक एंटरप्राइज वैल्यू 4600 करोड़ की है, तो उस कंपनी का कैश फ्लो एक टाइम पे 22-2300 करोड़ हो जाएगा. तो ऐसी कंपनी में जाके मैं सोचूंगा कि इसका जो स्टेडी स्टेट केपेक्स होएगा, जब इसका केपेक्स खत्म हो जाता है माइनिंग का, और जब वो कैश फ्लो जनरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि सब फ्री कैश फ्लो ही होने वाला है, तो वहां पे मेरा फ्री कैश फ्लो यील्ड 50% होएगा आफ्टर 3-4 years. तो ऐसे मैं सोचूंगा कि मेरे को इस कंपनी को आज पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए. मैं तो मतलब पढ़ रहा हूँ बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम स्टडिंग इट बिकॉज आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. कि अगर कभी बहुत कोई फ्रीक चीज होगी तो लाइक आई एम ऑलरेडी लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी. प्रॉब्ली इन सच अ कंपनी आई लुक एट इट. बट इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, बिकॉज आप पीआई इंडस्ट्रीज का देखो, यूज्ड टू हैव 1 plant in 2010, टुडे 13 plants हो जाएंगे. इफ यू डू नॉट पुट स्टील इनटू द ग्राउंड, हाउ विल यू ग्रो?
This will become, Amit ji, this will clear your doubt very well. Just look at the starting multiple of the past winners. Is the screen visible to all? या पीछे वालों को नहीं दिख रही? Right. So again, this is very interesting. So just look at the starting PE ratios. Right. No, like only one company which had a starting PE ratio of 31, which ended up becoming a 100 bagger in last decade. And what is that company last May? Page Industries. Only one company which had a PE ratio of 31. Hatson Agro even also had a PE ratio of 30. How many of the, like, these are actually the best of the best winners between 2011 till 2019. How many of them had a 100 P or 80 P? Can anyone tell me? Is there any? Look at the like earnings growth along with it. Right. So Bajaj Finance EPS growth 35%. Like this Astral Polytechnic 24%, Ajanta Pharma 29%, Aarti Industries 23%. Only 2-3 companies had below 20% earnings growth and they ended up becoming huge winners. But majority of the company had a PAT growth of how much? More than 20%. How much PAT growth? More than, right? So this is a simple idea. यार अगर आप 80 या 100 पी दे रहे हो, पहली कॉन्केविटी में आ चुके हो आप. Because returns are always seen from today, not from कि वो 5 साल पहले ऐसा हुआ या ऐसा हुआ. This is something that we have to very, very well realize. That can help, right? That is true, sir. So this is why I'm saying कि अगर हम थोड़ा भी मतलब, क्योंकि अभी मैं पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और थोड़ा सा ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस की बात करूं, मैं भी थोड़ा टेक्निकल्स को भी मिक्स करना स्टार्ट करूंगा प्रॉब्ली इन द प्रेजेंटेशन, ताकि सी नॉट एवरी कंपनी विल हैव अ 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड. यार कभी कभी 2-3 साल में आएंगी, ग्रोथ आई, खत्म हुआ, बाहर हुए. राइट. सो लाइक, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट APAR Industries over here? Is it a cyclical business? Is it in a strong phase right now? So अच्छा, Q&A later. So again, so it's another company like, so again, it's a company which won't grow structurally over a decade. Probably this company will have 2-3 year growth phases. But पहले define कर दो cyclical खरीद रहे हो यार. अपना exit criteria define रखो, weekly भी stop use कर रहे हो या उस पे थोड़ा अगर monthly भी use कर रहे हो तो थोड़ा सा multiplier tight रखा हुआ है. Define कर दो exit framework. You won't ever, मतलब over a period of time it will be tough to make losses in investing if you have defined frameworks. मतलब कई लोग कहते हैं it's tough to make profits. I'll say कि over 2-3 years it will be tough to make losses in investing अगर problem सही defined है तो. बार बार मैं आपको वो जो first part of the presentation है उसी में लेके जाऊंगा. If I go, हाँ, question तो no worries, AC बंद करवा दो. Is it okay if we turn the AC off? It was getting really cold. I can't like speak menu. Yeah. So I was saying, in all these companies, they had a huge runway. They had the ability to reinvest their free cash flow. Hence, from a free cash flow yield perspective, they may not be good. But when it comes to return on the additional investment that they make, they are able to get a high return, and hence they are able to grow their PAT at a high rate, and hence they become a multi-bagger. Is it a phenomena that we generally see in the Indian context? Right. So next slide is पे. So this is where like your growth sources come from. This is a slide that we have seen so many times. Is that again, everything is first into defining the problem first. Why do companies grow and what are the sources for a company's growth? Right. So suppose let's take the example of जो आपका bromine वाला company. So let's take the example of Neogen Chemicals. Why is like what is basically leading to the growth of Neogen Chemicals? First is taking away market share.
राइट. सो इंडियन ब्रोमीन कंपनीज, चाइना में पहले ब्रोमिनेशन था, अब नहीं होता बिकॉज दे वर बेसिकली माइनिंग ब्राइन यूजिंग ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर का अगेन वहाँ पे इशू हुआ. तो इंडिया के अंदर क्योंकि रन ऑफ कच्छ में देयर इज अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्राइन. माने कोई गुजरात से है यहाँ पे. सो रन ऑफ कच्छ में मतलब आपने देखा होगा कि ब्राइन जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स हैं या जो ब्राइन है काफी ज्यादा होएगा वहाँ पे. देयर इज अ रीसेंट लिस्टेड कंपनी एज वेल, आल्चियन केमिकल्स. राइट. सो अगेन रॉ मटेरियल का एडवांटेज है. दिस इज वाई टेकिंग अवे मार्केट शेयर. सेकेंड थिंग इज कैपेक्स. आपका जो नियोजन केमिकल्स का आज जो नेट ब्लॉक होएगा शायद से नियोजन केमिकल्स का 200-300 करोड़ होएगा. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी पुटिंग सम 600 करोड़ ऑफ एडिशनल नेट ब्लॉक. राइट. या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडिशनल 600 करोड़, तो 1000 करोड़ का नेट ब्लॉक हो जाएगा. दे प्लान टू डू 2200 करोड़ ऑफ सेल्स. राइट. जो आज 600 करोड़ के बाय FY27 एंड. राइट. So again, that is again they are doing capex, taking away market share. Also growth in end user industry for Neogen chemicals, right? Growth in end user industry क्या है कि आपका जो आप electrolytes का कर रहे हो, तो it's a new product that you're bringing, like जो एक new product आप लेके आ रहे हो electric vehicles के लिए, and अगर EV adoption increases then that can lead to growth. And also like first one, new product introduction. आज तक electrolyte करा नहीं था, अब आप electrolyte कर रहे हो. Let's take any business. कोई आप बिजनेस का एग्जांपल लो, लाइक एनी वन बिजनेस. व्हिच वन? पीवीआर. Now PVR is a monopoly, that is true, but PVR में only risk is कि कितने लोग पहले बहुत मूवीज देखने जाते थे मूवी हॉल्स में. अब आप कितनी बारी मूवी देखने जाते हैं मूवी हॉल में? मतलब तो OTT आ गया है. लाइक मतलब एक्चुअली द लाइक हुआ क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, योर सब्स्टिट्यूट्स फॉर स्पेंडिंग टाइम हैव रियली इम्प्रूव्ड. अभी इंडिया में होएगा क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू गो टू कंट्रीज, अगर आप सिंगापुर जाते हो, चाइना जाते हो, या अगर आप हांगकांग जाते हो, अगर इफ यू गो टू एनी वेस्टर्न कंट्री एज वेल, तो इंडिया में टाइम पास करने के लिए है ही क्या? खाना खाया, लाइक इफ यू गो फॉर अ मील और यू जस्ट गो फॉर अ मूवी, तीसरी चीज ही क्या है? राइट. या तो मॉल चले गए. राइट. सो you'll see कि even leisure activities in Indian context will also start growing. Like if you go to a Singapore, you'll see कि कहीं मतलब वहां पे तो I didn't even see single fat person in Singapore. 60 साल के भी जो लोग थे ना, they were like off for a run, cycling, and really fit people. Right. Again साइकिलिंग के लिए वहां पे लोग पूरे शहर के अंदर साइकिलिंग हो रही है. कोई मतलब someone is doing like cycling just for leisure activity. And you'll see such n number of activities will also start coming up in India. But अभी क्या है कि बस ये 2-3 चीजें हैं. But coming back to the PVR question, कि OTT की वजह से क्या हुआ है, today I can go and sit a show, watch a show by the name of Jack Ryan. 3 सीजन में उसके बैठ के देख सकता हूँ. प्रॉब्ली मेरा टीवी का कोटा उसमें पूरा हो गया. राइट. जब तक कोई एक्सेप्शनल मूवी नहीं आती है तब अब मैं मूवी हॉल नहीं जाने वाला. दिस इज व्हाई यू सी द एक्सट्रीमिज्म ऑफ हिट्स एंड फ्लॉप्स इन मूवीज विल आल्सो इंक्रीज. यहाँ तक मूवी अगर एक्सेप्शनल नहीं है या तो बहुत लाइक पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर नहीं करी, इट वोंट बी अ हिट, इट विल बी अ फ्लॉप. अक्षय कुमार की वो रिसेंट मूवी देखी थी विच जस्ट कलेक्टेड 20 लाख रुपीज इन अ डे, 20-30 लाख रुपीज, विच वाज हिज बिगेस्ट एवर फेलियर. राइट. बिकॉज कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं होएगा मूवी में, या तो बहुत ज्यादा इट कुडंट कैप्चर द इमेजिनेशन. तो मूवी बिजनेस में मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक जो मूवी एग्जीबिशन बिजनेस है, यस मोनोपोली बन जाएगी, यस कैप्चरिंग हो जाएगी, बट यू नीड अ ग्रोइंग पॉन्ड. यहाँ पे मैं कहीं फिट नहीं कर पा रहा उसको कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन में बहुत मतलब हो सकता है वो आपको प्रेजेंटेशन में दिखाते हो कि हर जगह मूवी पहुंच गई, ये सब हुआ है, बट बिकॉज ऑफ OTT एंड स्टफ योर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑफ सिनेमा. यू कैन वॉच, अभी पठान आई थी ना शायद से मूवी, वो OTT पे आ गई है शायद से. मैंने नहीं देखी, मेरे को थोड़ा टाइम बेटर स्पेंड करना है अभी. बट तो अगेन अब 1-2 महीने में मूवी आ गई, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही एक्सपैंड होगी. राइट. तो हर जगह जाके मूवी हॉल कहाँ लगाने, 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ खर्चने. राइट. सो लेट्स टेक अ सिंपल बिजनेस. KPIT ले लेते हैं, टाइटन ले सकते हैं. टाइटन ले लीजिए, KPIT का एग्जाम्पल ले लीजिए.
for financials, right? सर फाइनेंस का तो बहुत सिंपल फिनोमेना है कि देयर इज इन दिस एंटायर थिंग is that first is industry growth, one, geographical expansion is two. Like example, again example, like if your AU small finance bank was just based out of Rajasthan, and today they are setting up like branches all over the country. So that is a second example. Probably over a period of time this won't matter too much अगर बहुत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो जाता है, बट अभी भी क्या है कि थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस है ब्रांचेस सेटअप करने का, स्पेशली इन tier 3 tier 4 cities. If you look at these banks, I think we have a HDFC, I can't see him, so if you just speak to him, तो अगर आप ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखो, दे हैव सेपरेट ब्रांचेस फॉर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, दे हैव सेपरेट ब्रांचेस, क्योंकि उनको पता है कि एक एरिया लाइबिलिटी पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो मैं टर्म डिपॉजिट 8-9% की ऑफर करता हूँ, तो एक एरिया जहाँ पे थोड़े से वेल ऑफ लोग रहते हैं एक सिटी के अंदर, दे विल कम एंड डिपॉजिट द मनी. देन मैं लोन किसको दे रहा हूँ? जिसकी अंडे की दुकान है, राइट, जिसकी किराने की दुकान है, राइट. सो अगेन आई एम टेकिंग अवे मार्केट शेयर फ्रॉम द इनफॉर्मल लेंडर, सो अगेन टेकिंग अवे मार्केट शेयर. एंड स्टिल आई थिंक स्मॉल बिजनेस लोन का ही आप मार्केट उठा लो, आज सिर्फ 4% पेनिट्रेटेड है विद द ऑर्गेनाइज क्रेडिट, जो 1 to 5 लाख रुपीज की कैटेगरी में. सो अगेन इन एंड यूजर इंडस्ट्री ग्रोथ, और ये सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ही नहीं, अभी आपने 5 स्टार फाइनेंस करके कंपनी देखी है जो लिस्ट हुई है, सो दैट कंपनी हैड अ फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ. दैट कंपनी डज ऑलमोस्ट 7% ROA. That company has purely grown in last 2 decades because of taking away market share, setting up these branches. अभी आपने Aptus का भी IPO देखा होगा, recently हुआ है. That company does it, right? It's really expensive, but still as a business IPO ही क्यों आया? Because you've really grown. Awas financiers, housing finance में, again affordable housing में less than 10 lakh rupee loan. So again growth in end user industry. अब वो 10 लाख से कम वालों को बैंक ही नहीं लोन देना चाहते, इतना ओपेक्स हैवी है, तो हर जगह जा जाके वो चेक कर रहे हैं, उनको फिर लोन्स दे रहे हैं. सो अगेन ग्रोथ इन एंड यूजर इंडस्ट्री, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? लैप इंट्रोड्यूस कर देगा उसके अंदर, कि अपना जो घर है 10-20 लाख का उसके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर दो. इट्स अ कमोडिटी बिजनेस बैंकिंग, राइट. So large banks will, right, large banks will end up taking away market share over next 3-4 decades from all these tier 2, tier 3, tier 4 things, because large banks, sir, it's a commodity business. आज मेरे को कोई लॉयल्टी नहीं है बजाज फाइनेंस पे अगर मेरे को HDFC बैंक से 7% पे लोन मिल जाए. दिस इज वाई अगर बजाज फाइनेंस हैज टू ग्रो लाइक और हैज टू सस्टेनेबली ग्रो, इट माइट हैव टू टर्न इनटू अ बैंक सम टाइम, बिकॉज इफ बैंक्स कम इनटू माय फील्ड, तो किसके पास कासा है सर? बजाज फाइनेंस के पास या फिर बैंक्स के पास? तो अगर मेरा कासा 45-50% है, करंट अकाउंट्स पे सर कितना इंटरेस्ट मिलता है? तो सर इफ आई एम यूजिंग द मनी and I can give loans, if I'm the lowest cost producer of commodity, so over a period of time, I'm thinking like really 3-5 decades from now, I'll take away everyone's market share. And this is the truth about this industry, जो 30-40-50 साल में हो सकता है अगर जो बड़े बैंक्स हैं वो ऐसे करने लग जाए. like HDFC बैंक का 8% national market share है, right? It used to be 2%, even 2% was a huge bank. And now at 8%, now they're talking about 20% market share over next 10 years or 12 years. It's interesting, but base क्योंकि बड़ा हो गया, but growth rate probably will fall to 12-14%. But इसमें भी सर आप सिंपल क्या कर सकते हैं? एक्सिस बैंक पढ़ लीजिए, एक्सिस बैंक में चेंजेस हो रही है. ICICI डबल हुआ है पिछले 3 साल में. प्रॉब्ली एक्सिस बैंक अगर 20% ROE कर रहा है, 2 times प्राइस टू बुक तो नहीं मिलेगा अगर बाकी सबको 3.5 times मिल रहा है. So it's a good question, but I think probably because of these factors, the industry will keep growing until or unless we enter into a very good position.
कंट्री से ही फ्लो के इंडिया में भी आता है वो चीज। सो आपको अभी भी लगता है ऐसा होगा कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि अब इंडिया में जो छोटे बैंक्स हैं दे विल बी ईटन बाय द लार्जर शार्क्स? Sir, in some of the product categories, it will be very difficult. It will take n number of years. Because जैसे अगर small business loan का example लेते हैं तो 1 to 5 lakh product category में banks are not willing to participate because it's very opex heavy. अगर आप उन banks का cost to income देखो तो 66% है, 63% है, मतलब 1 rupee to earn 1 rupee of income, I need to spend 63 rupees first because it's very, very opex heavy business. But if you will see the cost structure of the bigger banks will be always heavy compared to the smaller banks. So they also have these advantages, and the number of years of learning these small banks would be having. Let's take an example of Equitas small bank. So if they have a core strength in particular geography, tomorrow a big player like HDFC or Axis goes into that market, but they will take time to settle to understand that market, which the smaller bank is already having that strength, that is a mode which they have with them. Plus the OPEX side जो उनका costing होगा वो that is also a strength for the smaller bank. So still we feel that it is possible that these bigger banks will eat into their shares. Sir, I'm actually thinking ultra long term अभी तो। अगर आप मुझसे 4-5 years का horizon वेस्टर्न कंट्रीज को अगर मैं बेंचमार्क करता हूँ तो वो मतलब मैं वो नहीं समझ पा रहा कि अगर वेस्टर्न कंट्री में आज तक नहीं हुआ, अगर वो इतने अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं इतने सारे बैंक्स वहाँ पे. So if I see the number which was being quoted in one of the business channel, it was they have somewhere closer to 800 regional banks. So if that bigger size is still surviving in the Western country, so I think that this same might continue in India also. सर इंडिया में कंटिन्यू, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होएगा कंटिन्यू, आई एम जस्ट सेइंग कि जो ग्रोथ रेट्स है जो आज हम देखते हैं 30% ग्रोथ आ गई, 50% ग्रोथ आ गई, 40% ग्रोथ आ गई, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट माइट बी अ बिट ट्रिकी. शायद से आपकी वो जो ग्रोथ रेट्स है दैट माइट फॉल इफ लाइक मोर कंपटीशन कम्स इन, जैसा LIC हाउसिंग के साथ हुआ है, कैनफिन के साथ हुआ है. हैज एनीवन ट्रैक कैनफिन हाउसिंग ओवर हियर? कैनफिन हाउसिंग अगेन इज वन ऑफ द blue chip housing finance companies, but it was always there in tier 1 and tier 2. All of a sudden banks became very aggressive in housing finance post 2017. तो आपका जो 20% का ग्रोथ था वो 14-15% रह गया. It's not कि it's not growing, it's still growing because bank is a business. अगर आज तक किसने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट बंद कराया है? Raise your hands. सर बहुत परेशान होगे तभी बंद कराया होगा. किसमें? हाँ PNB वो तो बात अलग है. बट सर ऐसा बिजनेस है, एक बार अकाउंट खुल गया बंद कौन कराने जाता है? मेरा एक पंजाब सिंध बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, मैं बंद ही नहीं कराने गया, मतलब उसके कारण कि यार 50 फॉर्म साइन करवा देगा मुझसे. तो इट्स वंस द लाइफ, उसमें आज भी कुछ मतलब 30-40 हज़ार रुपए पड़े ही हुए हैं पिछले 3-4 साल से. बैड कैपिटल एलोकेशन है मेरे पार्ट पे, और वो हम इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं चलती, ट्रांसफर करते रहते होते ही नहीं ट्रांसफर, बट बंद भी नहीं कराने गया अभी तक अकाउंट. So regional banks will always have a role to play in regions, but it's just कि once maybe I'm thinking ultra long term, 30-40-50 years out, कि अगर other banks become too large, then probably इनका जो growth rate है वो नहीं रहेगा. बट अगले 5-10 साल में प्रॉब्लम है, I don't see कि अगले 5-10 साल की प्रॉब्लम. बट अगेन probably वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स तो है नहीं इधर. Thank you. Right. हाँ 20 मिनट. अच्छा क्वेश्चंस का भी है 1 hour राउंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली द रीजन इज कि वहां पे ROEs आर कैप्ड. इफ यू लुक एट इंडियन मार्केट्स में, देयर आर ओनली 2 markets in the world which are very common parallels when it comes to banking, that is Indonesia and India. Indonesia में if you look at public sector lenders, they make 25% ROE. Indonesian markets में जितने banks में multi bagger है वो शायद से Indian market पे नहीं है. But similar metrics, large population, credit starved,
एंड थर्ड, वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर मेकिंग 30-35% ROE इन इंडोनेशिया, और वहाँ पे कोई यील्ड कैप्स नहीं है एक्चुअली. जब हम थिंक वन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वी टू स्मॉल है लाइक वी ओन, तो while studying that entire company we were looking for parallels in the world. So we came to the Indonesian markets ki wahan pe last 10 years mein banks have been super wealth creators because dynamics are very similar to India. Western countries mein ROE aapka 6-7% hai because it is capped. वो 2008 में पोस्ट क्राइसिस एक वहां पे एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक एक्ट आया था जिसकी वजह से आपकी ROE कैप्ड हो गई थी. Because a lot of these banks they were also doing मतलब जो आपका पूरा इनका एक मतलब there used to be a very large book of derivatives for them. Prop trading derivatives का book होता था, जो भी ये structured finance products आए थे, all these banks were doing. तो इंडिया में आपने देखा होगा RBI अलाउ ही नहीं करती यार ये सब. कोई इंडिया में किसी ने सुना है कि लाइक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इंडिया में सुनिए किसी ने बैंक्स आर इशूइंग, या फिर कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर. सो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है ही नहीं इंडिया के अंदर अभी. प्रॉब्ली दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगर इंडिया के अंदर ऐसी रेगुलेशन आने लग जाए, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे 2008 से पहले बैंक्स वर डूइंग 20-25% ROE डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज क्रेडिट इज वेल पेनिट्रेटेड. बट अब कैपिंग की वजह से ROE की इवन अ वेल्स फार्गो इज अ बैड इन्वेस्टमेंट. सर रेगुलेटरी रिस्क एक्चुअली पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री में, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो ब्रोकर्स हो, आपकी STT बढ़ गई ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का कितनी बारी तो फी उन्होंने एक्सपेंस रेशियो काटा है. एंड सेकेंडली अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए जो डेट फंड के ऊपर आएगी अगर लाइक इट इज नॉट इंडेक्स्ड एनीमोर. सो अगेन फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इस बारी जो लाइक टैक्स चेंज आया था आपके बजट के अंदर, अगेन दैट इज एन इशू. फिर बैंक्स में आते रहेगा सर, बिकॉज जहाँ पे पैसे का मामला है वहाँ रेगुलेशन तो होगी. यू वांट रेगुलेशन, you don't want regulation, like ये ऐसा नहीं कि you do not want regulation, you want regulation. Because if there is no regulation, अगर light touch है जैसे US में था between 03 to 08, you will have disasters. No worries, no worries. So we'll just थोड़ा सा Sir, I think probably there's a lot of money on the table if you are able to pick it well. But again, it's not wo 17-18 wala market where you throw a dart and NBFC gives you a multi-bagger. No, 18 is not 4-5, like it's not 10 years ago, it's just 4-5 years ago. There will be wealth creating opportunities, but you have to be very, very selective because markets have also wisened up. इस बारी अगर NBFC का 25% ROE हुआ तो अभी उनको 3-4 times price to book नहीं मिला, क्योंकि 17 में क्या था, the moment they showed 25% ROE you get 4 times price to book. Markets have also wisened, but again if the book value compounds you will make returns. It is not the case कि you won't make returns. And we've seen कि जैसे surprises आते हैं, just wait for 3-4 more quarters or 1-2 years. अगर if the answer gets like the question might get answered itself, so it will be interesting to see. So we'll come to this, which is very, very interesting. So I'll do this activity finally. Iski let's take the business of DMart. Like everyone should participate. DMart का एक example लेते हैं. So we're just trying to identify the growth triggers, right? So DMart का एक simple example लेते हैं, and let's also take an example of a, let's say a company by the name of Sudarshan Chemicals example के लिए. तो पहले DMart का example लेते हैं. क्या growth triggers है DMart में? फर्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन. अभी दिल्ली में तो आज भी नहीं है यार, तो यहाँ मुंबई वाले में जाना पड़ रहा है. वो एक उस साइड पे खुला है द्वारका में, विच इज ऑन अ वेरी ऑफ लोकेशन. गुड़गांव में खुल गया क्या? पर आई हैवंट सीन. पर इतना नॉमिनल, मतलब इट्स नॉट ऐसे की प्रेजेंस बहुत नहीं, जैसे बिग बाजार दिखता था हर जगह दिल्ली में, राइट? अभी ऐसे मुंबई में हर जगह दिखता है मेरे को डीमार्ट, अगर आप देखना चाहो तो आपको मिल जाएगा, राइट? तो वैसा प्रेजेंस नहीं है. तो फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन. सेकेंड इज की केपेक्स करेंगे, टेकिंग अवे मार्केट फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज किराना, राइट? तो अगेन
a lot of triggers are there. Let's take a business of Varun Beverages. सबने पढ़ा हुआ है वरुण बेवरेजेस. वरुण बेवरेजेस के लिए क्या ट्रिगर्स है इधर? आई थिंक फर्स्ट ट्रिगर जो मेरे लिए यहाँ पे दिखता है, मेरे को जोग्राफिकल एक्सपेंशन दिखता है, क्योंकि साउथ और वेस्ट की मार्केट अभी अभी मिली है आपको. प्री कोविड मिली थी और कोविड के टाइम पे हम काम नहीं कर पाए, इस वजह से अब हमें ग्रोथ दिख रही है उसके अंदर, राइट. तो ड्यूरिंग कोविड इट वाज इंटायरली डिप्रेस्ड. नाउ कोविड के बाद हमें वो मिली है. प्रॉब्ली 2-3 इयर्स का वहीं से आपका डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ जाता है. न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, स्टिंग, राइट. क्रीम बेल के जो शेक्स हैं हम देखेंगे धीरे धीरे पैन इंडिया आने लग जाएंगे. अभी दिल्ली के अंदर तो मिलने ही लग गया हमें. सेकेंड एग्जाम्पल, राइट. अगेन अनदर एग्जाम्पल इज बेवरेज इंडस्ट्री, लाइक FMCG कैटेगरी में जो बेवरेज इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग एट रेट ऑफ 10% के आसपास. तो विद इन द इंडस्ट्री इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन. एंड फाइनली हर जगह हर स्टेट में जाके आप क्या कर रहे हैं? केपेक्स. हर स्टेट में आपको क्या लगानी पड़ेगी? अगेन एक बॉटलिंग यूनिट. टेक एनी कंपनी दैट यू ओन इन योर पोर्टफोलियो, अप्लाई दीज 8 फिल्टर्स, आपको यहां से कोई ना कोई ग्रोथ का ड्राइवर मिल ही जाएगा. इन बिजनेस रैंकिंग फ्रेमवर्क में जब आऊंगा सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में, तो हम ये पूरे लगा के देखेंगे. राइट, ऑल दीज 8 to 9 फैक्टर्स. चाहे आप कोई, अगर आप एप्कोडेक्स का एग्जांपल ले लो, व्हाट आर द ड्राइवर्स? केपेक्स कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में गोइंग टू न्यू एंड न्यू कंट्रीज टू सेल, ट्राइंग टू सेल मोर टू द सेम क्लाइंट माइनिंग कर रहा है. Like it has already taken away market share from imports, and end user industries are growing. So they supplies to carpet, auto, and जो paper industry है उसके अंदर जा रहे हैं, right? And finally your like industry is also growing, right? So all the triggers match, but कुछ आपको companies मिलेंगी जहाँ पे कोई भी match नहीं होएगा. Let's take an example of a newspaper business. Is there any trigger? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रियल एस्टेट डेवलपर. एक ही ट्रिगर हो सकता है अगर पूरी कंट्री का रियल एस्टेट अच्छा करना स्टार्ट करे. सो अगर एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिसके पास 5 स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, यू नो व्हाट बेट आर यू टेकिंग? थिंक अबाउट इट कि 5 स्टेट की रियल एस्टेट मार्केट अच्छा करेगी, इंडस्ट्री ग्रोथ होनी चाहिए. इज इट पॉसिबल कि 5 स्टेट की कभी अच्छा कर जाती है इकट्ठे? तभी होता है जब रियल एस्टेट का फुल बुल रन हो पूरी इंडस्ट्री का. जैसे 2003 से 8 के बीच में लोगों ने पैसा कमाया रियल एस्टेट में. विशाल जी पैसा कमाया था रियल एस्टेट में 2003 से 8 के बीच में, राइट. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इतना मतलब पूरा फुल ब्लोन बुल रन है. बट these triggers can be used in each and every company that you're analyzing. With this I think we'll take a short break, so we can have lunch and stuff. So lunch is already there outside, coffee is also there, so within the break I'm also here for questions and stuff, so you can have that. So let's have a short break, because 1 to 2:30 है ना? नहीं 1 to 1:45 तक करेंगे, 45 मिनट्स बहुत एक्चुअली मेरे को ना
चॅनलवर टाटा IPL ये इकडे तुला जिओ सिनेमावर अस्सल टाटा
Halo, halo, halo. Check. We'll just start in a minute. Harinder ji. Shubham and Harinder ji. So we'll just start in 1 more minute, just waiting for the laptop. शुभम कहाँ पे? नहीं, ओपन करने के लिए मैं पासवर्ड नहीं। हरिंदर? All good. खाना खा लिया तो सही लग रहा है, भूख लग रही है। शुभम? चार बजे पूरा ले लिया है। कनेक्ट करो तो रैंकिंग देना, ठीक है? एक बार इसमें कॉपी भी कर देना मैं। So let's start the session again till the presentation opens. So great. Hopefully all of you are also अपने मतलब एक दूसरे के साथ नेटवर्क कर रहे हो, because networking is really important in investing, and because like आप लोग सिर्फ investing के event पे ही आए तो you'll actually find fellow investors over here only.
तो घर पे आपको कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि ये क्या इन्वेस्टिंग करते रहते हैं अकेले, राइट? मतलब मेरे घर पे तो यही रहता है कि बिकॉज आई एम प्योरली इनटू दिस, तो पूरे दिन पढ़ते ही रहता है, तो यही देखते रहता है। तो एटलीस्ट लाइक माइंडेड पीपल के साथ एक अच्छी चीज हो जाती है, लाइक यू कैन कीप डिस्कसिंग आइडियाज एंड यू कैन हैव अ साउंडिंग बोर्ड एज वेल इन लाइफ, कि अगर कोई आइडिया पे साउंडिंग बोर्ड चाहिए तो यू ऑलवेज हैव समवन एल्स टू आल्सो डिस्कस द आइडिया विद। तो we'll just start the session, and second part of the session may we'll be mixing technicals with fundamentals as well, and we'll also try to rank the businesses accordingly using the SOIC ranking sheet. किसने अभी तक यहाँ पे रैंकिंग करी है बिजनेस किसकी, वो शीट यूज करके? किस को पता है कोई रैंकिंग शीट भी है? दिस वाज अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अभी तक काफी लोगों ने हो सकता है वाला इवेंट ना देखा हो। सो we'll try to rank the businesses and give them scores, कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं each and every opportunity को, and you can create these scores for your own portfolio as well to get an idea कि किस टाइम पे कौन सी opportunity ज़्यादा lucrative लग रही है within the portfolio for further allocation of capital. And we'll also open trading view and like presentation भी खोलते हैं. Moment it is done, we'll start. And तब तक क्या sir, any question? Just mic, क्योंकि वो everyone is saying कि आवाज नहीं आ रही, तो it becomes a one-on-one conversation. Hello. Before taking lunch, we discuss about some growth sources, 7 or 8. So I wanted to ask, can you analyze FMCG sector on those factors? Some companies or some. Sir, volume growth, new product introduction, and चलो वन बेवरेजेस कर लेते हैं, या तो रैडिको खैतान कर लेते हैं, या तो we can also try to analyze ये इन टू कंपनीज पे करते हैं, बिकॉज बाकी कंपनीज में सोर्सेज ऑफ ग्रोथ ढूंढना बहुत मुश्किल है। अमृत अंजन इज गुड, बट अमृत अंजन का वो बाम कितना लोग लगा लेंगे यार? हो सकते है जब बेयर मार्केट आ रही है तो ज्यादा लगाए, सर दर्द हो रहा है, बट इट्स अ वेरी वेल पेनिट्रेटेड कैटेगरी। किसके घर पे पेन बाम पड़ी है? सबके घर पे, राइट? ऐसा नहीं है। सेम गोस फॉर कोलगेट। कितने लोग ब्रश नहीं करते इधर? सब लोग करते हैं, राइट? कई लोग तो आजकल 4 बारी करने लग गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि अब सब दांतुन कर रहे हैं। तो एफएमसीजी कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ग्रोथ नहीं मिलता एक्चुअली। These companies are no doubt exceptional franchises. Sir, Mike. Right. Sir, FMCG actually अभी ना penetration बहुत हो गया है कैटेगरी का. So why is this category of, अगर आप cold drinks या beverages की category देखते हैं, why is that particular category growing? It's simply because पहले गांव में VC coolers नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, लोग मतलब जो घड़े होते हैं उसमें से पानी पीते थे एक्चुअली, बट नाउ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन व्हाट हैज हैपेंड, these VC coolers have also penetrated tier 4, tier 5, tier 6. तो जैसे आपका VC coolers जाते हैं, कंजम्पशन बेवरेजेस का बढ़ी जाता है, बिकॉज इंडिया में समर्स तो आई थिंक एवरी समर इट्स हॉटर देन द लास्ट वन, राइट? सो इफ समवन वांट्स समथिंग कोल्ड, तो that is one of the categories. And क्योंकि recently start हुआ है, तो this is why category growth has been very good. But in terms of Colgate and stuff, it's really difficult to tell कि further growth कैसे आएगी until or unless they are able to successfully launch Palmolive products in India, which they have done in like European countries. But अगर कोई यहाँ पे, if you've been or if you've stayed in a European country, you might have seen Palmolive products over there, right? So that's another brand owned by Colgate. They've tried it in India, but currently they haven't cracked the market. किसके घर पे साबुन नहीं है? सबके घर पे साबुन है, राइट? किसके घर पे टूथपेस्ट का तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, राइट? कितने लोग आज की डेट में च्यवनप्राश खाते हैं? मतलब I don't even know whether it works or not, right? So very few. So idea is कि category penetration कैसे, या तो आपको category ढूंढनी पड़ेगी. Even though middle class will grow, but will the categories grow at more than 5-10%? Difficult to answer. In some of the cases, category will also degrow. कितने लोग अब की डेट में how many people use hair oil? Just raise your hands, like right? But a lot of the new generation है in their 20s, 25s or 26, 27, I don't see them using hair oil. I see them using wax, matte or clay, right? मतलब I can't imagine put like यहाँ पे सिद्धांत होएगा कि सिद्धांत is using a parachute oil on his head. मतलब I can't see that type of a scenario.
सो इट्स अ वेरी वेल पेनिट्रेटेड कैटेगरी. तो इस वजह से आप देखेंगे डाबर वाबर का जो लास्ट 6-7 years का भी रिटर्न है ना, आप देखेंगे इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स बिकम वेरी स्लो. तो फिर मेरे को लगता है निफ्टी ले ले. तो मतलब अगर ऐसे बिजनेस लेना, हाई आरओसी विद वेरी लो ग्रोथ इज लाइक अ रोल्स रॉयस विदाउट एन इंजन. इट लुक्स गुड बट इट डजंट डू एनीथिंग, राइट? So वो problem will always arise in an FMCG company. You need double digit volume growth. So this is why you'll see जहाँ पे भी double digit volume growth आएगी, that stock within FMCG pack will always get a premium or will always like lead to more returns than a normal average business, because simplest business to understand. So actually simplicity पे आ रहे हैं. So this is a very good slide to understand. Is that if you're new to the world of investing, especially for those folks who are less than 2 years, is that simplest categories to understand. FMCG is one category to understand, जहाँ पे you can do this entire analysis. कि simple category में FMCG is a simple one. Then retail industry. Is it easy to analyze a Titan or is it easy to analyze a Deepak Nitrite? 100% Titan, right? इसमें तो कोई doubt ही नहीं है. Right? So retail industry में is it easy to analyze a Manyavar or is it easy to, let's say, analyze a SRF? Right? So just in terms of if you're beginning in your journey, तो अगर आप simple categories में देखेंगे, I think even building materials is very very easy to understand. Building material isn't rocket science. कोई ना किसी के फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता ही है. कोई रिटेल, किसी का कोई केबल एंड वायर का डिस्ट्रीब्यूटर होएगा आपकी फैमिली में, किसी की फैमिली में स्टील ट्यूब का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होएगा, किसी की फैमिली में कोई जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है कोई उनका डिस्ट्रीब्यूटर होएगा. So even for building material categories, you will always find sources for scuttlebutt. It isn't that you won't find. अगर Finolex cable आज अच्छा कर रहे हैं, तो you should actually just check with your sources of scuttlebutt कि whether again they are becoming aggressive or not. Because for 10 years they were losing market share. मतलब 10 years it was a sleepy management. अब ऐसा क्या हो रहा है उसमें? Whether it is happening on the ground or not. So these are simple categories to study. But how can I tell कि यार वो intellect design arena के product वो बैंक के अंदर use हो रहे हैं नहीं हो रहे? Is it easy? I think IT वाले भी नहीं बता पाते. IT वाले तो बेचारे एक ही चीज कहते हैं इंडिया से प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, राइट? फेलियर्स इसलिए कम है आईटी इंडस्ट्री में इंडिया में बिकॉज सर्विसेज ओरिएंटेड है. सर्विसेज में चांस ऑफ फेलियर कम होता है. दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर यार. मतलब अगर आईटी में भी प्रोडक्ट में which company will end up winning until or unless you get to know someone from that domain, it's a bit tricky. अगर वही है कि certainty और uncertainty का bridge can only be mapped through using position sizing. And second is your risk management framework that is coming through technicals and valuations. Or simple क्या है? Consumer durables. Is it easy to study a Whirlpool? Simple sector to study. Consumer durables are actually FMCG से linked. Was it again hindsight bias? Hindustan Foods आसान होता पढ़ना. Does everyone know what Hindustan Food does? Easy to study, right? Hospital industry, easy to study or tough to study? Not too much of a rocket science, because we have encountered these businesses in our daily life as well. Kabhi na kabhi, like someone or the other from the family has fallen ill and we have taken them to the hospital, right? And एक hospital में जाते you understand the business कि अच्छा यहाँ पे ये वाला therapy का block है, यहाँ पे वो वाला therapy का block है, यहाँ पे जिसको भी किसी चीज की ailment है उसका block है, right? So again, a simple business to study. Exchanges are also very simple to study, right? One of the exchanges, MCX, right now I think the option volumes in like your commodities has gone from 2 crores to 27 crores within like last 18 months. Futures have stagnated, but options have literally blown like anything. But again, risk है कि आपका TCS वाला software mitigation नहीं हो पाया अभी. So probably give it 2 quarters, see if it happens or not. But otherwise the growth is happening really fast. For first time India में like FIIs are coming and setting up their prop desk for commodity trading. So this is also a trend which can probably play out, but you need to keep tracking if the software issue gets resolved or not. Because if the software issue gets resolved, a very interesting story. How many exchanges have failed to create wealth in India? कभी ना कभी तो wealth creation हुई है exchanges में. Does anyone track National Stock Exchange in the unlisted market? I think unlisted market में that has gone from some 700-800 rupees to almost 3,200 rupees right now. And unlike BSE, it hasn't fallen. Still you get 3,000 rupees ka quote. Does anyone own NSE over here? Sir, latest 3,000 ka hi chal raha hai abhi. Right? So again, business simple to understand ki you are betting on the human element of greed, which is FNO, because unka jo option turnover has literally like
like crossed almost 60% of the top line, right? So another such business, exchanges mein did IEX do well? Everyone tracked IEX? These are the ultimate forms of business: high ROC, high asset turns, and high cash flow like throwing. And बस इसमें क्या ट्रैक करना है? वॉल्यूम ग्रोथ. तो इसमें वॉल्यूम ग्रोथ की साइकिल्स आएंगी जब बहुत पीक वॉल्यूम ग्रोथ हो जाती है. If it goes to 100p, if everyone wants to do an energy exchange, if everyone owns an energy exchange, then again you need to be like cautious with it. कि हो सकता है कि 90 और 100 का PE सस्टेनेबल नहीं है, बट एक्सचेंज एज अ कैटेगरी इज इजी टू स्टडी बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप इंटरनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज भी देखते हैं, अगर आप बाहर भी जो भी एक्सचेंजेस लिस्टेड है, it's very difficult to see ki which exchange hasn't created wealth. Only one hasn't, that is MCX. Because of regulations have turned in favor, but this software issue, if it gets resolved, so it could be interesting. But this is one way to filter stocks. Then auto businesses are easy to study, but auto mein wealth creation is really challenging because you need to keep launching new and new products, right? So pehle kya tha ki ek Maruti ki Brezza aati thi, right? Did anyone own Brezza in the last 5-7 years? Right? फिर अब Brezza के बाद hatchback में how many options do you have? So many, like sorry, in like compact SUVs. Kia आ गई, Hyundai आ गई, Venue आ गई, Creta का एक और version आ गया, right? So a lot of competition keeps coming up within the auto industry. So it's a very difficult sector to make wealth out of. मतलब it's a good business to track. समझने आसान है, but wealth कैसे बनेगी वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब वैसा नहीं रह गया. यहाँ पे कितने लोगों के पास एक 2-wheeler या कार है घर के ऊपर, घर के अंदर? Almost everyone, right? So it's not no longer a penetration category led like game anymore. जब पहले आज से 2000 में किसी के पास घर पे बाइक नहीं होती थी तो Hero will do really well. But last 10 years has anyone seen what has happened to Hero? No returns, right? Because जिसने 2-wheeler लेनी थी सबके पास है ही already अब घर के अंदर. So category is fully penetrated. Then QSR is also really easy to understand. Is QSR a rocket science business? Yes or no? Right? So QSR maybe, but what you need to figure out is that there is a Jubilant Foodworks, there is a Sapphire Foods, there is a Devyani International, there is a Restaurant Brands Asia, and there is a Westlife, right? Am I missing anyone? Any companies में? But Vector तो वो B2B business में है. Any other company I'm missing? Specialty restaurants, but that is a fine dine restaurant where it's like barbecue nation, right? So again, QSR के अंदर problem क्या है कि suppose like अच्छी चीज क्या है कि it's a simple category and you know that people are going to eat out more and more, as we are seeing as well. I think even in my place earlier, like every Friday we used to order from outside. Early तो पहले क्या था कि only every Friday we'll order from outside. Now I'm seeing कि किसी को late night munchies भी खाने, तो 2 AM Swiggy वाला या Zomato वाला like probably is going to first and second floor जो भी cousin रहते हैं उनके पास. So again, this is a trend that is accelerating. But for you to make money out of this trend, you really need to find a company where the growth can be in double digits and also there's some value left on the table for you. And that is the only way. If you look at Jubilant Foods, right? So Jubilant Foods में क्या हुआ? आपने Hong's Kitchen launch करा. Has anyone eaten Hong's Kitchen here? अब कोई दिल्ली से है यहाँ पे हमें छोड़ के? So सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव के अंदर Hong's Kitchen ओपन हुआ and it flopped big time. मतलब I also tried it, but वो घर आते आते इतना soggy हो जाता है, like it's like really bad. And I also tried it over there. So I think category wise Chinese food is really difficult to track in QSR. pan Indian level पे आपने कोई Chinese food QSR नहीं देखा होगा. Simple reason है, standardize कैसे करे food को यार. अगर बर्गर की जो टिक्की होती है वो तो कहाँ बनती है? फैक्ट्री में. तो अगर आपको तलनी है सिर्फ तो you can standardize the taste. If I have a Mekalu tikki in Mumbai, the taste will be exactly the same as the one that I'll have in Delhi basically. But for such type of food, it's really difficult to standardize. तो Jubilant Foodworks में format risk है. Format risk है कि आपको Popeyes भी करना है. अब बैंगलोर में सारे Popeyes खाली पड़े इस टाइम पे, right? वहाँ पे food delivery भी नहीं हो रही. बैंगलोर से if someone has gone over there, right? So this is one of the issues. Then Sapphire Food में क्या issue है? Do you want to expand abroad? We don't know how it works out in Sri Lanka or Indonesia. Right? जैसे इंडोनेशिया में रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया गया अपना कॉन्सेप्ट लेके ऑफ बर्गर किंग,
and Popeyes भी खोल रहा है अभी. But Burger King has flopped in Indonesia. How can you see it has flopped? Because unit मतलब per store जो sale था आपका, that hasn't increased in last 3.5 to 4 years. So you're not keeping up with inflation. Basically, your menu isn't working. That is again an option कि आपका वो flop हो रहा है. Devyani International, again, this is probably a better one because KFC का model is doing well in India, and they have more non-veg eating states as compared to Sapphire. Again, but if you start doing Costa Coffee, Vango और ये सारी आप चीजें करें, फिर format risk है. And coffee isn't a good business to be in. Like coffee retail is not a good business to be in. If anyone has any retail, like if anyone has any startup ideas, so consider it very, very carefully. Ki coffee retail business is a good business only if you're willing to spend 15, 20, 25 years over there. Even then, your rents and your leases end up killing you. Actually, like, has anyone had a like cold brew from a Starbucks? Price has gone to like 400 rupees now, right? But again, third wave came, they market the same thing at 230 rupees. So it's a tough category to be in, right? But finally, we come to Westlife. Westlife के case में क्या है कि there is very less format risk. Now, suppose if you go to a McDonald's and if there is like chicken wings also over there, आपने देखा है recently launch करे. I think Mumbai में शायद से ना launch हुए. In South India, though they've been launched, Delhi में भी launch हो गए. So your format risk is lesser as compared to some of the other categories. And also, like just in Mumbai itself, there are 100 McDonald's. Has anyone been to the McDonald's in Phoenix Mall? So, एकदम नीचे ये right? So you'll see कि earlier McDonald's पे कितना बिल आता था? 100 रुपए, 150 रुपए. कल हम 2 लोगों ने खाना खाया 1100. Because you package everything into a meal and a gourmet burger, right? So again, you're trying to take the value up of the order for the customer. And just like, unlike your other peers, over here McDonald's में हमेशा risk क्या रहा है? मतलब last 4-5 years में ROC हमेशा खराब क्यों दिखती है? Simple reason, because it's a larger store. Has anyone observed कि store size is larger versus Burger King or a KFC? मतलब it is multiple times of a KFC store. अगर आप Phoenix Mall में ही देखोगे तो KFC का beginning में एक छोटा सा store है. At बीच से जाके McDonald's देखोगे तो McDonald's store might be 20x size of the KFC store, right? And yesterday I think the KFC store had like 2 tables occupied. McDonald's store was fully occupied. कल कोई वहाँ पे gig था Linkin Park का, तो वहाँ पे मतलब Linkin Park tribute में, तो it was fully occupied. So McDonald's all over the world you see is a large format concept, and they're majorly into the real estate game. Because they'll do 20-25 year leases, so you won't be able to move them. But उससे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी recently लगने start हुए, तो 4-5 years beginning of your journey will look really bad in terms of ROC. But as the stores mature, your incremental ROC just goes through the roof basically. So that is one of the concepts which again gets covered. So that is again a stock which we get, which we filtered, right? So again, math is also straightforward. If you do 620 stores and अगर per store आपका sale बढ़ते जाता है, अगर 620 स्टोर में भी अगर आपका 7 करोड़ का एवरेज सेल रहता है, तो यू कैन जस्ट सिंपली गेट टू द जो ब्रिज ऑफ सेल्स है आफ्टर 3-4 इयर्स. मतलब 620 इंटू अगर आप 7 करते हैं, व्हाट्स द आंसर? Somewhere close to more than 4,400 crores, right? So you can get to the bridge, right? And you just read the investor day presentation and you can simply make the math work. If he's guiding for a 10% profit after tax, so what can happen over there? And you can just get to the bridge कि अगर आज आपका कैश पैट ही अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60-70 करोड़ दिख रहा है, and if it has to go till 450-500 crores, so you can just simply get an idea by doing these financial modeling exercises कि पैट का CAGR कितना हो सकता है, and if it actually emerges as a leader, right? So like I think आप सबने उत्पल शेठ सर की वो सुनी होगी speech where he talks कि there are always like companies which have emerged and there are companies which are basically currently मतलब they're as a leader, they are currently evolving. So probably it's in the second category of companies right now. So it's a business that we should track क्योंकि simple है, इतना rocket science नहीं है. मतलब क्या होगा कि एक बर्गर है, उसमें 3 टिक्की लगा दी तो 300 का, एक में एक हटाई, एक में थोड़ा सा एग लगा दिया तो 250 का, राइट? एक में बस एक फ्राइड है, बस उसके अंदर जो बन का जो क्वालिटी है वो चेंज कर दिया तो 30 रुपए से 60 रुपए का, राइट? आई डेंट इवन नो कि आजकल मैकालू टिक्की में भी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बन आने लग गए, राइट? तो एक बन 60-70 रुपए का है, अगर अपने वो गलती से वो बोल दिया
right? So again, you can do n number of things, but is it complex to do? Is it complex to do? Is it a complicated business? So again, it's a business which everyone can study in this room. So this is the idea कि कुछ businesses category simple होती है पढ़ना. Then there are medium complex business. Auto ancillary is a complex business. Medium complexity है. Why so? Because first thing is कि we need to know why a particular company is winning in an auto ancillary. कि suppose अगर Minda has been one of the huge wealth creators in India, so you need to understand कि why has it won, right? वो किस किस categories में क्या क्या कर रहे हैं. Then you'll see कि इनके बहुत सारे foreign businesses भी होंगे. They'll acquire like companies abroad. Like I think so that is something. But auto anks maybe you can look at simpler business, something like a FIEM or a Precol, जहाँ पे 1 या 2 product categories है. But that will also be tricky because you won't know who are competing with them. The competitive landscape को map out करना बहुत important हो जाता है. Because if your competitor launches better product than you and he also gets the approvals from OEMs, then again it can be an issue for you. Then agrochemicals are a medium complex business. Example लेते हो, चलो PI Industries का example लेते हैं. How many of you have read this business? How many of you have invested in this business in last 10 years ever? Right. अब complexity क्या है इस business में? Simple है वैसे तो contract manufacturing का business है. But again, now one molecule contributes to 55-60% of exports. In spite of epic results, have you seen the stock being re-rated? Has the stock been flat in spite of reporting 30-40% growth? Because now markets are concerned, what if that one molecule falls? So they are looking X of that molecule growth. तो हमेशा export oriented business में complexity ये वाली, अगर fundamentals कर रहे तो आने ही वाली है. यार वो वाला मॉलिक्यूल का ग्रोथ आया नहीं आया, अगर एक्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल ग्रोथ नहीं आई तो अगेन ये ना हो जाए कि बेस साइज बहुत बड़ा हो जाए जैसे डीवीज में हो और अगले 2 साल ग्रोथ ना आए. बट दिस इज अगेन अ रिस्क फैक्टर, राइट? सो स्पेशलिटी केमिकल्स में आई विल से गुजरात फ्लोरोकेमिकल इज अ मीडियम कॉम्प्लेक्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड. SRF इज आल्सो मीडियम कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, राइट? बैंकिंग इज अ मीडियम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड. सीमेंट थोड़ा सा मीडियम कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगर रीजनल प्लेयर है तो आपको उस रीजन के रियलाइजेशंस पता होने चाहिए. So either you're from the industry. So I've seen people who just invest in the cement sector. Why so? Because they know the realization of each and every state and they've mapped out the players to each and every state में and they know when to play the cycles. So उनका circle of competence बन गया, right? Because वो खुद पहले किस business में थे? Cement के. Because cement value chain में कहीं ना कहीं involved थे, so it's very simple for him to get an idea out of. So this is a medium complex. With capital goods are also medium complex because again B2B business में RHI Magnesita, AI engineering, will RHI keep winning over Vesuvius? Again that's a question we have to keep tracking कि Vesuvius faster grow करता है, RHI करता है. Then the most complex business to understand, अभी तो 2 साल में लोगों के रोने लग गए निकल गए होंगे, pharmaceuticals, right? किस किस का रोना निकले, right? काफी लोगों का रोना निकला, राइट? सब कह रहे सब बेच दी, राइट? सो अगेन वी डोंट नो व्हेन द प्राइसेस एरोड यार. सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑरोबिंदो फार्मा 1200 करोड़ का केपेक्स करा, सॉरी अलेम्बिक फार्मा 1200 करोड़ का केपेक्स करा, प्राइसेस एरोड हुए, रातों रात केपेक्स राइट ऑफ कर दिया. कैसे? प्रमोटर को नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? फिर हम जाते हैं चीजें पढ़ते हैं एंड वी थिंक यार वी माइट गेट टू नो. अरे इतनी रिसर्च करी उसके बाद लाइक एग्जांपल आपको देता हूँ. सो वी लाइक अभी सबने पिरामल फार्मा का एग्जांपल देखा होगा, राइट? प्री डीमर्जर स्टोरी इज की CDMO है, पेटेंटेड है, सब कुछ है. डीमर्जर से एक दिन पहले आप डॉक्यूमेंट निकालते हैं जिसमें पता लगता है 10% बिजनेस CDMO का इनोवेटिव है, 90% जेनेरिक्स है. माने आप CDMO नहीं हो, आप CMO, right? You'll get very different valuations because in a down cycle you'll get rotted basically. And when that happens, you know, we don't know when the prices erode. So either play such sectors with a lower allocation or avoid them. कोई, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ हिंदी में बार बार, कोई पुरस्कार तो मिलने नहीं वाला यार, फार्मा से पैसे कमाए हैं. Money has no color, money has no sector, right? It is up to what your comfort is. Again, bulk chemical is a tricky one if you do not have like जैसे अभी कोई दीपक फर्टिलाइजर का था यहाँ पे, right? So लोग कहते हैं दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक चढ़ गया.
एक बारी टैन के प्राइसेस और दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक चार्ट मिला के देखना कभी, 1:1 कोरिलेशन, और वो टैन के प्राइसेस नीचे आ गए तो स्टॉक भी आधा हो गया, राइट? बट नहीं, वो फर्टिलाइजर है, वो भी केपेक्स करे, वो नाइट्राइट जैसा बन जाएगा। स्टोरीज तो बन जाती है मार्केट्स में। अगेन सिंपल, कॉम्प्लेक्स है यार, मतलब अगर आपको नहीं पता टैन के प्राइसेस ट्रैक करने तो कैसे करोगे? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल। नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई और कंपनी पकड़ लेंगे, या तो अपने टेक्निकल्स के फ्रेमवर्क पे ले जाओ, कॉम्प्लेक्स है बट मेरे पास एग्जिट स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं कि जी मैं बैठे ही रहूंगा उस पर अपना ज्ञान बना के, जी मैं तो कुछ अलग PhD करके आया हूँ फार्मा केमिकल में, मेरे को बहुत पता है, बट वो फिर उसमें हालत खराब हो जाती है। You see 60-70% drawdowns and then from PhD you come back to schooling. वो प्रॉब्लम है। Metals is a complex category if you do not know what you're doing. अभी वो बेचारे के 1 महीना लग गया संदूर मैग्नीज करते हुए, मतलब जेन्युइन 1 महीना लग गया। और एक्चुअली प्रेजेंटेशन बाद मेरे को भी आधी चीजें तो सर के ऊपर से उड़ी पहले। I had to like watch it twice and read through the value picker thing. But again, it's a complicated sector. It's not कि it's easy. So these sectors, some of them, some people become real experts at these sectors. अगर मैं आज आपसे एग्जांपल लेता हूँ, नितिन सर एंड जितेन सर, ऑरम कैपिटल सबने सुना है? They've mastered these sectors यार। They'll go when no one is looking. सर से बात हो रही थी, कहते मैं स्टील सेक्टर तब लेता था जब स्टील का ओनर कहता मैं बिजनेस बंद करने वाला हूँ। सर क्या हिम्मत है सर आप में? कह रहे ओनर कह रहे मैं बिजनेस बंद करने वाला हूँ, कह रहे मैं खरीद रहा था तब। सर एक्सेप्शनल, because he's not paying anything for complexity. Actually, he's getting paid to own complexity because he's going and buying at bankruptcy valuations. उनके लिए कुछ स्टेज एनालिसिस नहीं है, वो लेते स्टेज 4 में। मतलब उन्होंने आज तक मैंने नहीं देखा स्टॉक स्टेज 2 में लेते, स्टेज 4 में ही लेते हो सारे, right? Because he wants to be paid to own stocks. He doesn't want to pay to own stocks. Getting the simple idea, right? We actually hosted him for one of the tribe meets. It was also wonderful in Delhi. मतलब जो उनका पूरा framework था of buying the pessimism and the things that he taught in the offline meet. The offline में people become very candid. So it was a wonderful presentation. जो stories बताए थे, like we also bought a company into packaging business where they were saying we are going to shut down this business and we were buying the company. And even in those packaging businesses he made 6-7 baggers. Right? मतलब इतना commoditized sector में कह रहे हम उसको बेच रहे थे, जब इस टाइम पे लोग कह रहे हैं वो तो पैकेजिंग कंपनी स्पेशलिटी पैकेजिंग बन गई है। कह रहे मैं तो वर्ड पहली बार ही सुना स्पेशलिटी पैकेजिंग का। कह रहे कुछ स्पेशलिटी पैकेजिंग नहीं है इसमें। बट अगेन इफ यू प्ले कमोडिटीज देन यू नीड टू बी पेड टू ओन कमोडिटीज एंड यू नीड टू हैव योर टाइम होराइजन इंटैक्ट। इफ यू आर प्लेइंग कमोडिटीज यू नीड टू नो कि हाँ मैं अभी सस्ते वैल्यूएशन पे ले रहा हूँ, हो सकता है 1-2-3 साल में एक साइकिल में मेरा स्टॉक चल जाए, राइट? बट ये हो सकता है कि यहाँ से कोई लॉस के चांसेस बहुत कम है बिकॉज ऑलरेडी योर अर्निंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड और मैं ट्रॉफ के भी ट्रॉफ पी पे ले रहा हूँ। रिस्क फैक्टर कहाँ होता है अगर आप समझेंगे तो पीक पी और पीक अर्निंग्स पे, राइट? फिर एक होता है आपकी पी पीक पे होगी बट अर्निंग्स अभी भी ट्रॉफ पे होंगी, तो वो रिस्क फैक्टर नहीं होता बिकॉज योर ई कैन स्टिल इंक्रीज। सेफ्टी फैक्टर कहाँ होता है जब आपकी पी भी बॉटम पे एंड अर्निंग्स आर ऑल्सो एट द बॉटम। समटाइम्स यू विल सी दैट योर लाइक पी लाइक जो पी पीक पे होती है अर्निंग्स बॉटम पे होती है, दैट इज वेयर यू लुकिंग एट सिक्लिकल्स। उनकी आपको पी दिखेगी 100 की बट अर्निंग्स ही नहीं होगी बिजनेस में। जैसे दीपन नाइट्रेट का आई रिमेंबर लाइक पी वेंट टू 70 टाइम्स। जब आपका केपेक्स कमर्शियलाइज नहीं होता पी 60-70 टाइम्स की चलेगी। बट अगेन वी वर ट्रैकिंग द कंपनी, वी वोंट से कि वी हैड द फोरसाइट टू बाय एट 100 एंड सेल एट 3000। ठीक है, नहीं था इतना यार, अगर 600-700 पे भी लिया, 22-2300 पे भी बेचा, ठीक, स्टिल गुड अमाउंट ऑफ मनी टू बी मेड इन 18 months. It is not bad from any point of view. We are not saying we are certified geniuses. You are just have to remember it's a probabilistic bet. But these life and general insurance. किसने वो 8 घंटे का वेबिनार देखा था? किसी को कुछ समझ आया था उसमें से? मेरे को भी नहीं आया था। मतलब वो इंडस्ट्री में काम करने बाद मेरे को ये समझ आया मेरे को ये इंडस्ट्री नहीं लेनी यार, इसको कौन ट्रैक करेगा? क्यों कब किसकी परसिस्टेंसी क्या चल रही है, किसकी सॉल्वेंसी क्या चल रही है, कौन क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसकी ज्यादा है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पीएनएल किस पे बने? अजम्पशंस पे। सारी मेहनत कर ली जी, फिर एक्चुअली की अजम्पशन थे, इसका मूड था, उसने डिस्काउंट रेट ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, पीएनएल ही चेंज हो गया। हाउ डू आई नो इफ दे आर फजिंग द अकाउंट्स? मतलब जनरली दिस इज आउट ऑफ माय सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर इफ समवन एल्स अंडरस्टैंड्स, वैसे सस्ते हो रखे हैं अभी, आईसीआईसीआई बहुत सस्ता हो रखा है, राइट? सो लाइक देयर इज वैल्यू ओवर देयर, बट जस्ट बिकॉज
I don't understand the sector, maybe I'll have to either club it with technicals or just leave it alone. अगर इतनी सारी opportunities है market में. So this is a wonderful thing. इसके बाद हम technicals के ऊपर जा रहे हैं to understand. Sir, again, EPC, it's not that I don't like the sector or stuff. It's that a lot of them end up following this percentage of completed method in accounting. Is that you're booking revenues as in when your percentage of contracts get completed. And to be honest, I've seen that can be fudged. तो हो सकता है आप टेक्निकल्स करके कर सकते हैं. सी वो टेक्निकल्स तो क्या है कि टेक्निकल्स आपका वो एक बहाना है कि आप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का जो ब्रिज है उसको पार कर सकते हैं. बट सिंपल आइडिया है इसकी. टेक्निकल्स में मैं क्यों कहता हूँ कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो एज अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें थोड़ा सा ओवररेटेड हो जाता है कॉन्सेप्ट. क्योंकि अगर मेरे FMCG सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पे तो मतलब जिंदगी में कहीं पे इन्वेस्ट ही ना करूँ. इट्स अ फॉल्स आइडिया, राइट? सो यू कैन जो bridge between certainty and uncertainty is your position sizing and your exit strategy. अगर इस रूम के अंदर सपोज करते हैं, ऐसा है नहीं, बट सपोज बॉम्ब पड़ा हुआ है, राइट? तो यू नीड टू नो हाउ टू डिफ्यूज इट. एंड डिफ्यूजिंग तो एक आइडिया, और दूसरी आइडिया क्या है? एग्जिट स्ट्रैटेजी. मैं तो एग्जिट स्ट्रैटेजी के आगे भाग जाऊंगा. मतलब मैं क्यों डिफ्यूज करूं, सब भागेंगे ही, राइट? पर जिसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो डिफ्यूज करने बैठ जाएगा इधर, राइट? बट I don't want to take the risk or take a 60% drawdown and sit through the stock. मेरे को नहीं लेना 60% drawdown. That I'm very clear. Maximum drawdown that I've ever taken is in a stock by the name of Kitex. That was 55% drawdown. Like my drawdowns haven't been more than 50% post that. हो सकता है notional drawdown I've also taken 20, 25, 30. COVID time पे 45, 50% drawdowns in APL, Apollo, PI Industries, Gujarat Ambuja Exports, इन सब में drawdown हुआ था. These are the variables that you look for in each and every industry. So this one slide will solve it for you. मतलब हमारा fundamentals का जो सारा ज्ञान है यहाँ खत्म होता है. इसके बाद बस when to buy, when to sell, when to ride वाला जो हमारा process है, that will start. तो hospitals में क्या track करना है? So simply आप सबने webinar तो देखा हुआ है. If a hospital is doing greenfield capex, what is the payback? More than 6 years? If a hospital is doing a greenfield capex within the same city, what is the payback? 2 years, 2 to 3 years के बीच में, right? जैसे मैक्स वाला कह रहे हैं 16 months में हो जाएगा, because already my hospitals are established, तो उनके साइड ही greenfield डाल रहा हूँ. Like if you come to a golf course road, there's a huge Max hospital over there, and he's just like putting up like one more Max hospital opposite to it. Brownfield capex कर रहे हैं. Is the payback higher? Like payback period lower basically, right? 12 to 6 months में ही हो जाता है. And finally, merger and acquisition also depends. Example लेते हैं. There's a hospital by the name of Narayana Hodiyalaya. On that hospital, if you calculate the incremental return on equity this quarter, it's 30%. How much is it? 30%, right? But the hospital is doing greenfield capex within the same cities. Cayman Island में कर रहा है, अपना आपका बंगाल में कर रहा है, कोलकाता में, and also in Bangalore they are doing. And so established centers में if you're putting up new and new hospitals, that is just giving you a 2-5-7 year runway now, because already you've exhausted the capacities of your like beds. कि already आपका capacity exhaust हो रहा है. So again, that is कि हो सकता है 1 साल stock remain stagnant, but you have given the business a 5-7 year runway just by doing those capexes. And it is anyways not into a new city. जैसे KIMS का stock है, like people ask me a lot of question on KIMS. KIMS is doing a 2,000 crore capex in new cities जहाँ पे उसको experience ही नहीं है अभी तक. That will take 6 years to break even on that capex. And market bakes these things in. Market always is superior. This is why you'll see the stock is stagnant. And post listing stagnant ही है KIMS, right? Similarly, exchanges का हमने देखा volume growth और cyclicality track करनी है आपको. MCX में volume growth बहुत solid आ रही है, बस TCS वाला if the issue resolves it could be very interesting. Cement में enterprise value per ton and per kg like जो realizations है वो track करने हैं. Cement is a tough one, but if some company becomes pan India, how many pan Indian companies are there? एक तो Ultratech है, Shree Cement, and now which one is trying? Dalmia, right? So if Dalmia becomes a pan-Indian cement player, the valuations will change. You know why does that happen? Because you have de-risked yourself from the vagaries of each and every region.
अब आंध्र प्रदेश में सीमेंट के प्राइस पड़ रहे हैं, पैन इंडियन सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, या पैन इंडियन ईबिटा पे क्या फर्क पड़ रहा है? नॉट मच, राइट? बिकॉज यू हैव de-risked by yourself by geographically diversifying. बट डेफिनेटली अगर किसी पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में अगर आपके रियलाइजेशन ऑफ सीमेंट्स फॉल, रैमको सीमेंट पे असर पड़ेगा, राइट? तो you'll see कि उनका फिर उस टाइम पे जो आई थिंक ऑल्सो द लाइक द स्टॉक सफर्स, द बिजनेस सफर्स, एंड ऑल्सो द प्रॉफिटेबिलिटी सफर्स, इवन दो इट्स अ फैंटास्टिक ग्रुप. बट सीमेंट में यू हैव टू चेक रीजनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर. ब्रोकर्स में एंजल वन हो गया, आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया. दीज आर अर्ली साइकिल प्लेस, दीज आर नॉट लेट साइकिल प्लेस. बड़े लोग आईसीआईसीआई सिक्योरिटी को प्लेटफॉर्म बिजनेस बोलते हैं जब वो ऊपर चले जाता है, और जब वो नीचे आते कहते हैं ये तो ब्रोकर ही था यार. बोले अरे किसने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिया था इस साइकिल में? हाँ, आपने सर बेच दिया बिकॉज अर्ली साइकिल था आपके लिए. बट अगेन डोंट गेट फूल्ड बाय दिस कि वो प्लेटफॉर्म बिजनेस है. ब्रोकर हमेशा सिक्लिकल बिजनेस ही होता है. जब सबका मूड बढ़िया होता है, क्या पता अगर आज मार्केट बुल मार्केट में होती है यहाँ पे 500 लोग होते, राइट? आज क्या पता बेयर मार्केट है तो 200 लोग ही है, राइट? अगेन जब मूड अच्छा होता है तो ब्रोकर्स की ग्रोथ इज वेरी फास्ट, और जब मूड खराब होता है तो ब्रोकर्स दे गो फॉर अ टॉस. बिकॉज जीरो था वाला का अगर आप चेक करो ट्विटर पे तो अकाउंट ओपनिंग हैज आल्सो फॉलन, राइट? सो दिस विल बी द टाइम हु विल, जो भी सर्वाइव कर जाएगा ना नेक्स्ट 18 मंथ्स में, वो पैसा बनाएगा, अगले साइकिल में बहुत पैसे छापेगा. फर्स्ट साइकिल तो हमेशा आपकी जो होती है ना कि वो वार्म अप मैच होता है, वही होता है क्रिकेट में. रियल मनी यू कम्स टू यू इन सेकंड और थर्ड साइकिल. थर्ड साइकिल में इज द वन वेयर यू हैव सीन योर मिस्टेक्स इन द फर्स्ट. फिर सेकंड साइकिल में आप देखते हो यार साइजिंग वाइजिंग थोड़ी सी खराब थी इस बारी भी. फिर थर्ड साइकिल में आप पूरी तरह तरीके से मार खा खा के प्रिपेयर हो गए होते हो कि हाँ हम्बल रहना है, मिस्टेक्स होने वाली है, बट मिस्टेक्स को कवर करने के लिए अपना प्रोसेस सही रखना है. तो थर्ड साइकिल वाली जो पिटाई है आज से 10 साल मतलब 8 साल 9 साल बाद, उसको अभी अपने इनकलकेट कर लो. रियल विजडम इज टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस. व्हाई वेस्ट 15 years, राइट? Similarly, like defense business में you have to track the order book and the pipeline. But to be honest, I don't like the defense industry because थोड़ा सा स्टॉक चला, HAL का OFS आ गया, right? Government knows when to book profits as well. You know, HAL के केस like कितने सालों से यहाँ पे जो पारस फाइटर प्लेन है बन रहे, तेजस सॉरी, प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड वर्क था दैट वाज लेड इन लेट 1970s. 3 decades. Can you ever forecast cash flows of such a business? मोमेंटम में ले लिया, टेक्निकल्स के लिए निकल जाओ. मतलब ऐसे बिजनेस में बहुत मुश्किल है यार. मतलब हाउ कैन यू इवन फोरकास्ट? प्रमोटर को नहीं पता, राइट? Then you see थोड़ा सा स्टॉक चल रहा है, you'll see multiple QIPs coming because they also know this is an opportunity वाला टाइम कि वो आत्मनिर्भर भारत में करके स्टॉक को निकाल दो, right? If you raise money at a high valuation, तो it's a epic thing to do, right? It's an epic thing to do, right? But again, it's a difficult sector to track. I'm not saying किसी और को नहीं समझ आएगा, शायद से मेरे को नहीं समझ आता, but order book और pipeline आपको ट्रैक करनी है. And finally, I think FMCG companies में So coming towards the technicals but fundamentals को conclude करने के लिए आपको businesses में क्या देखना है? How are the margins of the business? Is it clear? Margin sustainable है? अगर long term trend से बहुत ऊपर चले गए then you have to reconfirm or recheck कि whether that is sustainable or whether that is because of one-off pricing. Second, why will the earnings grow? हमने वो 9 triggers of earnings growth याद रखे, right? Third is look at the historical track record. एक ही रीजन की वजह से आपको जैसे एपीएल अपोलो का एग्जांपल देता हूँ, 2018 या 17 में कॉन्फिडेंस ज्यादा खरीदने का, क्योंकि 10 साल का ग्रोथ का जो सीएजीआर था 40% था, 40% केगर ग्रोथ थी. बस अगले 2-3 क्वार्टर ही खराब थे, बट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ओवर 2-3 क्वार्टर्स, राइट? सिमिलरली लाइक व्हाई एम आई लुकिंग एट एप्कोटेक्स, 5x स्केल अप इन 9 years, राइट? सो वो स्केल अप वाला जीन हर प्रमोटर में नहीं है इंडिया में यार. एग्जीक्यूशन ओरिएंटेशन बहुत कम है. तो अगेन I'll study the business. हो सकता है 1-2 क्वार्टर ना सही हो, but I think 3 to 5 years के point of view से I'll go and like do much more deeper research into it. Finally, compare with the peers. जैसे हमने बफेट की केस स्टडी में देखा था that he compared the company with the peers. Compare with the peers की like if are the peers doing better or is this business doing better, right? So that is a wonderful thing to do. तो compare with the peers में example लेते हैं.
अगर if you look at the ER&D business, so you might have seen Tata Elxsi has grown, KPIT has grown, but Cyient और LTTS का उतना fast growth नहीं आया. तो 2-3 साल में पैसा भी नहीं बना Cyient और LTTS में उतना. like KPIT और Tata Elxsi तो 10 bagger हो गया यार. then KPIT still has announced a 10-year deal. भी कोई अगर high PE की investing की बात कर रहा था तो you have to look at 40-50% earnings growth. If that company grows the earnings at 40-50% could be. But again, framework नहीं meet होता वो बात अलग है. But this is what you have to look at if you're looking at high PE companies. They have to literally grow 40-50%. You don't take a high PE company for 10% earnings growth. That is too much of a risk. But this is something to look at, compare with the peers. And last, always check cash conversion cycle. पूरी इंडस्ट्री की खराब है या फिर इंडस्ट्री की कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे रहती है. So these are some of the parameters fundamentally to look for in a stock. कि अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये एट द एंड ये 5 की क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके. ये 5 क्वेश्चंस मेरे को आके आंसर करने हैं. इससे ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है. लाइक बस एक आपका जो फ्रॉड की चेकलिस्ट है वो 4-5 पॉइंटर्स, दैट्स इट. नथिंग मोर देन दिस इन फंडामेंटल्स. साइकिल्स हमने कवर कर ली. आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट मल्टीपल साइकिल्स नाउ, वी हैव स्पोकन अबाउट मल्टीपल बिजनेसेस. फंडामेंटल्स यहाँ आके कंक्लूड हो जाएंगे. अब फंडामेंटल्स का जो मेंटल वाला पार्ट है दैट विल स्टार्ट. क्वेश्चंस में आधे घंटे में ले लेता हूँ क्योंकि वो टेक्निकल्स कवर में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा. 4 o'clock एक्चुअली वो हॉल ले लेंगे. हाँ तो और कोई रीजन नहीं है. 30 मिनट्स में Q&A डन. आपको ही क्वेश्चन पहले पूछूंगा. तो बट अगेन नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स बिकॉज वी हैव डन दिस ऑलरेडी. सो राइट, टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा वैल्यूएशन इज फॉर इडियट्स, आई हैव माय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. फंडामेंटल वाले बोलेगा चार्ट्स और एस्ट्रोलॉजर्स हैव माय बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. ट्रुथ बीच में है, सच बीच में. बिकॉज सी टेक्निकल्स वेयर दे गेट इट राइट इज इनसाइडर्स नो ऑलवेज फर्स्ट. इंडियन मार्केट्स में दैट इज मोर ट्रू. नेटवर्क इफेक्ट्स आर मच स्ट्रॉन्गर हियर. अरे वो ऐसा हो गया प्लांट में, अरे वैसा हो गया प्लांट में. इंडियन मार्केट्स में नेटवर्क इफेक्ट्स आर मच स्ट्रॉन्गर, राइट. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इंडियन मार्केट्स में आई थिंक कोई बैंकर है यहाँ पे? आपको तो हम सबसे पहले पता होगा यस बैंक में क्या हो रहा था, राइट? कि आप ही सर थोड़ा सा बता ही दीजिए. सिंपलेस्ट स्टाइल से लिटमस टेस्ट इज कि आपके जो रिजेक्टेड केस हैं वो कौन कर रहा है, राइट? सिंपल वन. एंड देन वो क्यों कर रहा है और किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर रहा है. So if you look at Yes Bank, the cases were getting picked up, and that too also not small tickets. जो आप सपने में भी नहीं कर सकते वो Yes Bank करता था, right? So that's the, I'll say, simple and most simplest example. इससे आगे, and then the relationships of the, I'll say, see, banking is a business जिसके अंदर trust and कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सुगंध भी नहीं आनी चाहिए मिसट्रस्ट की. That's a business in banking. लेकिन अगर प्रोमोटर्स की और टॉप मैनेजमेंट की रिलेशनशिप विद सम ऑफ द पीपल आर मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट, राइट, यू कैन एक्चुअली अज्यूम कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. एंड बैंकिंग में जो आपने कहा, आई हैव बीन बैंकर फॉर 25 years, 50% की ग्रोथ रेट लाना इन लेंडिंग इज, you can do it if you do it with short practices. So you understand that, as simple as. So इसलिए हाँ वो पैसे बांटने तो, या इस रूम में किसको पैसे नहीं चाहिए, बैग दो सारे, बट वो पैसे सब उठा लेंगे, देगा कौन वापस? पैसे वापस लाना is the more difficult question. That's the moat. Right, that's. And then a more important place is, Ishmoit, that your colleagues going at, say, increments which are unimaginable, right? And you know what is the output which they can deliver. So you know that these kind of costs are not manageable. So as simple as this. Agreed, sir. This exact same thing, I think, n number of bankers actually उस time पे भी बोल रहे थे. But people get to know from the industry, and when the shit hits the roof, most of the close by people जिनके भी ESOP है, जो भी insiders हैं, जो भी large institutional seller हैं, when they sell, what will like basically track it? Technicals or fundamentals? Technicals. Fundamentals तो हो सकता है first day से कह रहे थे मत खरीदो. आपको एग्जिट्स का जो स्ट्रेटजी है ना, क्योंकि हर इंडस्ट्री में मेरे पास ऐसा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं हो सकता, टू बी टोल्ड, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव अ जॉब्स, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स. सो आप हर इंडस्ट्री में जाके आप मतलब बफेट वाला काम करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट?
because he also has access to management. So technicals will always leave a mark, and this is where you have to use it for exits. क्योंकि अब मैं कहूँगा fundamentally overvalued है, but वो एक मेरा दोस्त है, like I'll give you a true story of my two friends. One friend bought Tata Elxsi at 700, sold at 1500. Other bought at 1500, sold at 8800. Which one was a fundamental investor? First one. Second was purely a chartist. Right? Who made more money? Second one. Right? So had the first one borrowed from the second one, first one का जो multiplier होता 700 से 8800 का, that would have been huge. So his stock finding process was right, but riding was wrong. I call it wrong, like with him only. मैं कहता हूँ जैसे मुझसे गलती हो, like alkyl amines का example लेता हूँ. We bought at a market cap वो 1200 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास. I think वो value picker पे देखोगे ऊपर दिखेगा कहीं 18-19 में I'm writing with my handle name. And then we exited when it went to 4000, 4100, 4200 करोड़ के आसपास market cap पे, almost 3-4x पे exit. I thought it's too overvalued. Went to 15,000 crores. How will I know it became a consistent compounder? Because when I bought it, people called it a duopolistic commodity business at 10p or 12p. तो वो जो फंडास का साथ जो मेंटल वाला पार्ट है, that will come from technicals. So you need to optimize your exits as a retail investor. Risk come first, and risk appetite और जो आपका है वो सब technicals के through control होएगा. Because valuations आप 10-15 साल बाद जाके आपको ये जब आप multiple business cycles देखोगे ना, तो आपको ये समझ आएगा. Like I was talking to very experienced investor. तो वो कह रहे थे कि मैं आगे से ना किसी से बात करा था ऐसे about this real estate and infrastructure cycle in 03-08. कहते हैं 07 की एंड में उसने मेरे को बस एक बात बोली है, टॉप हो गया. नो डेटा और एनीथिंग, बोला टॉप हो गया. कोई अभी डेटा नहीं दिया. नहीं सेट क्यों? क्योंकि सब कोई हो गया है इसके पीछे. यूजुअली तभी होता है when valuations are high, earnings growth are at the peak. तो peak P plus peak earnings growth is also a recipe for disaster. And always remember these sectors will move in packs यार. It will always move in packs. अभी कोई केबल एंड वायर की मुझसे बात बाहर कर रहा था. फिनोलेक्स चला, yes or no? पॉलीकैप चला, KEI चला, आर इंडस्ट्रीज चला. Is it a pack that is moving? Right. API sector, did it go through a drawdown? लॉरस में ड्रॉडाउन आया, मार्केट लीडर डीवीज में ड्रॉडाउन आया, लैंड फार्मा में ड्रॉडाउन था, इंडोको में ड्रॉडाउन था, राइट, पिरामल फार्मा में ड्रॉडाउन था. वो तो ड्रॉडाउन नहीं, तो 60-70% डाउन, वो तो डाउन ही था सिर्फ, राइट. 5 stocks named, हाइकल में ड्रॉडाउन था, राइट. But did these stocks move also together between 20 to 21.5? Yes or no? So sectors also move together. Remember this. Defense में जो भी like the stocks move together, data patterns, all these companies, was it a part of a sectoral move? Right? So sectors, they move together. So remember this. That is also a part of technicals. See, fundamental triggers will always be there. जैसे केबल एंड वायर में लाइक वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, सब कुछ हो रहा है. आई एम प्रीटी श्योर अगर वरुण बेवरेजेस के साथ आज को कोको कोला का भी मैन्युफैक्चर लिस्टेड होता, इवन दैट वुड हैव बीन एट अ 50-60 PE, because similar growth even that company is experiencing, right? So it's a sectoral thing that is happening. So one thing that we have to remember always this, ki stocks will always move in a pack. So I'll just introduce stage analysis to all of you. How many of you have done stage analysis? And we'll do this live in the class ताकि concepts और भी clear हो जाए. And जो आज के भी stocks हम सब पे लगा के देखेंगे, क्या stage 2 में, क्या stage 1 में, तो आप लोग ही मेरे को सब बताना. Concept simple है stage analysis का. If you look at this, stage 1, right? So stage 1 is known as the basing area. तो ज्यादातर आपको जो value investor है वो तो stage 1 में मिलेगा, या तो वो stage 4 के बाद आपको वापस stage 1 में मिलेगा. Value investing क्या कहती है? Analyze something when no one is there. Right? When no one is there. Example लेते हैं सुदर्शन केमिकल्स का, right? अभी stage 4 में ही है, शायद मेरे को लगता है अभी stage 4 खत्म नहीं हुआ because it's still not out of the woods. But still you'll see कि violent falls, they'll start stabilizing. And यहाँ पे जो smart investors हैं who have 3-4 years cycle experience, they'll start tracking these companies. Proof of the pudding is actually is happening in this company because this is a live case study. You will watch it after 3-4 years. There is an investor by the name of Bhansalis, right? So Inam sabne suna hai, right? So last 10 years, they've timed 3 cycles in Sudarshan Chemicals.
तो यहाँ तो 2% स्टेक होता है या तो 8% स्टेक होता है. 2% पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगी, 8% मतलब वापस खरीद लिया, right? Because they know it's a good company, but it's a cyclical business. And where have they been buying today? Like वापस 8% allocation होगी, उनकी चेक कर लेते हैं. स्क्रीनर ऑलरेडी खुला हुआ है इसमें. किस पे? अच्छा, क्रोम पे. Again, see, it's a business where you'll see ki the violent fall, that is from 800 to like 300 and stuff, it will start stabilizing. And you will see those smart investors, they will again, because they have a 3-4 year horizon, they don't have a quarter tak horizon, because anyways, if they buy in a rampaging bull market, they will end up creating the chart. This is the time they can buy because the selling force will be more. Just look at this name. यहाँ पे एक name दिख रहा है, आकाश भंसाली. Name दिख रहा है सबको? Is the name visible? So just do this activity when you go home, is that just simply track his shareholding and track it with the stock price. कि किस stock price पे he made a 8% allocation and then 2%. So you'll just see कि यहाँ पे 8% allocation होती थी in March 2020, which was brought down to 2.25% in December 21. दिख रहा है यहाँ पे? Should I highlight it? And now you will see in recent quarter, where has the allocation again gone to? 7.88. Latest quarter में, what were the margins? 7 single digit margins रहेंगे business के. और long run average margin क्या है business का? 14 to 15% का. 13 to 15% के आसपास. So again, this is value investing. ये आप stage 1 में buying कर रहे हैं. Right? That you're going into stage 1, looking at businesses and then you're buying it. Right? And you're prepared for the next upcycle. This is an example of value investing. तो अगर आज example लेते हैं, suppose, just to give me a second, right over here. So this is the idea of stage 1, right? जब आपकी like people are tracking it, हो सकता है अभी भी completely stage 1 में ना हो, वापस stage 4 में चले जाए, but still the drawdowns will start stabilizing. Then there will be a point of time where there will be a huge volume, like एकदम पागलों वाला like huge volume spike comes, and that is known as price volume action. Price volume action क्या होएगा? अगर आप देखेंगे इधर, तो I'll just simply show it to you with an example. Just give me a moment over here. I'll just take an example, recent example लेते हैं कोई. चलो पहले चलो लॉरस का लेते हैं, फिर recent case studies में भी एक दो stocks लेंगे. हाँ, just लेना चालू करें. पहले बेच दिया था इन्होंने 700 पे. Just look at this. सबको, is the screen visible? Can you look at these volumes? I'll just highlight it for you. Can you look at these volume bars? Right? This was again the point of time the stock broke out basically. So I'll just take the V stop length 10. नहीं, मैं stage analysis weekly charts पे पहले सिखा रहा हूँ. Right? And typically what you'll see is कि इस point of time में your exponential moving average, it will start sloping upwards. क्योंकि हो क्या रहा है कि जो like the prices or the weekly closing prices are trending upwards for a stock, and they are trending upwards because of high volumes. So high volumes is 100% indicating that smart money is entering. So this framework ki retail people move stock prices, that is not true once if a stock price is more than 1,000-2,000 crore market cap.
राइट, वो हो सकता है 50-100 करोड़ में लोग कर रहे हो, बट एटलीस्ट इफ वी आर लाइक द टाइप ऑफ कंपनीज वी ट्रैक, इट इज नॉट ट्रू इन दैट, राइट? सो दिस indicates the entry of institutional money. And when does institutional money enter? When they're expecting good results or bad results? Turnaround, good results. Companies PAT went from 120-130 crores to 1,000 crores within 1.5 years. I myself have never seen such type of ferocious PAT growth, right? जो Laurus में हुई थी, like 60 to 740, 730, like literally 1.5 year में, it was, most of it was earnings backed. Only PE expansion इसमें 25 से 40 का हुआ था. Most of the returns were earnings backed, which is very difficult to find in markets. But this is what happened. Again, this is known as stage 2, where typically your stock enters into a stage 2. Some of the stocks, they remain in stage 2 for n number of years because they keep delivering on like good results. But just remember this stage 2. Then Laurus का example लेते हैं. Do you see the exponential moving average flattening? Is it flattening over here? And then you see it turning down. Right? So flattening में क्या है? The people are analyzing if the results are sustainable from here or not. And then once it turns down, then dumping starts. अब idea क्या है कि if we are into cyclical investing, either buy a stock, अगर deep value investing कर रहे हो according to your own framework, या तो stage 1 में लो, या तो beginning of stage 2 में, अगर stage 2 में ले रहे हो, still valuation comfort should be there. Like मेरे case में, if I bought a Varun Beverages at 40p, still some valuation comfort was there because it was still much cheaper than FMCG companies. अगर एक KEI लिया 22 की PE पे, still a valuation comfort was there as it was still at a reasonable valuation. 20-25% growth आ रही है. अगर आज वो भी 40-50 की PE पे चले जाते हैं, I'll be a seller. मतलब I won't like, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी मैं 20 साल होल्ड करने वाला हूँ. ये सब मैं अभी क्राइटेरिया नहीं लेके चल रहा. But this is what stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 will look like in live action. Stage 4 कैसे होएगा? So this is stage 4, like your EMA points downwards and your volumes. If you see the volumes, like if you look at the volumes and if you look at the candles, right? Every week there's a red candle. Mane every week the stock price is falling, right? This is the reverse of a staircase type thing. Well, it is coming down from a staircase actually. Right? So this is how your stage analysis happens. And here your exit strategies are really important, क्योंकि जब next bull run आएगी, then you will see such packs moving. हो सकता है किसी ना किसी सेक्टर पे आज भी bull run चल रही है. चाहे आप पावर सेक्टर ले लो, चाहे शिल्चर ले लो, चाहे आप वोल्टाम का एग्जांपल ले लो, अपार का ले लो, पूरे पावर सेक्टर में इस टाइम पे बुल रन है, which are export oriented, right? You don't know when the demand falls. If the demand falls, you don't want to be a forced long-term investor. So what you need to have in place a exit strategy. So repeat after me, everyone in this room. Exits, just repeat, should be made on the basis of objectivity and not on emotions. Repeat once more again. But होता क्या है कि वो जब बताओ गेम, when you lose the game, that जब मेरे प्राइस पे आ जाएगा मैं बेच दूंगा. नहीं यार, वो नहीं चलता. अगर स्टॉक डजंट नो दैट यू ओन इट. ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक को नहीं पता, स्टॉक को ये भी नहीं पता कि इश्मोहित उसको 100 पे ओन करता है, 70 पे ओन करता है. इट्स जस्ट अ थिंग. योर प्रोसेस हैज टू बी राइट, बिकॉज इफ यू अप्लाई दीज थिंग्स, योर जो भी नेक्स्ट साइकिल आती है, यू विल बी एबल टू मेक ह्यूज रिटर्न्स एंड यू विल बी एबल टू कैप्चर दोज रिटर्न्स. यू वोंट, मतलब ट्यूशन फीस क्या होती है जब आप अपने जो रिटर्न्स है मार्केट को वापस दे दो बेयर साइकिल. दैट इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट. You've seen a stock going 4-bagger and you give away those returns to the market, and then you realize that profit book kar leta, right? So that is the idea कि you either end up becoming a forced long-term investor, which it's okay. But अगर 10-15 साल वाला horizon नहीं है companies में, base capital small है, you want to play these cycles, then your exit strategy has to be defined. There is no second saying about it. And exit strategy कोई सिखाना ही नहीं चाहता, because it's tricky. अब मैं कहता हूँ यार ये EMA VMA हटाते हैं, राइट? ये सब हम इतना नहीं कर रहे, क्योंकि EMA में विप सॉस भी बड़े होते हैं. ट्रेडर कहेंगे हम निकल गए थे, देखा नीचे चला गया, ऊपर चला गया तो कहेंगे देखा मैं वापस घुस गया था, राइट? सो वो सब नहीं करना हमें. तो वील ट्राई टू मेक एग्जिट्स इवन मोर ऑब्जेक्टिव. एंड एग्जिट्स में हम क्या करेंगे, वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली टेक टेक्निकल चार्ट्स टू मंथली. मैं वीकली का भी यूज समझाऊंगा, बट अब वील टेक टेक्निकल चार्ट्स टू मंथली बेसिस.
अब मंथली बेसिस में ये भी जरूर होएगा, कभी कभी एग्जिट 20-25% ड्रॉ डाउन के बाद आएगी, बट विच इज ओके, इट इज अ कॉस्ट फॉर टेकिंग वॉलिटिलिटी ऑन द अपसाइड एज वेल. So monthly charts में क्या है? So there is an indicator that we are using over here by the name of volatility stop. What is the name of the indicator? So volatility stop, what is it telling you? What is the name? What does the name indicate? Stop the volatility. When does the stock become extremely volatile? 2 times. When there is buying force, so volatility can be on the upwards. Right? General volatility है कि 100 to 105 के बीच में घूमेगा. Right? So this is general volatility, right? But upwards पे, if a V stop trend is like अगर एक V stop, if you see if it trend is like if it trends basically, if you see if the V stop trends, you'll see it has trended right over here. It is moving up. So this is V stop if it is green. So basically volatility is in your favor. Buyers are in force. अभी मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा. फंडामेंटल्स यहाँ क्या हुआ था, 100 से 1000 करोड़ का बैट हो गया था कंपनी का. Right? Everyone remembers this, right? So this is where the V stop was trending. Volatility was in your favor. What is happening over here? Exit got triggered, right? So अभी I think close to, अगर अभी मैं 2 पे use कर रहा हूँ, so at 700 rupees your like 680-670 rupees your exit got triggered, right? 600 to 650 to 600 के बीच में. अब बाहर स्टोरी आने लग जाती है जी, वो पैक्सलेवाइड का वन ऑफ द ARV की इरोजन है, ये है वो है सारी चीजें. बट अगेन दैट वाज आल्सो आई थिंक 6-9 मंथ्स पहले शायद से वो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करा था. डिड एनीवन सी वो जो कोटक का था पूरा, राइट? तो वार्निंग वाज देयर. इफ यू मिक्स द वार्निंग विद योर टेक्निकल्स, गेट आउट ऑफ इट यार. यू डोंट हैव टू बी लाइक पैसा बन गया 2-3 बैगर बन गया एक साल में. कितनी बारी बनता है यार हर बारी 2-3 बैगर? अगर हर साल एक स्टॉक 3 बैगर होते जाए तो 4-5 साल में 100 बैगर बन जाएंगे, which is impossible, right? Actually, if like stock, if it becomes a 3 bagger every year, which is impossible. So you just have to be in the purple patch of the company. So this is the second style of investing. He just stick to stage 1 if you're into value investing, and stage 2. Never ever buy a stock in stage 4. Make that a rule. Supriya Life Sciences 15 की पी पे भी अच्छा लग रहा था, 10 की पी पे भी लोगों को लग रहा है, बट पता किसी को नहीं वो गिर क्यों रहा है. Because reasons are beyond balance sheet, which you can only know through networking and stuff. Hiranba post IPO has been in stage 4, but many deep value investors are looking at it, aren't they? Right? So again, Alembic Pharma, again stage 4 for last 1.5 to 2 years. Many fundamental triggers, capex, vapex, but nahi aaya usme kuch bhi. So selling criteria should be very objective. तो आपको यहाँ पे clarity के लिए मैं बताता हूँ. Suppose if you are very convinced about a company, let's say Tata Elxsi, right? So let's take an example. Suppose if you're really convinced about Tata Elxsi, your drawdowns will become deeper if you use the other framework, right? So again, अगर आपका बहुत ज़्यादा conviction है, तो you can use monthly basis में 2.5 का multiplier as a V stop multiplier, length 10 का. If you think that 50 की PE के ऊपर stock निकल गया, जैसे 50 की PE के बाद we have seen the 10-year data, very few companies give huge returns, right? So अगर 50 की PE के ऊपर निकल गया, but you still want to be in the stages of the company where it is doing really well, then tighten your multiplier to 2 so that you don't give away huge returns to the market. So this is an exit strategy जो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि this exit strategy आपको 3 years will help you a lot. अभी RHI Magnesita में हुआ, Tarsons में हुआ. Tarsons में did exit get triggered at 610, right? V stop got triggered, and today Tarsons is back to I don't know 520, 530. IPO प्राइस पे आ गया. IPO वो तो लिस्टिंग 600 पे हुई थी, IPO प्राइस 520, 540 था, बिलो IPO प्राइस चला गया, राइट? सो अगेन रिस्क मैनेजमेंट यार, इट्स सिंपली रिस्क मैनेजमेंट. अब कोई भी कंपनी का एग्जांपल हो, यू विल सी कि जैसे टाटा एलेक्सी का भी एग्जांपल लेते हैं. सो व्हेन टू सेल तो हमने टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग सीखा. तो दिस इज फॉर दोज कंपनीज विच यू जेन्युइनली थिंक कि यहाँ पे मैं 5-10% एलोकेट कर सकता हूँ. एक और एग्जांपल आपको देता हूँ. सो अभी आपने देखा होगा मैं आपसे अमाइन सेक्टर की बहुत बारी बात कर चुका हूँ, राइट? रीजन पता है क्यों बहुत बारी बात कर चुका हूँ? क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क मीट करता है ये साइकिल. तो लेट्स सी, दिस इज 2010,
अगर आप यहाँ चार्ट पे देखेंगे, दिस इज 2010, विजिबल राइट? 2010 से लेके 2023 तक कितनी बार एग्जिट ट्रिगर हुआ है माइंड्स में? ओनली ट्वाइस, एंड बोथ ऑफ देम हैपेंड व्हेन फार्मा साइकिल वाज इन अ डाउनटर्न. 2014 to 17 में यूएस एफडीए की रेट्स चालू हुई थी इंडियन कंपनीज पे, एंड 15 to 17 में लाइक इफ यू जस्ट लुक एट दिस एंटायर फेज, जुलाई 15 से till this point of time the stock did no returns. Then since then from 160 it went all the way till 4100, right? This sector meets the long term framework of compounding, duopolistic, concentrated industry, margin stable है, सब कुछ है. But ऐसे सेक्टर में भी आपकी एग्जिट ट्रिगर हुई एंड सेव्स यू यार. इट सेव्ड यू फ्रॉम 3 years ऑफ टाइम करेक्शन, सेव्ड यू फ्रॉम ऑलमोस्ट अ 50% ड्रॉ डाउन. नाउ इट्स आज 2300 चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, राइट? इट्स एट 2295 टुडे, राइट? सो अगेन दिस विल आल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. मैक्सिमाइज कैसे? सो मैक्सिमाइजिंग गेन्स क्या था? लाइक अनलाइक मी जो 3800 करोड़ मार्केट कैप पे सोल्ड आउट, probably this gave you an exit at 13,000 crore market cap. One stock 13 bagger done यार. 3 स्टॉक में तो लाइफ बन जाती है. बट क्या नहीं है लोगों पास? एग्जिट फ्रेमवर्क. एग्जिट फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन कॉन्वेक्स एक्टिविटीज. और देखना है, अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है स्टेज 1 में देखो, स्टेज 4 में असेस कर लो स्टॉक, बट लेट इट फर्स्ट स्टेबलाइज. फॉलिंग नाइफ लोगे ना, फिर क्या होता है? देन योर एवरेज बाइंग प्राइस विल ऑलवेज बी लोअर फॉर एटलीस्ट फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, अनलेस यू हैव दैट टाइप ऑफ EQ टू कंट्रोल कि आप 20 साल बैठ गए शुगर कंपनी के ऊपर. If you look at Mr. Anil Kumar Goyal, he sat for 22-23 years on a sugar company and he still made a 20% CAGR, right? But he might have seen 60-70% drawdowns 5 times in his journey. How many of us have that type of patience to take it? Very few. और इतना पैसा भी नहीं है यार, सच बात बोले. किसी मतलब आई थिंक यहाँ पे किसी का 100-200 करोड़ का PF तो सुन ही ना रहा होता, पहली चीज. और दूसरी चीज है, on an average I'm saying कि most of us will have a portfolio of less than 10 to 15 crores in this room. I'm just assuming, and average 1-2 crores या 50-60 lakhs का ही होएगा सबका. I'm just assuming, right? Looking at the faces because people are smiling कि हाँ यार ये वाला मेरा है, हाँ वो वाला मेरा है, right? So again 10 to 15 में very few people were smiling. So this is the idea that basically respect risk. First 2 rules of investing क्या? Do not lose money. Second rule क्या? Do not forget rule number 1. ट्रेडिंग का क्या सबसे पहला रूल क्या? किसी भी ट्रेडर की बात सुनो, कहेगा यार रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. चाहे आप मार्क मिनर्विनी को पढ़ लो, चाहे वो किसी ने बुक लिखी थी आई मेड $1 million इन स्टॉक मार्केट, आप किसी को चाहे ट्विटर पे देख लो, एवरीवन विल बी लाइक रिस्क मैनेजमेंट. इन्वेस्टिंग आल्सो टॉक्स अबाउट यार एन इन्वेस्टर वोंट गो एंड बाय अ स्टॉक एट 80p, राइट? मतलब ही इज जस्ट इनटू मोमेंटम, और ही विल जस्ट बाय एंड सेल इनटू मोमेंटम. सो दिस इज द आइडिया कि कोर पोर्टफोलियो में सॉलिड कंपनीज फिल्टर कर लो. बहुत कंपनीज की बात कर लिया यार हमने आज कोर्स में, तो कितनी अब वीडियोस देख लो यूट्यूब की, कितनी कंपनीज की बात होगी जो सॉलिड है फंडामेंटली. आई थिंक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात हो गई, अभी तक हमारी एप्कोटेक्स की कितनी बारी बात होगी, CCL प्रोडक्ट्स की बात हो गई, अल्काइल अमाइंस की बात होगी, बालाजी अमाइंस की बात होगी, नवीन फ्लोरिन की बात हो चुकी है हमारी ऑलरेडी, राइट? देन KEI इंडस्ट्रीज की बात होगी ऑलमोस्ट, पॉलीकैब की कितनी बारी बात हो चुकी है. All these 30, 40, 50 कंपनीज, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात हो गई. बट रिमेंबर दिस की जो साइकिल आती है ना बड़ी, जैसे गुजरात अंबुजा में साइकिल आई थी, these cyclicals they end up making you a lot of money. So assume कि things are cyclical and I need to have a risk management strategy in place. That is simplest process to capture the maximum out of the markets. अब ये तो हमारी बात हुई कोर पोर्टफोलियो की कि कोर में मैं ये सब कर रहा हूँ. अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है कि अब सब कोर करने के बाद लोगों को थोड़ी खुजली तो होती है यार, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है यार, मेरे पास नहीं है, होती है, इट्स नॉर्मल. फोमो तो होता ही है. एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स तो डिजाइन ही फोमो के लिए है. आपके पास वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, अरे फोमो हो गया. अरे मतलब एक्चुअली 2007-8 में व्हाई डिड माय फादर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वाज बिकॉज एक्चुअली मैं वन ऑफ हिज वेरी क्लोज फ्रेंड्स ही इन्वेस्टेड इन यूनिटेक एंड ही मेड अ लॉट ऑफ मनी. फोमो हो गया बस, मेरा यार अकाउंट ही नहीं है, मैं भी खोल लेता हूँ, राइट? देन समवन इन्वेस्टेड इन API कंपनी, फोमो हो गया यार, API देखना चाहिए. देन किसी ने अभी कोई बैंक्स में कर रहा है तो फोमो है, बैंक्स देखने चाहिए, राइट? सो हर प्रोसेस पे
हर स्टेज पे फाइनेंस इज डिजाइंड इन अ वे टू बेसिकली फोमो का फीलिंग देने के लिए आप सबको, बिकॉज अगर फोमो का फीलिंग नहीं होएगा तो आप लोग आगे ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, और ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो ब्रोकरेज कैसे जनरेट होगी, और ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होंगे ट्रेड पे, लाइक एक्सचेंज पे. सो एवरी party is invested in transactions, so it is designed for FOMO. This is why process is very important, because your FOMO can actually become like a snake and it can eat you alive, because we've seen कि FOMO में क्या होता है. So FOMO investing करो, satellite PF अगर conservative investor हो, limited to 10% of allocation, this one way. aggression है maximum 20% कर लो. अगर लग रहा है कि यार सैटेलाइट से सही बन रहा है तो 20-25% से मत ऊपर लेके जाओ उसको. बट सैटेलाइट के लिए टेक्निकल स्ट्रेटजीज विल आल्सो बी वेरी वेरी डिफरेंट. सो अब सैटेलाइट्स का सैटेलाइट पोर्टफोलियो में एग्जांपल देता हूँ. अब एक्चुअली हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, बाइंग की मैं अभी बाद में करूंगा. तो HEG किस किसने यहाँ पे साइकिल देखी है? ग्रेट. सो लेट्स लुक एट द ग्राफाइट इलेक्ट्रोड साइकिल. अब पहला रूल ऑफ सैटेलाइट पोर्टफोलियो, नॉट मंथली चार्ट, वीकली चार्ट. मंथली तक आते आते उसमें 50% जला गया होता है. सैटेलाइट में तो वो आपको पता ही, आप सिक्लिकल ले रहे हो, शुगर वुगर ले रहे हो, इलेक्ट्रोड ले रहे हो, प्राइसिंग किसी को पता नहीं. वो एक्चुअली ग्राफाइट इलेक्ट्रोड किसी को नहीं पता. पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट दीज थिंग्स आर इनटू ट्रू स्पेशलिटी स्टील. मतलब इसके नाम आगे नाम चेंज हो गया था, ट्रू स्पेशलिटी स्टील करके ना लोगों ने इसका ट्विटर पे डाला था. एक बंदे ने थ्रेड भी लिखा था 2017-18 में कि दिस इज नॉट कमोडिटी, दिस इज स्पेशलिटी स्टील. आपको तो पता ही नहीं किसकी बात कर रहे हो आप. बट अगेन वो सारी चीजें नैरेटिव में इग्नोर करके एग्जिट स्ट्रेटेजी इन प्लेस. पहली चीज क्या कर रहा हूँ, वीकली फ्रेमवर्क पे लाऊंगा, टाइम फ्रेम पे लाऊंगा, राइट. एंड वीकली टाइम फ्रेम पे लाके वी स्टॉप एट 2.5 आपको करना है तो आप तब कीजिए जब बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो सकता है 2 कर रहा हूं. जस्ट लुक एट द इंटायर साइकिल, राइट. मैं ये नहीं मानता कि किसी ने बॉटम पे लिया होगा, वो सब कहानी की बातें हैं कि मैं आपको कहता हूँ जी आप बॉटम पे ले रहे हो, वो सब कहानी की बातें. सब लेते तभी हैं जब वो 300-400 रुपए का हो चुका होगा, जब पड़ोसियों ने ले लिया होगा या किसी ने ले लिया होगा, वो ट्विटर पे आ गया होगा, राइट. सो हो सकता है कि आपका But again, if your exit strategy in place, sometimes the stage to moves are so vicious that your exit gets triggered at 3,600 rupees. Still a 9-bagger in 1 year. Cyclicals में huge wealth gets created if we follow exit. Cyclicals में huge wealth is destroyed for those who do not follow exits. Because it also takes away 80% in a year. 2 months में चले जाता है. I think I was somewhere over here who played graphite electrode. जो भी मेरे को बाहर में भी मिला था. ग्राफाइट इंडिया में आप इन्वेस्टेड थे लाइक HEG के अलावा, थिंक might not be. He was telling his story he made a like almost a 4-5 bagger and then he saw it evaporating and end में 50-60% like gains पे बेचा बस. But similar thing, this simple strategy in cyclicals or satellite portfolio will save you a lot. Same example लेते हैं. चलो आज APAR Industries को देखते हैं. Can we agree that APAR Industries is a cyclical company? So part of the solution is to define it properly, right? कि आज मैं एक cyclical business लेके बैठा हूँ. Example लेते हैं. So इसका अगर आप if you look at the ADX, तो ADX of the business is above 40-50 के आसपास है. 50 बहुत कम businesses का ADX हो जाता है. It goes into the super performance zone, right? Basically the everyone is aware of ADX over here. लेवल 4 देखा टेक्निकल्स का SOIC का. I'll highly suggest because all of you are members, तो level 4 के ना this is covered. So basically ADX measures the average direction. Basically where is the direction of the chart, right? So अगर if अगर candle moves up, so ADX का जो sign होता है positive हो जाता है. If it moves down, तो ADX का sign negative हो जाता है. And उसका जो average है उसके calculation में बनता है, right? So first key criteria for buying a stock, right? अभी मैं बाइंग स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ. वी स्टॉप टर्निंग पॉजिटिव अगर सैटेलाइट पोर्टफोलियो पे ले रहे हो. वी स्टॉप पॉजिटिव ऑन अ वीकली चार्ट एंड ADX अबव 20. सिंपल क्राइटेरिया फॉर बाइंग सैटेलाइट में. सिंपल क्राइटेरिया फॉर सेलिंग, वी स्टॉप टर्न्स नेगेटिव. दैट्स इट. कोई ज्ञानबाजी में मत जाओ कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ,
बोल दो cyclical लिया है यार, कोई शर्म की बात ही नहीं है। हम पे कोई किताब लिखनी नहीं है किसी ने यार, हम पे किसी ने किताब थोड़ी ना लिखनी है यार कि द जर्नी ऑफ लेट्स से सो एंड सो जर्नी ऑफ इन्वेस्ट, वो दैट इज रोमांटिसिज्म, वो हर एक फील्ड का पार्ट है। जब मैं पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ता था तो उसमें मैंने 6-7 चीजें पढ़ी, लाइक अंडरग्रेड मैंने लाइक पॉलिटिकल साइंस में करी है। आई रेड पॉलिटिकल फिलोसफी, लाइक ये तो काम की बात ही नहीं कर रहा कोई, कह रहा है कि वर्ल्ड ऐसे यूटोपिया होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, सब वही मतलब वर्कर क्लास शुड स्टार्ट रूलिंग। मैंने ये तो हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में, जहां पे भी हुआ है वहां पे, या तो वेनेजुएला हुआ है या तो नॉर्थ कोरिया हुआ है। दैट इज रोमांटिसिज्म। सो डोंट गो इनटू रोमांटिसिज्म ऑफ इन्वेस्टिंग, हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी इन प्लेस, बाय ऑन फंडामेंटल्स एंड सेल ऑन टेक्निकल्स। बिकॉज फंडामेंटल्स में जब ओवरहीटेड वैल्यूएशन होती है, यू विल बिकम अवेयर, एंड दिस इज वेयर योर टेक्निकल्स विल ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग यू. So we have to borrow from both the worlds. We are not कि we belong to one world. It's just borrow from both the worlds. पैसा बनाओ और खत्म यार. उसके बाद आप नेक्स्ट साइकिल जब आएगी, हो सकता है आपको मुंबई वाली मीट याद हो, अरे वो बता के गया था कि ऐसे वो वी स्टॉप हिट हो रहे हैं, इसमें मेरे को बेच देना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट. अगर 1-2 साल फ्लैट में रहे तो सारे वी स्टॉप हिट हो जाएंगे. फिर कहेंगे यार क्या ये वी स्टॉप तो चलता ही नहीं है. बट अगेन दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट बुल साइकिल. हो सकता है आज से 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, but probably India is a very oversold market right now, right? Because Indian ownership has fallen to great financial crisis lows, low by FIIs, and still the markets still haven't cratered. अगर 14-15 हजार पे निफ्टी आए, मजा आ जाएगा यार. फिर ये आपके वी स्टॉप आपको बहुत काम करेंगे. It will help you a lot in your core businesses. This will help you. But this is the simplest of the simple ideas. अब कई लोग देखेंगे कि यार ये तो ये पढ़ा रहा है, खुद तो जाके इसने एक बैंक ले लिया था जब वो 40 का 40-41 पे आ गया था. सिंपल गाइज, लाइक उतना रिसर्च और पेशेंस और उतना लाइक गोइंग टू ब्रांचेस, लाइक वी एक्चुअली लिटरली वेंट टू ब्रांचेस, स्पोक टू एम्प्लॉइज टू गेट लाइक बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट. नॉट एवरी रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकते, टाइम नहीं है. टाइम नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, टाइम है तो वो सब कर लो, राइट. सो दैट इज द सिंपल आइडिया. अनदर एग्जाम्पल, आपको एक और साइकिल का एग्जाम्पल देता हूँ. How many of you have tracked Rushil Decor? अभी स्टोरी बन रही थी कि MDF वाले आएंगे, आइकिया आएगा, बस हो गया जी काम. मतलब आइकिया ने सारे MDF इनसे लेना है. Again, let's take it to monthly for an example. Some people were assuming it to be a core portfolio stock. मेरे को स्टोरी बहुत क्लियर थी इसमें कि दिस बिजनेस शुड नॉट गेट अ मोर देन 10p. सिंपल रीजन क्या था, क्योंकि 4 साल लगते ग्रीनफील्ड केपेक्स करने में MDF का. मार्केट ने पहली अर्निंग्स इसकी मॉडल कर ली थी कि ये 10 की पी पे फॉरवर्ड पे. देन व्हाट, दिस इज नथिंग फॉर 4 years. या तो लैमिनेट का प्लांट आएगा विच इज मार्जिन डाइल्यूटिव, और वही वो लैमिनेट का प्लांट अनाउंस हुआ, राइट. सो स्टोरी वाज क्लियर, बट समटाइम्स बिकॉज पीपल आर इन बुलिश फेज, तो मैं अपना जो बेरिश सेंटिमेंट उनके सामने कम कर लेता. हाँ ठीक है सर, ओके, क्योंकि बोल दो ना, कहता है ये तो सारे स्टॉक बारे में खराब ही बोलते हैं मेरे, लाइक दिस फ्रेमवर्क एंड्स अप कमिंग, राइट. तो एक्चुअली मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा था कि जो भी इसमें पॉप आया, दिस इज अ वंडरफुल टाइम टू सेल, एंड दैट पर्सन लाइक ही स्टार्टेड डिबेटिंग विद मी. मैं कहा सर मुझसे गलती होगी, आप खरीदिए इसको, आप इसको बेचिए, आप खरीदिए सर इसको आप. वी स्टॉप टर्न रेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड व्हाट वाज द न्यूज, बिकॉज आई वाज ट्रैकिंग इंपोर्ट्स ऑफ MDF. सी नाउ यू कैन नॉट ट्रैक इंपोर्ट्स ऑफ MDF, राइट, अगर टाइम नहीं है. क्या ट्रैक कर सकते हो, वी स्टॉप. क्या क्या करना आपने ट्रैक करके कि यार उसके प्राइस गिर रहे हैं. 30-40% प्राइस कट्स टेकन बाय द कंपनी, राइट. आई थिंक 15-20% तो उन्होंने उसमें बोल ही दिया है, बट चैनल चेक्स पे 30-40% MDF प्राइसेस गिर गए हैं, एंड MDF इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग, राइट. एंड नाउ यू सी ऑन द चार्ट्स, जिसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी उसने 200 पे लिया, आज वापस 200 पे आ गया. उसके 2 साल क्या हो गए, वेस्ट हो गए. IRR wasted. Amit ji, you might remember this story, right? A lot of people pitched it as well, right? So again, risk management isn't in place, so not every stock is DMart यार. 100 का 230 पे चल जाएगा. Majority are Rushil Decors, very few are DMarts. Let's recognize this and let's write it on a piece of paper. Majority are Rushil Decors, very few are DMarts. Not against this company particularly say, but majority are cyclicals. 90-95% stocks that you'll analyze will end up being cyclicals. Because business cycles happen for n number of reasons. Very few will have that sustainability angle to them. Very few. And we, all of us are searching for those very few.
but ignoring the base rates की 95% market ही cyclical है बस, right? अगर 95% market ही cyclical है और हम कह रहे हैं नहीं जी structural है, तो हो सकता है कि हम स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिंग के नाम पे cyclical खरीद के फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते जाए और 5 साल बाद कहें यार तो पैसा ही नहीं बना. चांसेस है, हो सकता है. सो दैट इज अ सिंपल वे कि जब आप सैटेलाइट पीएफ कर रहे हो ADX above 20 वीकली वी स्टॉप पॉजिटिव, देन यू गो एंड बाय. But sometimes structural trends definitely come, and how to take advantage of them, that we'll talk. So let's take an example. तो actually बहुत सारे businesses के यहाँ पे examples हैं. एक second, let's take an example of La Opala. La Opala का ले लेते हैं, SRF का example लेते हैं. That will be a much more relevant case study. Right. SRF के केस में now currently there's a market vacuum. क्या market vacuum है कि रेव गैसेस चाइनीज लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते यूएस में बिकॉज एंटी डंपिंग ड्यूटी है 2027 तक, और 2018 से चल रही है और रिन्यू हो गया अगले 5 साल के लिए. फिर यू लुक एट ऑल्टरनेटिव्स, ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज लेफ्ट एंड यूएस मैन्युफैक्चरर्स आर लेफ्ट, एंड लाइक यूएस एजेंसीज डू नॉट वांट कि रेव गैसेस और एनी पोल्यूटिंग केमिकल्स बी मेड ऑन देयर ओन ज्योग्राफीज. तो क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है, केमिकल्स में जनरली आ रही है, बट फ्लोरिनेशन में थोड़ी एक्सेसिव स्पीड पे आ रही है इस टाइम पे. तो एग्जांपल अगर आप एसआरएफ का देखते हैं इधर, राइट, सो इन एसआरएफ केस लीव असाइड अ कोविड क्रैश. जब ब्रॉड मार्केट क्रैश है तो वी स्टॉप हो सकता है आपको जो खराब पिक्चर है वो दे दे, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज इफ ऑल द स्टॉक्स आर फॉलिंग. तो दिस इज वेयर योर चार्टिंग के जो मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स ना, दे विल हेल्प यू अलॉट. जो चार्टिंग के ऊपर हमने सीखे थे, राइट. सो अगेन अगर ब्रॉड मार्केट इंडिकेटर्स हैं तो उसको एक्सटेंड साइड करते हैं. But again, this is an example जो monthly charts पे if you look at SRF, right? So let me take this, and I think actually genuinely think this could be a compounder type business and multiplier to 2.5, right? And just look at this. I think आपका 2020 से जब कोविड सिनेरियो छोड़ दो, राइट, कोविड का एक सिनेरियो छोड़ दो, 2019 से कोई एग्जिट ही नहीं है SRF में. कोविड में तो एवरीथिंग वाज एग्जिट बेसिकली, तो उस सिनेरियो में आप इग्नोर कर सकते हो ब्रॉड मार्केट क्रैश है. But again, business is putting up 13,000 crore capex, तो आपके फंडामेंटल स्क्रीन्स आ रही हैं, राइट, फंडामेंटल स्क्रीन्स आर मीटिंग. सेकंड क्या है, अभी बिजनेस कंसोलिडेशन में. कंसोलिडेशन में को पता कैसे लगेगा कंसोलिडेशन पे, यहाँ पे ADX विल मिसलीड यू, आई विल टेल यू व्हाई. सो जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली कि मंथली में ADX जब कैलकुलेट हो रहा है तो बहुत सारे जो महीने हैं, लाइक आई थिंक एटलीस्ट जो जब से आप चार्ट देख रहे हैं तो उसका ADX कैलकुलेट हो रहा है मंथली पे, राइट. तो दैट विल गिव यू फॉल्स पिक्चर. कंसोलिडेशन क्या चल रही है इसमें, अगर आप सिर्फ वीकली पे ले आएंगे इसको और उस पर अगर आप ADX देखेंगे इसमें, तो यू विल सी दैट द ADX हैज फॉलन. हैज इट फॉलन बिलो 20? आई विल जस्ट शोकेस इट टू यू ओवर हियर. इट्स गॉन टू 4 या 5. पूरे केमिकल पैक में करेक्शन आई है, बट हैज SRF फॉलन बाय 40%? एवरेज केमिकल स्टॉक इज डाउन बाय 30% at least. So it's relatively outperforming the sector right now, but still the ADX is below. पूरे सेक्टर में आप जाके ADX देखेंगे तो वीकली पे आप देखेंगे बिलो 20 चल रही है, तो अभी कंसोलिडेशन फेज में चला गया, राइट. सो अगेन अ पॉइंट ऑफ टाइम टू स्टडी फंडामेंटल्स, एकदम सही से पढ़ लो, कन्विक्शन बिल्ड कर लो, एंड इफ योर ADX स्टार्ट्स गोइंग अबव 20 अगेन, तो अगर वीकली पे चलती है तो देन यूल सी द स्टॉक विल स्टार्ट मेकिंग न्यू हाइज. व्हाट इफ द मार्केट इज एनालाइजिंग इफ द मार्जिन्स आर स्टेबल और नॉट, वो तो हाइंडसाइट में हम स्टोरी बना देते हैं, right? But again, this is one of the businesses that we should still keep tracking because this is a live case study. Live case study है कि आप कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में लगा सकते हैं. अब और फंडामेंटल्स करने हैं तो इसमें इसका एक होल्डिंग कंपनी है, कामा होल्डिंग्स. हैज एनीवन हर्ड ऑफ इट? कामा होल्डिंग्स राइट नाउ पोस्ट SRF गोइंग अप इज एट 80% डिस्काउंट, एंड आफ्टर सेक्शन 80M के इम्पोजिशन से 2020 में होल्डिंग कंपनीज डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू कीप कैश विद देम. लास्ट 2 क्वार्टर्स में डिविडेंड कितने का दिया अभी? 84 पर शेयर, एंड अभी जो शेयर बायबैक था कितने पे करा था? 14,500 पे. 100% रिटेल एक्सेप्टेंस वाज देयर. दैट वाज लास्ट टू लास्ट क्वार्टर, राइट. तो मतलब वैसे ही देखा जाए तो 20% तो उन्होंने वहां से दे दिया, और अभी 84 रुपीज का डिविडेंड, लाइक 1% यील्ड आ गई, राइट. सो दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू 110 crores ऑफ कैश इन 2 quarters, राइट. सो इफ दिस कैश डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल देयर, it's an indirect way to own SRF, Kama Holdings. That is
one of the ways, because it is at a lifetime high discount, whereas there is a trigger to close the discount post the imposition of section 80M. वो discount टाटा इन्वेस्टमेंट्स में close हो गया था पीछे, याद है जब टाटा इन्वेस्टमेंट्स हर जगह रॉकेट आने लग गए थे? Remember everyone? Bajaj Holdings में भी वो discount has been closed, but few of the anomalies remain. So this is one of them, right? So again, word tracking, because आपका risk reward becomes lopsided. अगर SRF 3-4 साल में भी double होता है, discount goes to 60%. Do the math. SRF का 70,000 करोड़ का market cap है. Everyone with me? Let's say 4 years. Let's not say कि 3 years, 2 years में bull market नहीं है, sideways market में रहते हैं. 4 years में M cap doubles. It is 18% compounding. Market cap goes to what? 1.4 lakh crores. If the discount, like so, Kama Holding owns 50% of SRF. तो Kama Holding का implied holding market cap क्या आएगा उसमें? 70,000 crores, right? What is the current market cap? 7,000 crores. 7,500 crores, 74 है, 74, 7,500 के आसपास. So you can just imagine अगर वो discount 60% भी आ गया, and अगर वो discount 70% भी आ गया, so what type of upside you make, right? It's a simple math. Anyone can do it and check. If it's 70%, but post this section 80M पहले cash distribute नहीं हो रहा था. तो जब cash distribution वापस start हो गया, there's a very huge catalyst to come in play. Bajaj Holdings की भी कुछ ना कुछ दूसरी investments थी, but वहाँ पे भी पूरा ही discount narrow हो गया आपका. 40-45% रह गया. एक टाइम पे वो भी 70-80% होता था. तो दिस इज रिस्क रिवॉर्ड. मतलब मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड जनरली बता रहा हूँ कि अगर यार SRF डबल होता है, ये भी डबल होता है तो ठीक है, बट बाय चांस ऐसा हो गया तो मैं SRF वाला रिस्क लेके 4 bagger बना लूंगा, राइट? तो दिस इज फंडामेंटल्स कंबाइनिंग इट विद टेक्निकल्स. आप चार्ट किसका ट्रैक करेंगे? फिर भी SRF का, कामा होल्डिंग्स का नहीं आप करेंगे, फिर कामा होल्डिंग्स विल बी मच मोर वॉलेटाइल. तो दिस इज अ वे टू डू इट. अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्टॉक्स एक एग्जांपल लेता हूं, राइट? सो हम पहले क्योंकि अपार इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे तो उस पर वापस आता हूं. सो आई वांट यू टू नोटिस अ फ्यू थिंग्स. आप लोग मेरे को बताओ ADX का है? नहीं दिख रहा? अच्छा मैं ADX 48 के आसपास है अभी, राइट? वी स्टॉप, इज इट ट्रेंडिंग? अभी बीच में ट्रेंड करा था, अभी फ्लैटन आउट हो गया वापस, राइट? Are the volumes high in past few weeks? Like last अगर आप देखते हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम हाई है एवरेज से, राइट? सो अगेन दिस इज अगेन, अगर किसी, क्योंकि इंट्राडे वाले तो कुछ और ही रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, वो सब मेरे को नहीं पता. बट अगर आप इफ यू आर इनटू लाइक खुजली हो रही है, राइट? अगर खुजली वाला पोर्टफोलियो है तो उसके लिए नीड टू हैव एन एग्जिट इन प्लेस, बट यू हैव टू फिल्टर सच स्टॉक्स. देन उसका ADX भी अबव 40 होना चाहिए अगर खुजली पोर्टफोलियो में डालना है, राइट? Literally, those are like your super trending stocks, but exit should be objective. So I think with this, I'll sort of conclude कि आज हमने पूरी क्या क्या बात करी. So we started out with the story of blind men कि सबके लिए investing different होएगी, but one thing is for sure कि like opposite of an opposite, like a good idea can also be a good idea. Some people say fundamentals are good, some people say only technicals are good. I'm saying you take best of both the worlds, right? And then we also discussed कि कैसे हम cycles देखते हैं. So we discussed about Apcotex, अभी हमने SRF की बात करी, Westlife की बात करी, key variables to track in each and every industry, how Warren Buffett actually invests, and finally we had a session on technical analysis, when to buy, when to sell. एक part जो हमारा रह गया, that is when to pyramid. तो हमारा पिरामिड वाला पार्ट रह गया. अगर आप अपनी कोर होल्डिंग्स में भी कर रहे हैं तो यहाँ पे यू जस्ट कंबाइन अ सिंपल लाइक अ सिंपल इंडिकेटर अलोंग विद दिस मंथली चार्ट्स पे. अगर आपको पिरामिडिंग सीखनी है तो कई लोग कुछ लोग डॉन्चिनियन चैनल्स यूज करते हैं, ये सब नहीं, बट आप क्या यूज कीजिए? पैराबोलिक SAR. डज एवरीवन रिमेंबर पैराबोलिक SAR? तो पैराबोलिक SAR एक बहुत खराब इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स यूज करते हैं, बट आप मंथली चार्ट्स में एज एन इन्वेस्टर जाके देखेंगे तो आपको पिरामिड करने में बहुत हेल्प करेगा जब पैराबोलिक SAR एक अपवर्ड्स ट्रेंड में चले जाए. अगर पैराबोलिक SAR, मैं इसको ना थोड़ा सा वो कर देता हूँ, तो इसमें आपको इंक्रीमेंट हमेशा 0.04 या 5 के बीच में यूज करना है. सपोज 0.05 यूज करते हैं, राइट? एंड इसको थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, राइट? सो आई विल जस्ट टेक दीज लाइंस.
and make it prominent. Right, all right. So simply when the candle is like when the like SAR blue line से आपको indicate होएगा when it is below the candle, right? That is the point of time when you can average. Basically अगर 1% यहाँ लिया तो 1% यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि V stop भी positive. तो V stop positive होना is the minimum condition and ADX above 20 is the minimum condition. फिर 1% यहाँ लिया 4 tranches में allocation complete. Selling SAR पे नहीं करनी सिर्फ like it's a good thing for pyramiding. Just a good thing for pyramiding, right? As an education organization, we can just give you our framework. Stock names बार-बार change होते रहेंगे because stock names are genuinely like commodities. Stock names change होंगे, but you'll see कि every cycle will have a new winner and when कहीं ना कहीं से एक business ऐसा emerge करेगा जो आपको पता भी नहीं था ये सब कर रहा है, right? So this is the simplest idea. SRF का example है 2010 से पहले किसी को नहीं पता था SRF कोई business है, right? आज से 10 साल पहले कहाँ नाम था 14 तक भी बहुत लोगों को नहीं पता था एक्चुअली फ्लोरीन कंपनीज ही नहीं पता थी किसी को इसकी भी हिस्ट्री है सिंपल रीजन क्या था 2010 तक चाइना के पास कैप्टिव फ्लोरोस्पार माइंस होती थी एंड देन दे एग्जॉस्टेड दोस माइंस तो 2007 में क्या हुआ लाइक बिकॉज ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑल दीज कंपनीज नवीन फ्लोरीन एसआरएफ एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स दे वर गिवन कार्बन क्रेडिट्स 600 करोड़ का मिला किसी को 500 करोड़ का मिला because they had to phase out ref gases manufacturing जो ये chlorofluorocarbons manufacture कर रहे थे so they took that carbon credit money and they took that money and invested in huge plants fluoropolymers का पहला plant गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 2007 में आया जो आज हम सक्सेस देखते हैं 2007 से वो बिजनेस चल रहा है SRF का दहेज वाला प्लांट सर दहेज से यहाँ पे कौन था राइट दहेज वाला प्लांट 2012 में राइट 2012-13 के आसपास आया नवीन फ्लोरीन का सूरत का प्लांट भी 2011-12 में आया और मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स भी नवीन फ्लोरीन ने 2011-12 में लिया क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो गया राइट पास्ट वाजंट द ट्रू गाइड बैक देन बट अगेन हाउ टू स्पॉट दीज चेंजेस समटाइम्स सैटेलाइट विल एंड अप बिकमिंग अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक इफ द ग्रोथ रेट्स परसिस्ट so this is why borrow the framework take the framework names will keep changing and manage your risk well because very few people are talking about exits सबको ये जाके कोई भी आप मतलब एनालिसिस सुन लीजिए यूट्यूब या कहीं पे भी एवरीवन इज टीचिंग हाउ टू बाय व्हेन टू सेल ही रियल पार्ट है इन्वेस्टिंग का बुल बेयर मार्केट साइकिल्स आते रहेंगी बट इफ यू हैव अ फ्रेमवर्क इन प्लेस यू विल एंड अप मैक्सिमाइजिंग योर गेन्स 4-5 स्टॉक ही चाहिए यार इन योर नेक्स्ट 10-year जर्नी टू मेक मैक्सिमम बेसिकली रिटर्न्स आउट ऑफ द मार्केट विद दिस वील कंक्लूड फॉर टुडे थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग बस एक चीज छोटी सी रह गई थी जो आप सब जरूर ट्राई करना जब आप जाते हैं तो ये सबके पास रैंकिंग शीट आ रखी है SOIC की टेलीग्राम पे ईमेल भी करवा दूं सबको हरिंदर जी प्लीज एक ईमेल फॉर SOIC रैंकिंग शीट राइट सो एक रैंकिंग शीट है जिसका आपको वील सेंड एन ईमेल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड टुवर्ड्स द एंड क्या आएगा राइट ये टेक्निकल्स भी है इसके अंदर रैंकिंग शीट में टेक्निकल रेटिंग क्राइटेरियाज भी है इज द ADX above 20 इज इट बिलो 20 राइट देन आल्सो देयर इज आल्सो अ क्राइटेरिया कि सेकेंडरी ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है प्राइमरी ट्रेंड्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है जैसे सुजलॉन का स्टॉक चार्ट देखते हो तो 5-10 साल से प्राइमरी ट्रेंड दिख रहा है नेगेटिव है राइट सो यू जस्ट पुट अ नेगेटिव ओवर देयर तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस शीट वंस एक 30 मिनट की वीडियो बना के आपको भेजूंगा So as a homework or as an activity, what the entire tribe will do is that whenever we like हमारा Sunday hackathon या भी Sunday session होएगा, so I'll actually pick 12 or 15 tribe members and सबसे मैं ranking कराऊंगा different stocks पे और सबसे stage analysis और fundamentals भी करवाऊंगा ताकि आप सब जब participate करेंगे ना then you will truly end up learning because you'll see कि यार ये तो मतलब आप जब होता क्या अगर आप investing में 2-3 साल से अगर कोई और 2-3 साल वाला आके is also doing these things then you will say कि अच्छा मेरे similar investing experience वाला है तो I can also do this. So that will even accelerate your learning. So this is what we'll do in a Sunday hackathon session. But this will give you an idea कि ranking क्या आपकी companies की जो आप own करते हो कि उनका जब end में पूरा score आएगा तो आपके score के हिसाब से जो भी पूरा portfolio होएगा that will get ranked automatically in this sheet. And this will give a very wonderful idea कि कहाँ पे सबसे कम score है कहाँ पे मेरे को allocation increase करने का सोचना चाहिए and where basically you should go and look at more companies within your own portfolio for extra cash where you have to deploy.
सो SAR का पैराबोलिक SAR का एक ना इन्वेस्टोपीडिया पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा. एक्चुअली पूरा मैथमेटिकल स्टॉप लॉस फॉर्मूला है. इंक्रीमेंट, हाँ सर, इंक्रीमेंट आप 0. So I'll just explain this once again. The settings for so indicator name is parabolic SAR, and आपका सर जो settings है, right? So settings is increment आपका 0.05 के आसपास होना चाहिए. 0.05 start आपका 0.02, max value 0.2. So आपको सिर्फ increment change करना है, which is at 0.02. उसमें आपको 0.05 करना है बस. हाँ, 0.2 से 0.5 करना है सर आपको. और इसका अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ना है, वो मेरे को भी बहुत ज्यादा ना वो लगता है कि वो मैथ्स नहीं पढ़ानी, क्योंकि स्कूल में मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए आर्ट्स ली थी. राइट. हाँ हाँ, I'll just explain it again. बेसिकली अगर आप I'll just close B stop. आपको स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ सर, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जब आपका अगर आप ये देखेंगे, सिंपली व्हाट SAR इंडिकेट्स कि इफ बेसिकली दिस SAR गोज अबव द कैंडल, दिस इज स्टॉप लॉस. जो ट्रेडिंग कर ले उनके लिए. तो हम लोग क्या कह रहे हैं सिंपल कि इफ द डायरेक्शन इज पॉजिटिव, राइट, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग दीज एडिशनल एलोकेशन ट्रांचेस व्हेन SAR स्टार्ट्स ट्रेंडिंग. अगर आप देखेंगे तो SAR अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रांचेस ले सकते हैं. और राइट, सो सिंपल मीनिंग ये है इसका, और कुछ भी इसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है. नॉट फॉर एग्जिट के लिए वी स्टॉप, क्योंकि आपकी एग्जिट बहुत बारी करा देगा. ये एक्चुअली ट्रेडर्स यूज करते हैं, बट आपका जो पिरामिडिंग आपका फ्रेमवर्क सॉलिड करने के लिए ना, आप एक एग्जांपल लीजिए, डिक्सॉन का स्टॉक ले लीजिए एग्जांपल में, लॉरस लैब्स का ले लीजिए, देन यू टेक द एग्जांपल ऑफ SRF ले लीजिए, KEI इंडस्ट्रीज ले लीजिए, वरुण बेवरेजेस ले लीजिए, देन ऑल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ डीमार्ट, टाटा एलेक्सी, KPIT. अब इन सारे स्टॉक्स के ऊपर ये वाला पूरा फ्रेमवर्क लगा के देखिए, एंड देन एंड अप ट्रस्टिंग इन द सिस्टम, बिलीविंग इन द सिस्टम. And once you start doing from scratch in fresh positions, you'll see that these will be very, very useful for you. Abhi RHI Magnesita pe recently, like, I think it gave an exit. Tarson's pe bhi it gave an exit post. It's like 10-15% down. Rushil Decor ka live exit I posted on the Telegram group at 470, 480 exit got triggered today. It's at 260 rupees. Right? So sir, wo mic se ek bari everyone hears. Yeah. So Ishmohit, just few days back, you said that you have increased the holding in your existing portfolio. So while increasing your stake in this, while pyramiding in your existing portfolio, did you use the same tool, or there were other tools also which you used? In my case, in some of the stocks where I have very deep conviction in, so over there I just because my fundamental research is right, I've done the ground level work. मैंने खुद जाके चीजें देखी उसमें के अंदर, तो लगता है कि साइकिल पॉजिटिव है. सो ओवर देयर एक्चुअली प्राइस करेक्शन इज गुड फॉर मी. तो वहां पे आई एंड अप बाइंग जस्ट मोर, इग्नोरिंग सम ऑफ द टेक्निकल्स. बट यस, टेक्निकल्स आई डू इंक्लूड, बिकॉज इफ सम टाइम अगर एकदम स्टॉक का वी स्टॉप टर्न्स नेगेटिव एज अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, I have to be very convinced about it. Otherwise, a selling decision has to be made. Because sometimes क्या होता है कि conviction is a two-edged sword. एक पहली चीज आपको स्टॉक में रखेगा, but what if you're wrong? There was a saying, right, कि problem starts when you think you're right, but you're actually wrong. So be okay to lose your opinion to the markets, but do not be okay to lose money to the markets. So this is where it will help you immensely. Sir, mic please. सर आप वैल्यूएशन साइकिल पे कोई वेबिनार कर सकते हैं? अभी तो करा 10 घंटे का यार. नो सर, एंड दैट्स नॉट दैट. मतलब जैसे स्मॉल कैप में साइकिल चली थी 13-14 में, द वैल्यूएशन वेंट आउट, मतलब एकदम ऊपर, एंड फिर 21 में ये सेम साइकिल रिपीट हुई. सो ऐसे मतलब सिर्फ स्मॉल कैप्स के लिए, नॉट फॉर लार्ज कैप्स. इसका एक ना मेरे पास बहुत वंडरफुल प्रॉक्सी है, वेबिनार की कोई जरूरत नहीं है. हाँ. प्रॉक्सी क्या है कि whenever you look at PMS returns, so PMS is majorly invest in small caps, because that is why they're paid high money by HNIs, because HNIs को लगता है हमारे कोई customized small cap लेके आएंगे, right? So if PMS is show 25-30% CAGR for 1 or 2 years in a row, you know कि small cap index का peak होने वाला है.
Okay. Because small cap, see, it's very easy to outperform small cap index over a long period of time. So we did this analysis some time back. पूरा उसका data मैं आप Telegram पे आपके लिए post कर दूंगा. तो small cap index में, if suppose there are 1,000 companies, right, 400 of them got delisted. उसमें से बाकी फिर 350 से 400 कंपनीज का स्टॉक प्राइस 50% से नीचे चला गया. Correct. 20% of them were left. Some became 20 baggers, some became 10 baggers, some became 5 baggers. So effectively what you had to do, avoid frauds, avoid cyclicals. 4 साल में पैसा बन जाता है. बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है, आप जाके करो. मैं आई वाज लाइक एक्चुअली ब्लोन अवे कि ये 20 साल का हिस्ट्री है इंडियन मार्केट्स का है कि मतलब हर साइकिल में जब भी नया कोई स्मॉल कैप आता है 35 to 40% of them get delisted. 20% of them, like 20 to 30% of them fall by more than 50%, but remaining 25% of the 30% universe, it goes up by 5x, 10x, 15x, 20x. बट आपका रूल ऑफ थंब क्या है? अगर आप पीएमएस बाजार पे डेटा ट्रैक कीजिए, जब पीएमएस वाले 30% केगर दिखाएं तो आप केजी हो जाइए. अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बड़ा मन कर रहा है इन्वेस्ट करने का, अगर फिर पिछले 2 साल का 3 साल का पास्ट 3 ईयर रिटर्न दिख रहा है 30-40% CAGR, तो माने इट्स टाइम टू बी केजी. आई रिमेंबर इन 2019, आई वोंट नेम द फंड, देयर वाज वन फंड इन स्मॉल कैप स्पेस व्हिच वाज शोइंग 35% CAGR 2018 के आसपास, नॉट 19, 17 एंड 2 साल में CAGR उड़ गया. Since inception, returns fell back to 9%. And today, even today, the last 5-year track record is basically 14% returns. आज तक वो नहीं आया. Right? So idea is कि these things are very good proxies, यार. Again, simple idea, reversion to mean. If Indian GDP grows at 12%, and if the Nifty gives 12%, you end up making 80-90% CAGR in small caps. बन गया वैसा. 1-2 साल पैसे बनाए, थोड़ा सा साइड हो जाओ, फिर कैश पोजीशन बिल्ड कर लो, या फिर कोर पोर्टफोलियो में सस्ती वैल्यूएशन वाले स्टॉक होने चाहिए. बट एडमिटेड कि शायद से उतना बढ़िया टाइम अगले 1-2 साल नहीं होने वाला. तो साइकिल्स हुई कब थी? तो 2014 के आसपास ऑल ऑफ दी स्मॉल कैप्स लाइक मयूर यूनिकोटर, कावेरी सीड्स, जब वैल्यू पिकर स्टार्ट ही हुआ था. अगर आप हितेश सर का पोर्टफोलियो पढ़ते हो, ही स्टार्टेड हिज पोर्टफोलियो विद कावेरी सीड्स, मयूर यूनिकोटर्स, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज. All these companies were at 4P, 3P, 5P, 6P, 7P. That's it. PI Industries 10 की P पे था. And once the earnings started, everything started, they just get discovered. और discovery के बाद क्या हुआ? 14 से 7, like 14 से लेके actually में 14 to 15 एक cycle थी. फिर 15 के बाद थोड़ा सा शांति का period. Then again 16 to 18 वाली was a very ferocious small cap cycle. Does everyone remember जो 10 साल से investing कर रहा है? किसी ने वक्रंगी में जो 10-20 बैगर बनाया था इधर, कौन था वो? अच्छा, आपने बनाया था सर. अगेन मतलब दैट इज पीक ऑफ यूफोरिया बिकॉज वक्रंगी वाज पार्ट ऑफ निफ्टी क्वालिटी 30. लोग कहते हैं कि यार मतलब आई वाज लाइक शेल शॉक्ड व्हेन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ निफ्टी क्वालिटी 30. मैंने कहा ये बढ़िया काम है, बट अगेन वक्रंगी पे लगाते हैं, वी स्टॉप. सर सेकंड लास्ट, किसी एक स्टॉक को फंडामेंटल बेसिस पे पोर्टफोलियो का 20-25% एलोकेशन तक कैसे लेके जाते हैं? That's the operator thing. नहीं यार, you have to do research. अगर 20-25% बनाए, it has to be in your core competency. मतलब there is no other way around it. आप अगर 20-25% एलोकेशन लेना चाहते हैं, you should कहते हैं ना, really know your stuff when you are doing that. Otherwise 1/4 of net worth lose करना is also very easy in markets. हो सकता है जैसे कुछ you're in textile industry, right? कुछ will understand textile industry better than me. He will understand वो garment वाली कंपनी कौन सी, गोकुलदास exports. He will understand the quality of the business also better than me. He will also understand tailwinds better than me. And you'll know Gokuldas is a good quality business, very good reputation within the industry. Only thing that is missing right now in textile industry is tailwinds. Once it comes, you know which one to buy, right? Because you've done your homework. And अब तो पूरा अच्छे से track कर रहे हो, और चाहिए क्या? Technicals use करके just build up the allocation like anything, because you'll also know when headwinds start coming. Ishmoit, just a follow-up question here. Just a follow-up question to the question which he asked.
probably you are a convex on Equity Small Finance Bank because you have studied in detail Equitas. Equitas Small Finance Bank. So basically, is it possible for you to let us know your rationale, because you have done an in-depth study, and what is your thesis for your own outsized allocation to this stock? So simple, like I think within banking space, what ended up happening was there was no bank which was at 2% ROA. जो मैं बड़े टाइम से 2% ROA कह रहा था, आया नहीं था, एक क्वार्टर में आ ही गया, right? You might have seen this one. 15% ROE growing at 25% at 1.4 times price to book. अब तो ट्रेलिंग पे चले गए हैं. Forward way it is still at almost 1x price to book. Such a bank in India gets 3 times price to book. We have seen with City Union Bank, AU Small Finance Bank. We've seen, yeah, AU also. It's still at 5, sir. Right? So that's the simple framework. Sir, that is because he's into banking, he understands. So मैंने sector mapping what last 10 years से ना ये like हमने activity करा था perfect research में where I used to work, because sir had a 3 stock portfolio in which Bajaj Finance was the highest allocation between 15 to 20, and he had a very big quantum of capital, so you can imagine his outsized impact, right? So वहाँ पे भी हमने activity करा था, then we क्योंकि homework तो करा हुआ था तो यही लगता था कि इसमें ऐसा हो सकता है. Then it fell to 0.6 0.7 times, so just load it up like anything. But again, it's not something which is like big, many people get shaken here. Yeah. It's as simple as that, because price moves, and if your technicals are there, these will guide you better. आपको ना एक system में ले जाएंगे. अगर रिटर्न बनना होगा, अगर उसको 600 से 60 से 200 जाना है तो टेक्निकल्स में भी बन जाएगा, क्योंकि 60 पे वी स्टॉप पे एंट्री ट्रिगर होगी, राइट? 58 रुपीस पे, राइट? ADX also went above 20. So that is something that you can follow. Sure. Thank you. Ishmoit, quick question. नीचे ना टी कॉफी है. Done. Right, sir. Well, last question. Actually, नीचे tea coffee है. So I'm here with all of you, and we'll also have a group photo. So don't leave. Okay. Just a quick one. So on this parabolic SAR, what you said is to apply on monthly. So that means it applies only for core portfolios, or parabolic SAR can be applied for satellite as well? Sir, satellite पे करना है तो weekly पे जाके you can apply. You can. So it will help you pyramid, but then be very very careful कि आपका जो like V stop है ना, like V stop का आपका increment जो आप use कर रहे हैं multiplier, it can never ever be more than 2 times अगर आप satellite पे use कर रहे हैं, क्योंकि फिर drawdown deeper हो सकता है. One last one on this portfolio. I have similar thoughts to your uncle who holds 470 stocks. I don't hold that much. But I wanted to understand, we've used some frameworks and built some portfolios for family or self. Now we understand what you taught and we go through that. If you were to bring that down from that 80 to say whatever, 20, 30, 40, whatever the number, would you suggest some framework, or selling everything was a jokey comment or was a practical one and then going Sir, back? मैं तो परेशान होके बोल देता ना उनको, क्यों मुझे 470 स्टॉक बोले, ये वाला रखूं बेचूं. एक मैं देखो ना, एक बार एक्सेल शीट भेज रहा हूँ, तू बताइए मेरे को, तो कौन देखेगा 470 स्टॉक यार? उसके बाद फिर उनके साथ डिबेट कि यार ये नहीं, ये वाला नहीं, नहीं यार ये तो अच्छी कंपनी है, मैं सर 100 की पी पे नहीं यार, ये तो अभी भी ग्रो करेगा. बट वो इसलिए I actually admitted defeat. मैंने कहा one of the ways to sell everything, start anew with a fresh slate. So हमारे end पे assuming we have some 60-70 stocks, what would you advise? How do we go about ranking framework or technical? So ranking framework and just screen वो ranking framework में fundamental strength पे भी screen हो जाएंगे, technicals पे भी screen हो जाएंगे, and 2-3 year framework में भी screen हो जाएंगे. Go about it. एक दिन आप पूरा निकालिए, 80 स्टॉक पे कीजिए, आपको भी मजा आएगा. क्योंकि मैं तो 470 स्टॉक पे कोशिश कर रहा था, मैंने हार मान ली थी फिर. Right. Sir, there is never a single year where there's no event. मतलब I'll say this कि some of the events are huge, some of the events are mild. अभी banking crisis, if it gets solved in US, I think major negative sentiment will go away. But we have to see how it evolves. I'll still say कि these अगर known event हो जाता है ना, then it becomes an unknown known. Real risk is unknown events. अगर known unknown है तो थोड़ा सा समझ आ जाता है कि यार एटलीस्ट रेगुलेटर अब सॉल्व कर लेंगे. बट जब वो मतलब अननोन होते हैं ना, पता ही नहीं क्या होने वाला है,
तो रिस्की हो जाता है। वो न्यूज में बाहर आ गया, जब न्यूज में आ जाता है जनरली प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती। जब वो न्यूज में नहीं आता ना, फिर एकदम आता है यार कि 50-60% क्यों गिर गए सारे स्टॉक्स, then it becomes an issue. But this actually, if the crisis has to be controlled within a week or two now, so I'll keep a very close track on this. I'll keep posting in Telegram group. बहुत ज्यादा आजकल पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि नॉइज को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको सब कोई ट्विटर पे कह रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी। याद नहीं 2012 एक मूवी आई थी, अभी आज 2023 चल रहा है यार। सबको डूब गया था उसमें। इश्मोई सर, आई थिंक पीक इंटरेस्ट रेट्स मैं देखो गवर्नर न्यू आरबीआई का, एंड बट जस्ट माय ओपिनियन इज या प्रोबेबिलिस्टिक ओनली। सो अगर हो सकता है 8 क्वार्टर बाद कुछ और हो जाए, आई थिंक 2-3 क्वार्टर्स में विल सी पीक इंटरेस्ट रेट्स, right? And that will be the time to buy long duration bonds, because you'll make huge money in long duration bonds में 30% केगर बना हुआ लोगों का। If you see 2019 cycle, when interest rates जब गिरने लग गए थे, तो you made 30% केगर in bonds, equity, right? So but आपको long duration debt funds लेने पड़ेंगे उसके लिए। इश्मोई सर, इश्मोई सर, हाँ तू कर। can you please introduce your team, SOIC team? हम सुनते रहते हैं समोसे के एग्जांपल, और कौन टीम कहाँ पे आपकी, can you please introduce? So I'll just introduce the team once, and then we'll move for tea and coffee and stuff. Actually, I'm a coffee alcoholic कहता हूँ मैं अपने आप को, because I don't have alcohol. मेरे को कॉफी की बहुत क्रेविंग हुई है इस टाइम पे। So first is Sahil. So what Sahil does is कि I'll just give you, he's the most enthusiastic person in the team, and he's a lover of ITC. ये कहते हैं कि he was so pissed when the stock went above 250. कहते हैं नीचे के dividend yield खराब हो रही, नीचे जा। Literally he was saying this, like he also used to work at ITC, and so he's very enthusiastic, and also he's also into graphic designing. I'll say he also follows Twitter handle. He's doing some exceptional stuff with graphics, and I think ever since he has come into the team, Sid ka graphic quality has also gone to the other dimension, because right, so Sid is जो कहते हैं ना वो चड्डी पड्डी friend, so we are friends since school, and like he's also my like partner at SOIC, and जो भी हमारे graphics हैं तो Sid makes. And also, like, he also researches into companies. He's managing his family office. Good thing about his I think last 2 years he has started creating his portfolio. I think 20 stocks में only one of them will be in red today, right? So he's followed all the SOIC learnings and applied it. So that is मतलब discussion sounding board, but it's his own actions, right? Third is Harinder ji. So Harinder ji, we met on Twitter, and जो भी आप वीडियोस आजकल देखते हो तो उनका डॉक वॉक बनाना है, राइट? हाँ. So Harinder ji also helps us with the shoots. So he is also one of the drivers behind it, and I know मेरा ना वो हो गया Pavlovian association कि अगर हरिंदर जी घर आ रहे हैं तो मतलब वीडियो शूट होनी है, and because my office is in my basement, right? We don't want to travel too much in Delhi, too much traffic. तो ऑफिस घर की बेसमेंट में वही सही लगता है एकदम। So Harinder ji is also writing all the emails जो आपके पास आती है। मैंने हाथ जोड़ दिया emails को, मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि बहुत काम हो गए। So all these things Harinder ji is managing, and probably he'll be going for like this like जो CMT degree आती है, so technicals में will be like, I think probably he'll be going for that. Right. Then we have Harsh. Game of Brands page देखें Instagram पे, Game of Brands. So Harsh is the owner of that page, right? And अभी जो हमारा Instagram है, purely is being managed by Harsh. मेरा bandwidth खत्म है, मैं नहीं देख सकता उसको क्योंकि आप सबके questions answer करने होते हैं मेरे को dashboard पे। तो Harsh is doing an exceptional job over there, but he keeps asking me to make reels. मेरे पास time होता नहीं है, but he's doing his best. And also like जो भी social media की activities है, probably over a period of time, Twitter also he'll start managing अगर bandwidth और खत्म हो जाता है. So Harsh is entirely managing that. Then Shubham, so जो भी आप आजकल मॉडल्स देखते हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स, Shubham and I are sitting together.
इधर वी आर सिटिंग एट सम ब्लू टोकाई, घर पे बहुत बोरियत हो जाती है, यहाँ तो हम कभी स्टारबक्स बैठे हैं. We are just working on research together, and he's also like अभी मैं कह रहा हूँ he's almost there with financial models, and साथ साथ he's also researching companies. आप देखेंगे कौन कॉल में शुभम का ही नाम आपको दिखेगा questions के अंदर, right? So they are like Shubham only, and also he's also helping me answer some of the questions on the dashboard as well. Quantum of the questions has increased in last 1-2 years massively, right? So Shubham, right? So before Shuchi, I'll just introduce Sarthak, right? So Sarthak is also a partner at SOIC. Actually, all of us are partners at SOIC only. None of them everyone works along with each other. So I actually consider everyone to be a partner at SOIC. So Sarthak is actually running he has a platform by the name of College Vidya. अगर आप देखेंगे तो policy bazaar देखे सबने? So it's a policy bazaar for distance education. I think his website might have 4-5 lakh visits a month. Probably market leaders in college, like online college search. So his expertise lies in IT. I, for that matter, बिल्कुल नहीं IT आता, मतलब पता है, but it's too tedious. So he's the driver behind our IT efforts. I'll say कि अगर आप देखेंगे last 6 months में, have you seen the app updates? पहले 1 साल पहले app कैसी होती थी, अब कैसी है? So entirely this guy is the brains behind each and everything that we do in IT, and also execution. Because क्योंकि हम लोग research वाले हैं तो हम लोग slacken off कर जाते हैं, कहते हैं यार कंपनी पढ़ लेंगे हो जाएगा. He's like यार देख लो, वीडियो बना लो, अच्छी ये सब कर लो. So he's basically managing all those things, and very very tough work to do basically what he's doing. Then Shuchi and Farhana. So Shuchi is also into research. She's recently joined the team, 5 months. So newest member of the team, and she's from Gujarat. You might have also seen some of her articles in newspaper, and also Twitter पे भी you might have followed her somewhere or the other. अगर आप Twitter पे बहुत active है, right? So like blog articles, questions, and also be remember and share she's making, and also different videos on Instagram she started coming. Eventually she'll also be there in some of the YouTube videos. अगर कुछ valuation का part है उसमें Shuchi might be there. Like P2P analysis में Shubham might be there. So this is the point, like idea कि over a period of time कि different जो researchers हैं, they also come on the channel and like collaborate. And and finally we have Farhana. Her job is the most patience wala job, because she's solving all your emails. And emails where people get rude, because it's a text-based conversation. So she's always like, I have to be very, very calm and happy and friendly. So she's always like this only. So her job, I think, is one of the most jobs जिस पे आपको patience चाहिए. Right. And because sometimes क्या होता है कि किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा, वो में लिख के भेज रहे हैं सर आपकी ऐप नहीं चल रही. अब इधर दे गेट ऑन अ जूम कॉल, कहते सर आपके इंटरनेट, और किसी के एंड्रॉइड फोन पे ऐप नहीं चल रही, बिकॉज एक उसमें इशू है पेन ड्राइव डीबगिंग वाला, बिकॉज अभी ऐप इनक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड है, क्योंकि लोग टेलीग्राम पे हमारा कोर्स 100 रुपए का बेच रहे थे, कहते क्या चल रहा है. तो यू हैव टू टोटली इंक्रिप्ट द थिंग, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक सम ऑफ दोज इश्यूज कम अप. तो जैसी कोई इशू होता है उसके पास 300-400 ईमेल आ जाती है. देन हर जॉब इज द मोस्ट मतलब पेशेंस वाला जॉब है एकदम. अगर पेशेंस नहीं है तो then you can't do it basically. So this is our team. अभी 2 हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं, they are working out of इंदौर. वो दोनों भी बड़ी मेहनत करते हैं. तो उन्होंने अपने घर के ऊपर ही, छत के ऊपर उन्होंने अपना डेन बना लिया जहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, और रात को बैठ के कर रहे होते हैं, पूरा काम कर रहे थे. दोनों बहुत मतलब मेहनत करते हैं. दिस इज द एंटायर टीम एट SOIC. So let's go down. Thank you so much, everyone. So let's have a photo and move down.